मैं अनाउंस कर देता हूँ। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। एक बार जोरदार बोलिए ना, गुड मॉर्निंग। ऐसा लग रहा है कि अब हम कार्यक्रम की शुरुआत की ओर जा रहे हैं। जो लोग पीछे बैठे हैं उन लोगों से मेरा अनुरोध है कि आप लोग थोड़ा आगे आ जाइए। स्कूल में पीछे बैठना अच्छा लगता है, ऑडिटोरियम में आगे बैठना चाहिए। थोड़ा सा आगे आ जाइए। जो लोग पीछे बैठे हुए हैं, पीछे के अगर मैं 6-7 रो को रिक्वेस्ट कर दूं तो आप लोग थोड़ा सा आगे आ जाइए। अभी हम और कुछ गेस्ट और स्टूडेंट्स का इंतज़ार कर रहे हैं। अगले 10 मिनट में वो हमारे बीच में होंगे और हम एक सीट छोड़कर आप लोग बैठें। कोशिश ये कर रहे हैं कि कोरोना अभी भी समाप्त नहीं हुआ है, तो एक सीट छोड़कर हम बैठें। थैंक यू। कुछ इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक हो तो आप लगा सकते हैं 5 मिनट के लिए। क्या इंस्ट्रूमेंटल चल रहा है? हाँ, शुरू करें। आप लोगों से गुजारिश भी है कि अपने अपने मोबाइल फ़ोन को हम स्विच ऑफ मोड पर डाल दें और ये इंश्योर कर लें कि हमारे बाजू के मित्र ने भी स्विच ऑफ मोड पर डाल दिया है। आपने अपना मोबाइल भले बंद कर दिया हो, लेकिन आपके पड़ोसी ने अगर बंद नहीं किया होगा तो उसकी तकलीफ़ भी आपको होगी। इसलिए यू इंश्योर दैट कि आपके अपने
मोबाइल फ़ोन को आप स्विच ऑफ मोड पे डाल दें। कार्यक्रम की शुरुआत हम नेशनल एंथम से करेंगे। सारे अतिथि मंच पर आने के बाद मैं कार्यक्रम की रूपरेखा आप लोगों को बता रहा हूँ। सारे लोग यहाँ पर आ जाने के बाद हम नेशनल एंथम करेंगे। उसके बाद में हम दीप प्रज्वलन करने के बाद हर्षल शाह जी जो यहाँ के सीईओ हैं वो पहले वेलकम एड्रेस करेंगे और उनके बाद अतिथियों का, जिन मेहमानों को हमने बुलाया है वो अलग अलग क्षेत्र से अपनी ऊंचाई पर वो लोग काम कर रहे हैं, उन सारे लोगों के हम विचार सुनेंगे और फिर 12 और 12:30 के बीच में हम फिर लंच के लिए ब्रेक लेंगे और फिर 1 बजे के बाद वर्कशॉप्स होंगे। आप उन सभी कार्यक्रमों में शरीक होइएगा। जो चीज़ें स्कूलों में, कॉलेज में पढ़ाई नहीं जाती हैं वो यहाँ पर आपको समझाई जाती हैं। अपने अपने क्षेत्र में जिन लोगों ने बड़े काम किए हैं वो हम सबसे इंटरेक्ट करेंगे। आपके मन में कोई शंका होगी तो आप उनसे सवाल भी पूछ सकते हैं। कार्यक्रम के दौरान वो आपसे इंटरेक्शन भी करेंगे और या फिर उसके बाद में वो आपसे मिल भी सकेंगे। वो सारे गेस्ट हमारे साथ 2 बजे तक रहेंगे और फिर शाम की जो वर्कशॉप के जो लोग हैं वो शाम के 6:30 बजे तक वो हमारे साथ होंगे। तो आप सबके लिए ये बहुत ही सुनहरा मौका है। आज का दिन ये बहुत ही मंगल दिन है। बहुत सी चीज़ें, बहुत किताबें पढ़ने के बाद हमें समझ में आती हैं, लेकिन यहाँ पर आए हुए गेस्ट जो हैं, जो अतिथि होते हैं, वो आपको एकदम सरल भाषा में समझाते हैं। फाइनेंशियल की दुनिया बहुत ही कठिन होती है, बड़े अलग अलग शब्दों से बनी होती है, लेकिन यहाँ पर वो जो अतिथि आते हैं वो आपको बड़ी सरलता से समझाते हैं कि एक बार आपने बुद्धि से आइडिया कर ली तो आइडिया के बाद फिर क्या, फिर हम फाइनेंस स्टार्टअप कैसे शुरू कर सकते हैं, हम कैसे लोगों को नौकरी दे सकते हैं। इन सब चीज़ों पर आपको बड़ा अच्छा मार्गदर्शन मिलेगा। मैं इस संस्था से अनेक वर्षों से जुड़ा हुआ हूँ। हम इस प्रकार के कार्यक्रम पूरे देश भर में करते हैं। हम बिहार भी जाते हैं, हम पटना भी जाते हैं, हम गुवाहाटी भी जाते हैं, हम दिल्ली भी जाते हैं, हम लखनऊ भी जाते हैं। ऐसी अलग अलग जगहों पर अभी तक करीबन 40 से 45 हज़ार बच्चों के बीच में ऐसे कार्यक्रम करने का हमें सुअवसर मिला है। और इसके पीछे बस यही है कि अगली पीढ़ी तैयार हो, अगली पीढ़ी अपने पैरों पर खड़ी हो और अपने देश के लिए, समाज के लिए, अपने परिवार के लिए वो उपयुक्तता साबित हो कि हम किसी के यहाँ नौकरी करने के बजाय हम किसी को नौकरी दे सकें। इस लायक अगर हम बनेंगे तो ज़िंदगी में आगे बढ़ेंगे। और इन सब के बाद में एक सुकून इस बात का होता है कि तालीम ओ तरबियत इज़ एन इनिशिएटिव बाय ज़फ़र सरेशवाला जी, जो कि फॉर्मर चांसलर रह चुके हैं मौलाना आज़ाद नेशनल यूनिवर्सिटी, with emphasis on education, character building, एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्किल डेवलपमेंट। ये 4 ऐसे सेक्टर्स हैं जिस पर हम लोग काम करते हैं। इसमें से ही दो दिस इनिशिएटिव is aimed to communicate with the importance of the education and has conducted education to entrepreneurship, character building and excellence program for minorities। हमें लगता है कि ब्याज के पैसे नहीं लेने चाहिए। ये सारी धारणाओं को हम आगे बढ़ाकर आपको एक अलग दुनिया में कहते हैं कि नहीं, आपको भी शेयर मार्केट में पैसे लगाने चाहिए, आपने भी बुद्धि से पैसे कमाने चाहिए। इन सब चीज़ों का बड़ा अच्छा नॉलेज आपको यहाँ मिलेगा। और आप जब शाम को यहाँ से अपने घर की ओर जाएंगे तो आपको यकीन होगा कि एक अच्छे सेमिनार में, एक अच्छे वर्कशॉप में हमें आने का मौका मिला। यहाँ पर जो गेस्ट हैं वो भी एक बहुत अच्छी अतिथियों की एक लिस्ट है, वो भी मैं आपसे शेयर कर देता हूँ। हर्षल शाह जो जहाँ हम बैठे हुए हैं इस इंस्टीट्यूशन के वो सीईओ हैं और NMIMS के इंक्यूबेशन सेंटर के वो सर्वोसर्वा हैं। दूसरे गेस्ट हैं मिस्टर नेहल वोरा जी, जो यहाँ पर सभागृह में आ चुके हैं। वो मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ हैं CDSL नाम की जो संस्था है, जिसमें कि CDSL ये
डिपॉजिटरी पर काम करती है। श्रुति कुशवाहा जी हैं, वो भी हमारे बीच में होंगी। डॉक्टर ज़हीर काजी साहब हैं, जो कि प्रेसिडेंट हैं अंजुमन इस्लाम स्कूल के। इस मुंबई में और इस पूरे परिसर में, महाराष्ट्र में करीबन 110 साल पुरानी ये संस्था है। आज हज़ारों बच्चे उनके यहाँ पर पढ़ते हैं। उनका खुद का इंजीनियरिंग कॉलेज भी है, फार्मेसी का भी कॉलेज है। ऐसे अलग अलग विधाओं की अंजुमन इस्लाम की इंस्टीट्यूट उसके प्रेसिडेंट साहब, जो स्वयं डॉक्टर भी हैं, और मिस्टर हर्षित देसाई जी हैं, और देवेंद्र कुमार जी हैं, जो चीफ जनरल मैनेजर हैं एनबीसीसी के। ये बहुत बड़ी संस्था है जो कि कंस्ट्रक्शन में काम करती है। जफ़र सरेशवाला जी, जो फॉर्मर चांसलर हैं मौलाना आज़ाद उर्दू यूनिवर्सिटी के, इन सब लोगों का हमें मार्गदर्शन मिलेगा। बिल्कुल वो ये सारे बड़े लोग जो होते हैं, 5 या 7 मिनट से ज़्यादा कोई नहीं बोलेगा, लेकिन उन 10 मिनट में ही वो अपनी बात जो हम 35 मिनट में सुनते हैं, तो आप लोग बिल्कुल ध्यान लगा कर सुनिएगा। और बिल्कुल अगर कोई बात समझ में नहीं है तो आप ज़रूर मुझ तक पहुँचिएगा, मैं उन तक आप तक पहुँचा दूँगा कि इस बच्चे में ये शंका है, इसको इस एक आपने जो बात कही है वो बात थोड़ा सा और समझाइएगा। इसके पीछे सोच ये है कि एजुकेशन टू एंटरप्रेन्योरशिप का जो प्रोग्राम है, इसका मूल उद्देश्य ये है कि हम आगे बढ़ें और अपने जीवन को सफल बनाएं। बात हीरा होती है, बात मोती होती है, बात लाखों की इलाज होती है, बात हर बात को नहीं कहते, बात तो मुश्किल से बात होती है। मैं मिसेस विनीता रघुराम जी से अनुरोध करूंगा कि आप मंच पर आ जाएं। प्रिया औजला जी से भी अनुरोध करूंगा कि आप भी मंच पर आ जाएं। रानी घई मैडम साहिबा से भी अनुरोध करूंगा कि आप भी मंच पर आ जाएं। स्मिता थूल मैडम से भी अनुरोध करूंगा कि आप भी मंच पर पधारें। अहमद सरेशवाला जी और मिस आरवा सरकार जी, जो कि फैकल्टी हैं अंजुमन इस्लाम में, उनसे भी मेरे गुजारिश है कि आप भी मंच पर आ जाएं। और लायरा फर्नांडिस मैडम, आप सभी को मैं इसलिए बुला रहा हूं कि वो जो गेस्ट हमारे आ रहे हैं, हम उनका फूलों के गुलदस्ते के साथ उनका हम यहाँ पे स्वागत करेंगे। इसीलिए मैं इन सभी महानुभावों को मंच पर आने की गुजारिश कर रहा हूँ। अब हम कार्यक्रम की शुरुआत की ओर आगे बढ़ रहे हैं। कुछ ही क्षणों में ये सारे मेहमान हमारे बीच में होंगे। थैंक यू। पहले नेशनल कार्यक्रम का आगाज़ जो है हम नेशनल एंथम से करेंगे। और जैसे ही सारे गेस्ट आ जाएंगे, आप लोगों से अनुरोध करूंगा कि आप लोग अपने जगह पर खड़े हो जाएंगे। नेशनल एंथम होगा, उसके बाद दीप प्रज्वलन होगा, और उसके बाद कार्यक्रम की शुरुआत।
एक बार जोरदार तालियों से हम स्वागत करें डॉक्टर काजी साहब। जोरदार तालियां, जोरदार तालियों से। डॉक्टर साहब के साथ पधारे हुए आदरणीय हर्षल शाह जी, आप जोरदार तालियों से हर्षल शाह जी का आप यहां पे स्वागत करें। आदरणीय नेहल वोरा जी का स्वागत एक बार जोरदार तालियों से। श्रुति कुशवाहा जी अगर आ गई हैं तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। हर्षित देसाई जी, आदरणीय देवेंद्र कुमार जी, जोरदार तालियों से हम देवेंद्र जी का भी यहाँ पे स्वागत करें। और बैनी चटर्जी साहब जो कि सीनियर काउंसिल हैं सुप्रीम कोर्ट में, हम उनका भी यहाँ पे स्वागत करते हैं। अब मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं कि अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और हम नेशनल एंथम से शुरुआत करेंगे। धन्यवाद। अब मैं मंच पर उपस्थित सभी महानुभावों से अनुरोध करूंगा कि हम दीप प्रज्वलन के लिए और आगे बढ़ें। आदरणीय देवेंद्र कुमार जी से अनुरोध करूंगा कि या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रान्विता
क्लेशजाड्यापहा अब मैं मिस आरवा सरकार जी से अनुरोध करूंगा कि आप हर्षल शाह जी को पुष्पगुच्छ देकर उनका यहां पर सम्मान करें। और आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि जोरदार तालियों से अपना आनंद व्यक्त करें। मैं मिसेस विनीता रघुराम जी से अनुरोध करूंगा कि आप आदरणीय नेहल वोरा जी का पुष्पगुच्छ देकर स्वागत करें, मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ CDSL। मैं मिसेस प्रिया औजला जी से अनुरोध करूंगा कि आप डॉक्टर जहीर काजी साहब का, जो कि प्रेसिडेंट हैं अंजुमन इस्लाम के, उनका पुष्पगुच्छ देकर स्वागत करें। मुझे लगता है कि अंजुमन इस्लाम से काफी बच्चे आए हैं, जोरदार तालियों से। मैं आदरणीय श्रुति कुशवाहा जी का मंच पर स्वागत करता हूं। एक बार जोरदार तालियों से श्रुति जी का हम यहां पर स्वागत करें। और मैं स्मिता थूल मैडम से अनुरोध करूंगा कि आप श्रुति जी का यहां पर स्वागत करें, जो कि क्रेलॉन इनोवेशन से हैं। अहमद सरेशवाला जी से अनुरोध करूंगा कि आप हर्षित देसाई जी का यहां पर स्वागत करें, जो पूना से यहां पर पधारे हुए हैं। और मैं मिसेस लैरा फर्नांडीज जी से अनुरोध करूंगा कि आप मिस्टर बैनी चटर्जी जी का, जो सीनियर काउंसिल है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में, उनका यहां पर पुष्पगुच्छ देकर स्वागत करें। एक बार जोरदार तालियों से डॉक्टर चटर्जी साहब का यहां पर स्वागत करें। अब मैं डॉक्टर काजी साहब से इजाज़त लेते हुए, क्योंकि आप भी हमारे सबके बीच में सीनियर की भूमिका में भी, और आप इस सभा को प्रेसाइड ओवर भी करें, मैं तालीम ओ तरबियत इस आयोजन में मैं अनिल त्रिवेदी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के मेहमानों का दिल की गहराइयों से स्वागत करते हुए एजुकेशन टू एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम के इस आयोजन, जो इस बार मुंबई में हो रहा है, अभी तक 40 से 45 हज़ार विद्यार्थियों के बीच में इस देश में अलग अलग जगहों पर, अलग अलग शहरों में ये कार्यक्रम किया गया। जनाब जफ़र सरेशवाला जी, जो कि इंडियन बिजनेसमैन भी हैं और अपना कारोबार परसोली कॉरपोरेशन के नाम से करते हैं, आप 2015 में मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के चांसलर भी रह चुके हैं। अब मेंबर ऑफ द स्ट्रिक्ट तबलीगी जमात ब्रांच ऑफ इस्लाम के वो सदस्य भी हैं। और तालीम ओ तरबियत इज़ एन इनिशिएटिव बाय जफ़र सरेशवाला जी, फॉर्मर चांसलर मौलाना आज़ाद नेशनल यूनिवर्सिटी, with emphasis on education, character building, entrepreneurship, and skill development. Through his initiative, his aim to communicate the importance of education and has conducted education to entrepreneurship, character building, and excellence program for minorities. अब मैं इनॉग्रल और वेलकम एड्रेस के लिए आदरणीय हर्षल शाह जी को यहाँ पर आमंत्रित करता हूँ। ही इज़ अ को-फाउंडर ऑफ द अवेयरथॉन, फाउंडिंग टीम ऑफ AIC NMIMS, हार्वर्ड लॉ स्कूल और SAAS एफिक्योरनट पावरिंग अप द आइडिया, हार्वर्ड लॉ स्कूल और NIM के बीच में इंक्यूबेशन सेंटर के रूप में काम करते हैं। He is a CEO of the institute where we are sitting. Avarthan is the first of its kind of enable cloud platform which helps organization in measuring and enhancing the effectiveness. Mr. Shah works for the management consultancy industry. He is a mentor at Kirti Mehta School of Law. He is a member of the New York State Bar Association Institute of Chartered Accountant of India, and Bar Council of Maharashtra and Goa.
एक बार आप लोगों से अनुरोध करते हुए एक बार जोरदार तालियों से हम हर्षल शाह जी का यहाँ पे स्वागत करें और उनसे मैं अनुरोध करता हूं कि अपने विचार यहाँ पर प्रकट करें। Thank you, sir. Thank you for the introduction. Firstly, to start off with, wanted to welcome all the panelists over here. To start off with, Mr. Zafar Sareshwala, former Chancellor of Maulana Azad University, Nehal Vora, Managing Director of CDSL. He's actually our alumni also, and one of very personal mentor to me. And at the incubation center also, he's guided young entrepreneurs, as you go through the journey. Would highly encourage you, listen very patiently to his talks. Meaning it's something that, I have really learned as an entrepreneur while building the incubation center also. Other panelists, Dr. Zahir Kazi, Ms. Shruti, Mr. Harshit, Mr. Kumar, teachers, professors, and young students, whom I'm hoping will be future entrepreneurs. On behalf of NMIMS University, I wanted to personally welcome each and every one of you. We have a really esteemed panel, on behalf, Zafar Bhai has kind of requested me to do a welcome audience. I wanted to welcome each and every one of you, and I would highly encourage you to pay close attention to what you're really going to be witnessing here going forward. Why do I say this? Largely because of the fact that it's really important for you to know what it means to be an entrepreneur. What it means to keep at it, to be an entrepreneur. You would have seen various channels. In the channels, you would have seen Shark Tank. You would have seen various other, I can see many people nodding their head. They would have seen Shark Tank. You would have seen in the newspapers, crazy valuations, Zomatos, the Flipkarts, the Baiju's, various kind of startups, the crazy valuation. The sad news is, don't believe any of it. It takes a lot. What you really see in the newspaper is years and years of effort, sweat, toil, and then what you see in the newspaper is really what? So they've actually gone through the toil. When we were building the incubation center, many of the startups that you see in the news and all of that are students who've been over here, who've been at the receiving end, who've paid close attention to what has been told to them, have grasped what is relevant, what is not relevant. Being an entrepreneur is a lifestyle choice. If there is anyone who tells you any different, he doesn't know what an entrepreneur is. It changes the way you think, meaning it has changed me personally as I had gone through that particular experience, and I assure you that if you were to choose that particular path, it will change you as well. We as a university are very proud to support such initiatives. As a society, if we really want to believe in Atmanirbhar, then it is really important that we believe that we are job creators, not job seekers. While you go through college, while you go through, there will be placements, there will be various things which will kind of happen. But it's really, really important for you to really realize one really important rule, is that in life, try to be a job creator and not a job seeker. There may be a path towards getting there, but the ultimate goal should always be a job creator. Largely because of the fact is then what you will realize that the world around you is largely driven, is largely created by these job creators and not just job seekers. So as a university, this is the reason really why we support such initiatives. We encourage young students like you to take up to entrepreneurship. At the Atal Incubation Center, with the support of Niti Aayog, we've incubated over 100 startups. These startups have created more than 3,000 jobs. Every single day we have young, fresh, new ideas coming, pitching to us,
in a Shark Tank type of situation, each with a very noble mission is really to be job creators. I won't take more of your time, meaning I'll just kind of end with a very interesting anecdote of a very personal experience, that I have shared. While I was at Harvard Law School, at the time of orientation, so orientation is really the first year when you are getting into the law school. They kind of tell you all the things which you are supposed to expect during the year. So at the time of orientation, they walked us through, this is really constitutional law, criminal law, contracts. These are the things, very long judgments that you need to study, and so on and so forth. One student sitting behind me raised his hand. He raised his hand and asked that, "Professor, can you tell me what percentage of this syllabus that you are teaching me is going to help me in my life going forward?" Again, I can see a lot of smiles over here. Probably this is the exact same thing which each of you would want to ask your professor, that what percentage of what you're teaching me is really relevant to me when I actually go into the practical world. All students looked at him, gave him a nodding, smiling approval that yes, this is exactly the question that I wanted to ask, meaning he's finally hit it, meaning now the professor won't know what to say. So the professor, calm and composed, waited for a few seconds and said, "Can I be honest with you?" So the student said, "Yes, professor, please be honest." The professor said, 5%. What does that mean? Only 5% of what they teach you in your classroom is really going to be relevant for you while you go into the actual real world. So the student was really happy, said, "I got you," meaning I got the professor. Finally, he said, all these exams are useless. All this, whatever they're teaching us is completely useless. So the student said that you are teaching us so much, and now you are coming and telling me that only 5% of this is going to be useful. Then really, why should I really study? Meaning, what is in it for me? Meaning, I'll just study that relevant 5%, I'll be sought for life. The teacher calmly responded and said, "Beta, कौन सा 5% है वो मुझे नहीं पता है, but 5% ही काम आएगा आपको, उतना मेरा गारंटी है." So which means that just like this talk, which 5% is really going to be relevant to you, no one on this stage can tell you, neither can I tell you, or neither can your professors tell you. But one thing is for sure, some 5% of what you're going to be listening is going to influence you. So please pay attention to the remaining 100%, because you also don't know which is the 5%. So with that, I would like to thank you. Thank you for giving me the opportunity, and over to you. Thank you. बहुत बहुत धन्यवाद हर्षल शाह जी। अब इसके बाद मैं मुस्लिम यूनिवर्सिटी में तालीम के बेताज बादशाह का जिक्र करने जा रहा हूं। आप पेशे से तो डॉक्टर हैं, लेकिन कई सालों से आपने अपनी ज़िंदगी तालीम के लिए वक्फ कर दी है। महाराष्ट्र माइनॉरिटी तालीम में सबसे मकबूल और अहम इदारे अंजुमन इस्लाम के सदर हैं। तालीमी और तिब्बी दुनिया के कई अवार्ड के नाम उनके नाम हैं। मैंने इसलिए ये शेर नज़र करता हूँ, आप आए तो बहारों ने लुटाई खुशबू, फूल तो फूल, कांटों से भी आएगी खुशबू। जोरदार तालियों के बीच में आप स्वागत करें डॉक्टर ज़हीर काजी साहब का। आपके आने से ये होता है। Good morning, the young ones, the young and the restless here. I was supposed to be sitting there, in fact. That was what the promise was made to me, because I wanted to understand what entrepreneurship is all about. But somehow I have landed up here, and I'm not an authority on that. But having said that,
very distinguished panelists here. They are the most sought after people who will be talking to you what the entrepreneurship is all about. The initial speaker rightly put it across that you should be job giver and not job seeker. And that is what New India is all about. नया भारत, नया भारत की जो दिशा है, आत्मनिर्भर, सेल्फ रिलायंट, एंड हमारा जो भारतवर्ष है, it is the youngest country in the world. 60% of our population is in the range of 18 to 40. And this is going to continue till 2035. Based on that, a new education policy is drafted for all of you. And the chairman of that policy is none other than one of the topmost scientists. He is the chairman of ISRO. And with all the inputs that we could gather from various nooks and corners of the country, we came to a conclusion that the new India has to be young ones who will be imparted innovative and critical thinking, learning, not teaching, which talks of learn more, test less. This is what the new education policy is all about, and it is in tune with what today's program is. I'll give my own example because giving stories of Bill Gates and all that is very fascinating, no doubt. Someone who was working in a garage, he had brilliant ideas and he could implement, and he is a job giver to millions of people all over the world. And then the question comes, if your skill, आपके पास अगर हुनर है और आपके पास बहुत ऊंची पढ़ाई भी ना हो, तो आप आपके हुनर से you can become one of the finest entrepreneur, probably one of the finest in the world. And if you have abilities and capabilities, why not? So the new education policy that I was talking about is talks of a lot of innovation. And as I said, we will be introducing vocational learning at a very early stage in standard 8. And the young ones will be learning beyond the classrooms. It is called early childhood learning. Again, the children will be judged not from what they read from the textbooks, but how they are behaving, what is their aptitude at a very early stage. And this is in tune with one of the finest education policy that Finland has. And rightly so, the present Prime Minister of India, when he talks of digital India, startup India, and startup India is one which is very relevant to today's topic. Young boys and girls, I will give my own example. After doing my post-graduation in radiology, I went to US and came back. I had one of the best assignments. I had to choose between Bombay Hospital and Hinduja Hospital. Opted for Hinduja because it was a new setup. I just stayed for a year there. And then something in me told me, nay, I should be on my own. And that was in early 80s when sonography, that is ultrasound, which came to India in early 80s, and five of us were the pioneers in Mumbai city. I ventured out, took a risk, I put in my papers, and then went to a bank asking for a loan. Those were the days in early 80s when getting a loan was a big problem. Now the banks come to your doorstep to give the loan. I had a tough time. I managed to convince the chairman of the bank that I am a highly qualified doctor, trust in me. So we got a portable machine from Japan. The banking authorities asked me, this is first time it has come, how will you give me the guarantee that it will be taken good care of and it will run? I did a lot of convincing, took a risk. And believe me, young boys and girls, I bought a brother's typewriter, my own machine,
And I used to carry all myself to various institutions after having resigned from Hinduja Hospital to the smaller hospitals. And started my own setup in a small way. And then I realized this is how it should be. And then I told a lot of my youngsters, younger colleagues, and they came out and did the same thing. That is something in medical entrepreneurship. So you have to take a risk and be focused about. But during our time, we never had sessions like this which you have. We never had distinguished speakers like this to guide us. So we went on our own. Today, this younger generation is very lucky that you are able to listen to them. You'll probably have a workshop, hands-on sessions, and make a commitment to yourself. I am attending today's seminar with a commitment to myself that I want to be an entrepreneur par excellence. How did this entrepreneur word came? You know what is enterprising? All of you know what it means. So it has come from there. You have to be an entrepreneur where you will be demand driven. You must think to be one different from the others. कुछ हट के करना होगा. ये दुनिया में इतनी सारी चीजें अभी तक आई नहीं है. There is so much of space for new things to come. Some people get an idea कि अभी saturation हो गया, अभी नई क्या चीज होगी. अरे नई नई चीजों के लिए बहुत मौके हैं. आप फोकस रहिए. Ideas will come to you and you can do wonders. I'll give just one example before I wind up, because you need to tell the stories which you carry on and say like, something can like this be done. Niti Aayog, in collaboration with the Ministry of Science and Technology, Tata Trust and Lockheed Martin, which manufactures F-16 aircraft, in tune with the Prime Minister's policy, it was decided that let's throw open to the young ones in the various colleges to come out with some inventions and innovations. There are about thousands of students and hundreds of institutions. Shortlisting was done. They chose ultimately 100, and out of that 100, they had to select 10 toppers. And in that 10 toppers, 7 were IITians, 2 from the technical universities and 1 from one engineering college. And then they gave that college first position, and it so happened to be Sabu Siddiq Engineering College of Ajmal Islam. And I asked the organizers, okay, there are 10 toppers, how come we are in that category? You are the youngest undergraduates, the rest were postgraduates and IITians with PhD. And what did that team of 5 people invented, comprising of 4 girls and a boy? They invented artificial hand, artificial heart. Engineering students going to various hospitals, learning muscle nerve movements, and they invented that prototype. And they were given 20 lakhs for incubation center. I am Ahmedabad and also I am Bangalore. They have worked on that, and I think they are proceeding to United States. I asked the leader of the team, तुम्हारे पास ये idea कहाँ से आई? See how ideas come. He says, मेरे मम्मी का elbow का accident हो गया, the fracture, which is the most difficult fracture to do it. So implants were brought in, and he spent hell of a money, and she's all right, and he decided that I will do something for her. So idea came from that, and he succeeded. Like a lot of inventions in medicine also have come from engineers. So it is not necessary. Some of you who are from the faculty of law may be here. They may be able to come out with something innovation. People from business management will do it. People from technical side can do it. Stream is not important. Ideas and how to implement. I will not take much of your time. I believe the more you speak, the less you remember. The more you speak, the less you remember. The less you speak, more you remember. I spoke so very less. I'm sure you will remember all I said. Thank you very much. Wish you good day.
बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर काजी साहब। और इसके बाद में एडवोकेट बेनी चटर्जी साहब को मैं यहाँ पे आवाज़ दे रहा हूँ, जो कि सीनियर काउंसिल हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया और हाई कोर्ट्स में। आपसे गुजारिश करूँगा कि आप हिंदी में ही बोलें, कुछ लोगों की मुझे सूचनाएं आ रही हैं। I will thank Zafar Saraswala ji to give an opportunity to be with you or young students. And I believe some must be a law student. मैं हिंदी इंग्लिश मिक्स करके बोलूँगा क्योंकि टोटल हिंदी थोड़ा सा सो अभी जो सब्जेक्ट है वो एंटरप्रेन्योरशिप है, बट माय फील्ड इज अ लॉ and law and entrepreneurship. In fact, lawyers most of the time they are helping our entrepreneurs to set up their entrepreneurs and how to structure their business. So getting into law is also part of the entrepreneurship also. But kind of a person I am not a solicitor, I am a counsel. And so I can tell you, if you are a lawyer, how to start a good law practice and how to be a good lawyer. And thereafter you can branch out into to be a solicitor and open a law firm, which is also a kind of entrepreneurship. So, in my view, personal view, after you pass out from your law, सबसे पहला काम ये होता है कि आप ढूंढें कि आपके सीनियर कौन होंगे, आपका मेंटोर कौन होगा। क्योंकि लॉ फील्ड में जैसा अभी साहब ने बताया, एक साहब वन ऑफ पैनलिस्ट सेड कि आपका सिर्फ 5% काम आता है वॉट एवर यू स्टडी लॉ, तो यू विल बी नीडिंग अ पर्सन टू गाइड यू हाउ टू गेट इनटू अ लॉ प्रैक्टिस. So first and foremost is the selection of senior. Whom do you want to become junior to? Because your senior will be your mentor and he will go long way. कभी भी आप 10 साल के बाद अगर आप जुडिशरी में भी जाने की कोशिश करेंगे तो उसमें फॉर्म में लिखना पड़ेगा आपके सीनियर कौन थे. इसलिए आप हमेशा सीनियर पे बहुत ध्यान दीजिए कि आपके सीनियर कौन होंगे. अच्छे सीनियर के साथ ही आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो सकती है. जो रेपुटेड होंगे उन्हीं के साथ अच्छी सीख भी हो सकती है. Therefore, first will be how to select a good senior and be with them. After आपने सेलेक्ट कर लिया एक सीनियर, अब सीनियर सेलेक्ट करना ही सिर्फ वो बात नहीं होती है. अब नाउ सीनियर के पास 10 और जूनियर हैं. I know all my friends there, they have 10 juniors, 5 juniors, 7 juniors, 10 juniors, 12 juniors. अभी आपको करना क्या है? How to become his favorite. अब उसके फेवरेट होना भी एक बहुत बड़ा आर्ट है कि इस जो सीनियर आप सिर्फ 6 महीने में है और आप सडनली उसके फेवरेट हो जाएं. और वो फेवरेट होना सिर्फ यही है कि हाउ टू डू द बेस्ट ऑफ रिसर्च. हर सीनियर के पास केसेस होते हैं जो आर्ग्यूमेंट करते हैं और हर केस मैं आपको बता दूं, और ये सच्चाई है कि अगर 2000 पेज का भी केस है लेकिन मेन केस सिर्फ 2 लाइन का होगा, इससे ज्यादा नहीं हो सकता है. मैंने वन ऑफ द बिगेस्ट मैटर किया था फॉर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, दैट इज वोडाफोन बिगेस्ट टैक्स मैटर्स इन द वर्ल्ड, विच इज $3 billion टैक्स इशू. जब तक मैटर सुप्रीम कोर्ट गया, इट बिकेम 2000 pages petition, but you believe me that it was only to issue whether withholding tax had to be deducted or not. थोड़ा सा डिटेल अगर आपको बोलूंगा तो आपको बड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा. इतना बड़ा वोडाफोन केस हो गया है कि हचिसन मैक्स ने जब वोडाफोन को अपने स्टेक्स बेचे तो पूरा डील हांगकांग में हुआ. और एक हमारे यहाँ सेक्शन है इनकम टैक्स में जो बोलता है अगर फॉरेन में कोई डील होता है तो आपको विदहोल्डिंग टैक्स जो है उसको देना पड़ता है. पूरा विदहोल्डिंग टैक्स डिडक्ट करके पैसा देना पड़ता है. अगर कोई चीज आप 100 रुपए में बेच रहे हैं तो अगर विदहोल्डिंग टैक्स, जिसको यहाँ पे इंडिया में TDS बोलते हैं, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, अगर 20% है तो आपको पूरा 20% डिडक्ट करके ही बेचना पड़ेगा. ना हचिसन मैक्स ने वोडाफोन को अपने शेयर्स
बेचे थे, हांगकांग में पूरी डील हुई थी, लेकिन उन्होंने टीडीएस नहीं काटा था। तो भारत सरकार का सिर्फ इशू था कि आपको जो आपने $11 बिलियन में ये शेयर्स इसके खरीदे हैं, उसमें से $3 बिलियन आपको कट डिडक्ट कर देने चाहिए थे और भारत सरकार को दे देने चाहिए थे। और वोडाफोन का ये कहना था और हट्स का ये कहना था कि ये दिस इज द ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, इट इज नॉट ट्रांसफर ऑफ कैपिटल, देयरफॉर वी नीड नॉट deduct the taxes. This is the small issue. Again, I mean, coming back to the biggest matters, the issues are very small. So when the senior will give you the brief, you must find out what is the crux of the matter. What is the crux of the matter? वो 2 लाइन का जगह आपने फाइंड आउट कर लिया तो that will help you the maximum. The moment the senior asks you क्या issue क्या है, so the moment if you are first to tell कि sir this is the issue, then you have won half of the battle. Then second it will be find a case law, whether for it or against it. Where he is fighting. If he is having the case law, supposing he is, whatever is the crux of the issue, if he is arguing for it, then you have to find out the case law. And before anybody gives you, sir, I have found out this is the case law which is to be given to you. So there how you become a favorite of a lawyer, and that is how you rise. And therefore, the moment you start getting confidence, so जैसे एक पैनलिस्ट ने कहा, you should try to become independent lawyer and then go and argue the matter. One more issue which I say, normally people, the students, young students, they start arguing with the judges. Never do that. Be very respectful. Of course, you have to place your points before the judges, but be very, very respectful before and put your best point forward before. And जब आप argument करते हैं तो judges कभी-कभी बोर होने लगते हैं, तो you have to see that how you make it more interesting. So therefore, after you make more interesting, the judges will also start hearing the matter with you. Last में मैं आपको ये भी बोलूँगा कि winning and losing is not important. Never ever get disheartened by losing a matter, because losing is a part of the game. I remember one of the topmost lawyer of India told me that his success rate is only 38%. I may be charging 20 lakhs or 15 lakhs a day, but my success, Benny and my success rate is only 38%. So winning and losing is a part of the game. Now, if you are a counsel, I said, but thereafter you can branch out and also can become solicitor. There you have to become firm, you have to get friendly with counsels, then you have to have lawyers, you have to have the best, you have to be very friendly with the counsels. So that if the entrepreneur tells, I want that particular counsel, so you should be friendly enough with that counsel. He immediately phones, sir, I have this matter, you please argue that matter. So these are the basic issues when if you become a lawyer. Thank you very much. एक बार जोरदार तालियां चटर्जी साहब के लिए, अपना अमूल्य समय जो आपने हमें दिया इसके लिए धन्यवाद देते हुए अब इसके बाद में करवीर चक्र फेलो सपोर्टेड बाय यूएन फॉर एक्सेलेंस इन द फील्ड ऑफ डेवलपिंग इनोवेशंस में जिन्हें पुरस्कार मिला, ऐसी आदरणीय श्रुति कुशवाहा जी हमारे बीच में हैं, जो प्रोडक्ट इंजीनियरिंग सर्विसेज, हेल्थ केयर, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन, आईओटी सॉल्यूशन, डिवाइस एंड मशीन मैन्युफैक्चरिंग, ड्रग, ऐसी अनेक आयामों से जिनका काम चल रहा है, ऐसी आदरणीय श्रुति जी को मैं यहाँ पे आमंत्रित करता हूँ, वो अपनी बात यहाँ कहें। Namaste everyone. पहले तो I was not knowing that I have to speak, and I see a lot of people are actually needing to get a little excitement. तो मैं आप सबसे पूछूंगी, इसमें से इतने में से कितने लोग फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर्स हैं? आप हैंड्स रेज करेंगे। फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर्स जो ऑलरेडी बिजनेस चला रहे हैं या चला चुके हैं? नोबडी। सेकेंड जनरेशन एंटरप्रेन्योर्स? नोबडी। कितने लोग एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं?
I want everyone to look in the crowd. People who are sitting in the front, just look at the back. Just look. Everyone wants to be an entrepreneur. Absolutely. So as my respected dignitaries and panelists have said, मैं बस बहुत थोड़े से शब्दों में अपना जर्नी कहूँगी एंड 2 cents of wisdom which I always believe in giving. So मतलब I'll give you my story probably if it can give you a little inspiration somewhere. So I'm a pharmacist. I graduated with masters in pharmacy. I worked as a medical advisor. The role of a medical advisor सजेस्ट करना होता है फार्मास्यूटिकल्स को, बड़े बड़े फार्मास्यूटिकल्स को कि कौन से ड्रग्स आपको लॉन्च करने हैं, क्या डॉक्टर्स के साथ कैसे उनको सिखाना है, बिकॉज डॉक्टर्स को नहीं पता होता है. सो आई एम श्योर डॉक्टर्स हैव आल्सो मस्ट बी नोइंग व्हाट इज अ मेडिकल एडवाइजर. सो आई स्टार्टेड एज अ मेडिकल एडवाइजर. I decided to do my MBA from US. I left my job, very very high paying, very very fat job, and went to US. Luckily, I got accepted in Kellogg's Business School. Started my executive MBA. मतलब एक होता है ना कि अगर आप फितूरी है ना तो वो फितूर कभी कभी घुमा फिरा के ना आपका दिमाग खराब करता ही रहेगा. तो when I was actually doing my executive MBA, the first semester I decided कि यार एडमिशन तो यहीं रहने वाला है, एडमिशन कर लेंगे, फिर वही B1 मतलब जॉब वीज़ा के चक्कर में घूमते रहेंगे. And I just decided to plunge into entrepreneurship that time. मतलब there was no decision कि हाँ करना ही करना है. जैसे आज आप लोग कुछ आइडियाज लेके जाएंगे when we all take workshops with you. So आप कुछ आइडियाज लेके जाएंगे, कुछ थॉट्स लेके जाएंगे. When I decided to plunge to entrepreneurship, मुझे कोई आइडिया नहीं था. I just decided. I came back to India and started a multidisciplinary design team. Because I was interested in arts, I was interested in culture, I come from a scientific background, and it's a lot to actually do, and that was fancying me. Later on, after years, which I will also talk about in the workshop, कि आज मैं क्या करती हूँ. But this little journey of mine will give you a gist that point number 1, your past experiences or your past profession or your past academic experience can never define your journey of entrepreneurship, right? That's one. Second is I'm not sure what are your core capabilities, क्योंकि entrepreneurship ना एक साधना है, एक spirituality वाला process है, आपको अंदर से बदल देता है मतलब entrepreneurship. So if you are ready to take that, some people are great leaders. I mean, I have personally seen that they are absolutely fantastic leaders. और आपने भी नाम सुना होगा, इंदिरा नूई का एग्जाम्पल ले लेती हूँ मैं, राइट? बट इंदिरा नूई इज नॉट एन entrepreneur. इंदिरा नूई is a fantastic leader who runs an organization, which we are very proud of. So you have to identify what your core strength is. So that's point number 2. And मतलब मैं तो बस यही बोलूँगी कि अगर खुद को जला के वापस जीना चाहते हो तभी एंटरप्रेन्योरशिप करो, नहीं तो सबके बस की बात नहीं होती है एक्चुअली. सो आई विश एवरीवन, बट although saying that, I wish everyone to aspire to take chance, because even while you take chance, you will become a better person and absolutely something will change in you. So that's all. Thank you so much. Thank you so much. बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय श्रुति कुशवाहा मैडम. अब इसके बाद में जिन्होंने अपने जीवन में 32 सालों के अपने अनुभव के साथ में कंस्ट्रक्शन ऑफ द रोड्स, ब्रिज, इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग्स, कॉन्ट्रैक्ट, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, ऐसे अनेक काम जिन्होंने किया, ऐसे एनबीसीसी के चीफ जनरल मैनेजर मैं आदरणीय देवेंद्र कुमार जी को यहाँ पर आमंत्रित करता हूँ. एक बार जोरदार तालियों से आप उनका यहाँ स्वागत करें. आपने दिल्ली में इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की और उसके बाद देश दुनिया में वो काम कर रहे हैं. आज ये हम सबका सौभाग्य है कि वो आज हमारे बीच में हैं. आदरणीय देवेंद्र कुमार जी. नमस्कार. ऑनरेबल ऑल पैनलिस्ट, लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं बेसिकली कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से हूँ, तो आपको मैं एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में जस्ट कुछ एग्जांपल देंगे तो आपकी क्लैरिटी जरा क्लियर हो जाएगी. आप नहीं बिलीव करेंगे, जो अनस्किल्ड लेबर
जिसको हेल्पर बोलते हैं, जिसको करनी पकड़ने को नहीं आता है, उसने शुरुआत की अपने जीवन की अनस्किल्ड हेल्पर से और आज 100 करोड़ का कॉन्ट्रैक्टर है। कोई पढ़ाई उसने नहीं किया, उसका नाम भी लाल मोहम्मद है। उसके अंदर कंपनी में सारे क्वालिफाइड इंजीनियर्स, अकाउंटेंट, सो मेनी ऑफिसर्स काम कर रहे हैं। तो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में रैग्स टू रिचेज जो है बनने का चांस हमने काफी देखा है। आपको जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूं कोंकण रेलवे का। कोंकण रेलवे जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का टफेस्ट प्रोजेक्ट था। उस कोंकण रेलवे के जो डिप्टी चीफ इंजीनियर थे, जिन्होंने वासी ब्रिज के इंचार्ज थे, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर थे, और अगर आप लोग वासी ब्रिज से ट्रेवल करते होंगे रेलवे ब्रिज से, तो मार्क कीजिएगा कि वासी साइड से एक गटर जो है ब्रिज के बगल में रखा हुआ है नीचे। वो गटर जो है जर्मन कंसल्टेंट से उस वासी ब्रिज के लाए थे और मुंबई की बहुत बड़ी कंपनी काम कर रही थी। एंड दैट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जो है उस गटर को रिजेक्ट किया ड्यू टू क्वालिटी, और उसके बाद जो है सारी मिनिस्ट्री, सीनियर ऑफिशियल्स, पॉलिटिकल लॉबी सब उनके पीछे पड़ गए। उन्होंने बोला कि आई विल नेवर कॉम्प्रोमाइज। उन्होंने अपने पावर की यूज किया, उसको रिजेक्ट किया। 2 साल तक प्रोजेक्ट डिले हुआ है। जो लोग पुराने लोग हैं उनको मालूम होगा। उसके बाद फिर नया डिजाइन से फिर नया गटर जो है और वासी ब्रिज बनाया गया। उनके इस एफर्ट्स को देखकर आउट ऑफ टर्न उनको प्रमोशन दिया रेलवे मिनिस्ट्री ने और कोंकण रेलवे का चीफ इंजीनियर बनाया। तो उनके काम करने का भी तरीका थोड़ा सा अलग हटके था। ही वॉज टॉपर फ्रॉम IIT रुड़की। उन्होंने रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड को रिक्वेस्ट किया कि जो आपके पैनल में लड़के फेल कर गए हैं, मुझे उन्हीं की जरूरत है। बोला ये कैसा चीफ इंजीनियर भाई, जो लड़के पैनल में फेल कर गए हैं वो उनकी जरूरत है। बोला हाँ, हमारा जो साइट है, जो टेरेन है, वहां पर सब लोग सर्वाइव नहीं कर पाएगा। हमें जिसको जो लड़के फेल किए हुए हैं उसमें मैं सेलेक्ट करूंगा, मैं अलग से इंटरव्यू लूंगा, सब्जेक्ट का इंटरव्यू नहीं लूंगा। उन्होंने देखा कि जो विलेज बैकग्राउंड से हैं, जिनको बाइक चलाना आता है, जो हटमेंट में रह सकते हैं और जिनको एक बेसिक नॉलेज है, बेसिक मिनिमम नॉलेज है, मुझे उनकी जरूरत है। मुझे हाईली क्वालिफाइड बहुत हाई फाई इंजीनियरिंग कॉलेज से लड़कों की जरूरत नहीं है। और उन्होंने स्पेशल रिक्रूटमेंट बोर्ड बनाकर उनका सिलेक्शन किया और आज कोंकण और सबको जो है ट्रेनिंग दिया। उस रूरल एरिया में सबके रहने की व्यवस्था और सबको ट्रेनिंग करना, और ट्रेनिंग दे देकर जो है उन्होंने टीम डेवलप किया और वही टीम जो है कोंकण रेलवे को बनाया यहाँ से जो है इतनी लंबी। और वो आज सारे जो है डिप्टी चीफ इंजीनियर के लेवल पहुंच चुके हैं रेलवे में। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि एंटरप्रेन्योरशिप के लिए आपके अंदर में जिल होना चाहिए, आग होना चाहिए, और कोई स्किल, कोई नॉलेज बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। जरूरत है नेटिव बैकग्राउंड, बट बिल्कुल कि नहीं हम IIT से कि IIM से कि तलीम कर पाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आपके अंदर में अगर आग है आप कर सकते हैं। और अभी तो अपने देश के प्रधानमंत्री जी का कहना है आप निर्भर भारत बनो, और जितने स्टार्टअप्स आ रहे हैं तो टाइम लगता है आगे बढ़ने में। ऐसा नहीं कि एकाएक रातों रात जो है कोई बिजनेस हाउस से तो कोई है नहीं, तो जो इनके पास कोई सपोर्ट नहीं है वो भी आगे बढ़ सकते हैं। टाइम, मेहनत और पूरा डिवोशन, फेलियर सक्सेस वो चांस की बात है। बस जो ट्राई करता है उसी का सक्सेस भी होता है, उसी का फेलियर भी होता है। तो आप लोग जितने हैं पढ़ाई के बाद, जिनको भी एंटरप्रेन्योरशिप में इंटरेस्ट है, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में, रियल एस्टेट में काफी अपॉर्चुनिटी है। पहले लोग समझते थे कि रियल एस्टेट केवल जमीन का और फ्लैट्स का, मकान का खरीद बिक्री है बिटवीन थ्रू ब्रोकर्स और एजेंट। अब ऐसा नहीं है, अपने आप में एक ऑर्गेनाइज सेक्टर है। इसमें हर एक फील्ड के लोगों की जरूरत है, चाहे लॉ से हो, अकाउंट से हो, इंजीनियरिंग से हो, एवरीवन इज रिक्वायर्ड इन रियल एस्टेट्स। और रियल एस्टेट मार्केट्स काफी एक्सपेंड हो रहा है, फ्यूचर काफी बड़ा है। जब तक ह्यूमिडिटी रहेगा तब तक रियल एस्टेट का डिमांड रहेगा। कहीं इसमें कोई, जैसे आजकल फैशन में लोग ड्रेस चेंज कर रहे हैं, उससे लोग मकान, फ्लैट्स, इंटीरियर्स काफी चेंजेस हो रहे हैं। तो जो भी लोग जिस फील्ड में जाना चाहते हो, रियल एस्टेट्स में आने के लिए कोई भी बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है। फर्स्ट मेरा जो सुझाव है कि किसी भी एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट करने के पहले आप कहीं पर छोटा जॉब पकड़िए, जॉब देख कर देखिए कि क्या है,
किसी भी कंपनी में, छोटे कंपनी बड़े कंपनी में, जहां आपको अपॉर्चुनिटी मिलता है, 1 2 3 साल जॉब कीजिए और उस चीज को समझिए कि है क्या, उसके बाद रिस्क लीजिए। एंटरप्रेन्योरशिप रिस्क है, नो डाउट, बट रिस्क लेने से पहले थोड़ा एक्सपीरियंस गेन करना भी मस्ट है। दिस इज माई सजेशन। थैंक यू। है वतन रगड़ने दे एड़ियां मुझको, मुझको यकीन है कि पानी यहीं से निकलेगा। कोई इतनी सरलता से देवेंद्र कुमार जी ने अपनी बात कही है। इसके बाद मैं आदरणीय हर्षित देसाई जी को यहाँ पर आमंत्रित करता हूँ कि जो कि वो डिज़ाइन थिंकर भी हैं और प्रोफेशन डिजिटल बाय ब्लड हैं, बट ऑल अबाउट हिज एंटरप्रेन्योर बाय पैशन। पिछले 30 वर्षों से वो अपना काम कर रहे हैं। उनकी उम्र पर आप बिल्कुल ना जाएं, बहुत ही वो कम उम्र की दिखाई देते हैं, लेकिन तजुर्बा बहुत बड़ा रखते हैं। एक बार जोरदार तालियों के बीच में हम आमंत्रित करें हर्षित देसाई जी को। नमस्ते मुंबई। मैं ज़्यादातर इंग्लिश में बोलता हूँ, पर आई विल ट्राई एंड सी इफ आई कैन कीप ऑन स्विचिंग बिटवीन इंग्लिश एंड हिंदी। मुझे लग रहा है कि आज बोलने का मौका मिला है, बट इट इज़ गोइंग टू बी अ इजी एंड अ डिफिकल्ट टास्क। आसान इसलिए कि सभी चीज़ जो मैं बोलना चाहता था ऑलरेडी बोल चुके हैं लोग, सो आई जस्ट हैव टू पिक अप कि किसने क्या अच्छा बोला, एंड आई कैन रिपीट इट एंड you will have a very good session. The difficult part is that when you try and collect some of this, each of what has been told is really a gemstone, as in what they want to say, and if you can, अगर आप थोड़ा भी उसमें से अमल कर सको अपनी जिंदगी में, तो काफी आसान हो जाएगी जिंदगी आपकी, if you are on this part of entrepreneurship, right? So I would like to leave you with just 2 simple words so that it becomes easier for you to go back and implement. 2 किस्से सुनाना चाहूँगा जहाँ से अगर आप कुछ सीख सके तो आप अच्छे से इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। ऑलमोस्ट 15 साल हो गए जिसके पहले मैं स्टैनफोर्ड गया था, एंड देयर वर पीपल हु वर ऑलमोस्ट ट्वाइस माय एज who had come there to learn different things, and all of them very, very senior, right? So I was kind of feeling pretty lost, saying that what am I going to do in a very, very senior group like that? And when we started working, they came up with a very, very innovative concept, right? So they said that today we are going to learn one single word, and the entire day was dedicated for one word. And that word was teamwork, right? So out of a 30-day which I spent at Stanford, one day, the first day was for one word, which was teamwork. And I think as soon as you start taking steps towards your entrepreneurship goal, right, very, very soon you will realize, and hopefully you should realize this on the very second day, that the main thing will be teamwork and the team you select, right? Because each one of you can have aspirations which are taller than Everest, but as soon as you start taking the second step, you will need team around you. So I think each one of you should focus on who you are going to bank with, right? And Kazi sir and even Harshal talked about as to how you need to know the right people to work around with, right? So I think you being able to find who your peers will be, आपके साथ कौन जाएगा when you want to go on a long journey, is very, very important. So if you want to go fast, you can go alone, but if you want to go very, very far, then you have to have a kafila with you, and is the reason why it is very important for you to identify who your core team will be. So I think teamwork is one word I would want to leave you guys with. The second word I think is being relevant, right? So if you look at all the developments which have happened in entrepreneurship, you have the ed tech companies coming up, you have insurtech companies coming up, you have fintech companies coming up, and almost everything you can imagine
there is health tech coming up, there is space tech coming up. So almost everything has a tech element getting attached to it. But I think very soon we'll realize that if you have to be different, you will have to do something which is tech plus plus. So the second thing I want to leave you with is when you start thinking about a new idea, just see how much relevant you are in the current times. A very small anecdote I would like to share, and just because majority of the people I see here are students, I would like to quote this anecdote, which is from IIT Bombay. The best student who I admire are APJ Abdul Kalam sir. I had happened to have a chance to listen to him in IIT Bombay. Those were my engineering days, and he came for a tech fest, which is called IIT Bombay Tech Fest. And it was just 3 months that India had done the first nuclear test, right? So if you have ever seen IIT Bombay auditorium, it is maybe 5 times as big as this, and almost everyone was sitting, and during a question answer session, a boy kept his hand up and wanted to ask a question. And the boy said, "Sir, while you are saying that India is a poor country and we all need to create employment and all of that, how do you justify you doing a nuclear test? And we would have spent so much money behind it. If you would have used it for our own internal development, it would have meant very different and all of that." And you could actually see all the students kind of sitting on the edges to hear our president talk about it, right? So all of these students were sitting on the edge thinking that we'll get a very elaborate answer as to what's the math which goes behind how the nuclear test needs to happen, and how will we prosper as a country, etc., etc. And the relevance part of it is what I learned when he answered, right? And he answered super sharp. What he said was that we have 2 neighbors. That answers your question, right? So how you think about what your idea will be and what you will focus on is very, very important as to how relevant you become to what the question is in front of you. So you may have 5,000 ideas running up in your mind, but make sure you pick up the one which ends up being super sharp, and you select a team which can take you along that path. So those are the 2 things which I think I would want to leave you guys with. Selecting a best team and being relevant. So thank you so much, and I wish all the best to each one of you aspiring to be entrepreneurs here. Thank you. बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय हर्षित देसाई जी। तालीम की सही ताकत अगर आपको समझनी है तो जो नाम उन्होंने लिया, भारत रत्न डॉक्टर एपीजे कलाम। आप सोचिए कि रामेश्वरम के एक सुदूर एक छोटे से गांव से वो व्यक्ति निकलता है और अपनी जीवन की यात्रा करते करते इस देश का एक दिन राष्ट्रपति बन जाता है। तो मेरे ख्याल से तालीम ही वो चीज़ है जो आपको इतनी ऊंचाई पे ले जाएगी। एक बार जोरदार तालियां एपीजे कलाम साहब के लिए। उनका अंतिम दिन भी वही था कि वो बच्चों को सिखा रहे थे। आईआईटी की में किसी एक लेक्चर के लिए वो गए थे और वहीं पर उनको हार्ट अटैक आया और वहीं से उनकी यात्रा समाप्त हुई। ऐसा समर्पित जीवन हमें देखने का मौका मिला। हम सब सौभाग्यशाली हैं कि हमने महात्मा गांधी को तो अपनी पीढ़ी में नहीं देखा, लेकिन हमने डॉक्टर एपीजे कलाम साहब को जरूर देखा कि वो 2 बैग लेकर राष्ट्रपति भवन में आए थे और 2 ही बैग लेकर राष्ट्रपति भवन से बाहर निकले। ऐसा कौन, फिर बिरला ही कोई होगा जिसको हमें फिर अपने जीवन में देखने का मौका होगा। आज मैं ये बात इसलिए भी कह रहा हूं कि मैं जिस अगले गेस्ट को यहां पर आमंत्रित करने जा रहा हूं वो इसी इंस्टीट्यूट के विद्यार्थी रह चुके हैं। इसीलिए बात बड़ी प्यारी ये है कि किसी भी संस्था के साथ जुड़ने का मतलब क्या होता है, किसी एजुकेशन संस्था से जुड़ने का मतलब क्या होता है कि वहाँ के शिक्षक उतने महत्वपूर्ण होने चाहिए, वहाँ के विद्यार्थी भी उतने महत्वपूर्ण होने चाहिए। मैं उन सभी शिक्षकों को प्रणाम करता हूँ जो
अपने अध्यापन से, अपनी अध्यापिका से बच्चों को सिखाते हैं। और वहाँ पर मराठी में ये बात मैं कहना चाहूँगा, कुछ लोग यहाँ पर आए हुए उनका भी मैं स्वागत करता हूँ, की प्रत्येक विद्यार्थ्यामध्ये एक राजहंस दडलेला असतो. त्याला शोधण्याचं काम त्याच्या गुरुजनांनी, त्याच्या शिक्षकांनी, त्याच्या पालकांनी करायचं असतं. आप सोचिए कि कोई बच्चा नेशनल एथलीट जब बन जाता होगा, उसके पीछे उसकी अपनी तो तमन्ना होती होगी कि मैं नेशनल चैंपियन बनूं, लेकिन उसके माता पिता, उसका समाज, उसका देश, उसका राज्य भी ये चाहता है कि ये बच्चा आगे बढ़े. उसी प्रकार से ये शिक्षक जो है वो भी चैतन्य के झरे हैं. ये बिल्कुल जैसे हम वाटरफॉल कह सकते हैं अंग्रेजी में, कि ये शिक्षक भी जो हैं एक वाटरफॉल के जैसे हैं. उसी प्रकार से नेहल वोरा जी का मैं यहाँ परिचय करा रहा हूँ. एक दिन इसी इंस्टीट्यूट में नेहल वोरा जी स्टूडेंट बनकर यहाँ आए थे, और आप यकीन मानिए कि उसी संस्था में एक दिन आप गेस्ट बन के जब आते हैं तो मन में कितनी खुशी होती होगी कि सबका हृदय जीत लो आचरण से, जैसे कि मधुगंध वातावरण से, आशीष का मूल्य होता बहुत है, देते नहीं लोग अंतःकरण से. ये आशीष का मूल्य है कि आज आप नेहल वोरा जी CDSL के आप CEO हैं और मुंबई स्टॉक एक्सचेंज के सेंट्रल डिपॉजिटरी से वाबस्ता हैं और जिम्मेदार हैं. मुकम्मल तारीफ किया जाए तो ये प्रोग्राम का काफ़ी समय इसमें चला जाएगा. मेरा आशर की तरह इनकी भी बहुत हुकूमत है. तमाम मुल्कों में वो शख्स खूबसूरत है. कभी कभी कोई इंसान ऐसा मिलता है, पुराने शहर में भी जैसे नई इमारत है. इन्हीं शब्दों के साथ मैं आमंत्रित करता हूं नेहल वोरा जी को. जोरदार तालियों से उनका स्वागत करिए. ये हम सब के लिए बहुत ही अपना अमूल्य समय निकाल कर हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं. वोरा जी का स्वागत करते हुए मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि अपना आशीर्वचन यहां पर बच्चों को दें. I wish you all a very very good afternoon. मैं पूरी तरह से प्रयत्न करूंगा कि मैं हिंदी में बोल पाऊं. मेरी वाइफ कई बार कहती है कि आप हिंदी कभी नहीं बोलना, क्योंकि आप बोल ही नहीं पाते हो, लेकिन फिर भी मैं पूरी तरह से प्रयत्न करूंगा. At the outset, I think जो अब तक स्पीकर्स है उन लोग ने कई मुद्दे आपके सामने रखे हैं, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है. और करीब 25 साल पहले मैं वो साइट पे था, तो यहाँ पे आके मुझे बहुत ही एक डिफरेंट काइंड ऑफ सुकून कह सकते हैं कि कमिंग बैक टू योर होम एंड स्पीकिंग बैक टू योर ओन पीपल, योर ओन फैमिली is a different kind of a joy. At the outset, I would like to thank Zafar Bhai, Taleem O Tarbiyat. I think it's a very very innovative program, and उनकी जो पैशन है कि बच्चे के लिए एक एजुकेशन के साथ एक्सपोजर राइट टाइप का देना, कि जो हर्षल ने बोला कि वो 5% कहाँ से कब रेलेवेंट होगा, वो एक्सपोजर के तौर पे जो मिल रहा है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है. At 75 years of independence, I think we are celebrating Azadi Ka Amrit Mahotsav. It's a very very important event for India. And today when we look back at the world, look at the geopolitical issues. You know, I was speaking to somebody, a billionaire in a country like Ukraine, today may be running for his life. So what is the importance of wealth when you don't have true independence? It's extremely critical that 75 years of independence, Azadi Ka Amrit Mahotsav, ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है. और हमारी जो पीढ़ियां जिन्हें अपने फैमिली लाइफ सैक्रिफाइस की है, अपना टाइम सैक्रिफाइस किया, कि जिस तरह से हम इंडिपेंडेंट हो पाए और 75 इयर्स तक हम इंडिपेंडेंट ही रहे हैं.
तो इससे हमारी एक जिम्मेदारी बनती है कि हम भी ये स्पिरिट ऑफ इंडिपेंडेंस को आगे बढ़ाएं और इंडिया को इतना मजबूत बनाएं कि जिस तरह से वर्ल्ड में कई कई चीजें हो रही है उससे आगे बढ़कर इंडिया एक एग्जाम्पल बने कि बाकी सारे देश बोले कि हमें इंडिया जैसा बनना है। ये इंडिपेंडेंस जो है वो एक ही मुद्दे पर रहती है, वो है सेल्फ सफिशिएंसी या आत्मनिर्भरता। तो आप मुझे पूछेंगे कि इससे एंटरप्रेन्योरशिप का क्या है, मेरे से इसे क्या रेलेवेंस है, जो हर्षित ने बहुत अच्छी तरह से समझाया कि रेलेवेंस बहुत ही क्रिटिकल होता है। ये बहुत ही मायने रखता है हम सभी पे कि हम किस तरह से आत्मनिर्भर बन पाए। हम चाहे एंटरप्रेन्योर हो या ना हो, हमें आत्मनिर्भर तो बनना ही है। तो आत्मनिर्भरता ये हमारे लिए बहुत ही अगत्य की एक इंपॉर्टेंट फिलॉसफी है जिसे हमें मानना होगा। क्यों, वो मैं आपको एक्सप्लेन करने की ट्राई करूंगा। I'll start with a small kind of example, an anecdote, which I'd learned as a part of my management program in this very institute, which had a great impact on me for these last 25 years. It's a very simple story. There was a father and daughter. The father asked the daughter, "Can you give me a cup of tea?" The daughter said, "Sure." So she went and got a cup of tea, saying, "Can you put sugar?" Saying, "Sure." The daughter started putting one spoon of sugar, second spoon of sugar, third spoon of sugar. The father is just looking at the daughter that she's not asking him when to stop. Finally, after 7 spoons of sugar, he said, "Stop. Are you giving me sugar or tea?" She looked at him and gave him those words of wisdom which I think are critical in our life. Saying, "I put sugar in the tea, but I have not yet stirred the tea. So the sugar sweetness will only come when I stir the tea." And this is the critical ethos कि हमारे बहुत ही एजुकेशन आएंगे, बहुत एक्सपोजर आएगा, पर जब तक हम मेहनत नहीं करेंगे उसे अपने जीवन में उतारने का, वो स्टरिंग का, तब तक वो सिर्फ शुगर रहेगा चाय में, but the sweetness of that sugar will not be seen. So this is the most critical part of our philosophy. I would like to quote some very important anecdotes by one person I really admire, is Steve Jobs. अगर आप उनकी स्टोरी पढ़े, मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा कि आप उनकी स्टोरी पढ़े, बहुत ही मोटिवेटिंग स्टोरी है। He started off as a small-timer entrepreneur in a garage and created the first trillion-dollar company of the world called Apple. उनके 2 शब्द है कि innovation distinguishes between a leader and a follower. And second is, your time is limited, so don't waste it living someone else's life. ये 2 शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि what it is trying to show that you need to start thinking what is relevant for me. How do I make myself self-sufficient? How do I make myself independent of my thought? I don't want to lead someone else's life, because मेरी life वो मेरी है और उससे मुझे I want to make it the best. To make it the best, I need to believe what I want to be. I may be influenced by people, but finally, it's your life which you need to make it self-sufficient. Now, for making your life self-sufficient, whether you are an employed person or an employer, you are going to save money. How many of you want to save a lot of money in the audience? Just could you raise your hands?
everyone. Why? Because your job may be there, not there, your business may be there, not there, the savings are going to help you. What is it that is going to create that savings? What is it that is going to make you self-sufficient when you have a bad day? Is your very savings. And for savings, what is the typical instruments which people used to use when I was on that side of the table was mainly bank-based fixed deposit schemes, government-based, government-backed security schemes like the Provident Fund, Public Provident Fund, etc. But today, these instruments have not been relevant anymore. I'm not saying they should not be there, but they're losing its relevance rapidly because the interest rates are falling and they may not cater to the savings जो मेरी आत्मनिर्भरता का जो objective है, that will be able to satisfy that objective. And for that, what is necessary is turning to a portfolio of assets. कितने लोग ऑडियंस से शेयर मार्केट में अपना सेविंग्स करते हैं? There are a few hands are not there. So there is this fear factor. शेयर मार्केट में पैसे घुमाने वाला हूँ, यहाँ पे कुछ नहीं हो पाता है, you need to be full time, etc., etc. Answer is wrong. The important thing is that how do you approach this share market with the ultimate objective of becoming self-sufficient and independent. अगर मैं ब्लैंक चेकबुक साइन करके किसी को दे देता हूं और मैं सोचता हूं कि ये फ्रॉड नहीं होगा, तो ये it's a fool, you're living in a fool's paradise. Instead, if I learn what is my do's and don'ts, what do I need to do so that I can benefit from the stock market, but ensure that the risk is within my levels of tolerance, where I don't go beyond a particular level, is the most important feature of being Atmanirbhar. So in terms of, I'll give you another anecdote. Tomorrow if somebody asks you that Virat Kohli will be successful or the Indian team will be successful, who do you think will be successful more? Obviously the Indian team. Why? Because it has many people performing the role singularly as teamwork to succeed and win a match. Virat Kohli may fail or succeed. Both possibilities are there. And Virat Kohli here is only an example. It's not personally driven towards him. It's the individual versus the team. The same logic appears when you invest in the stock markets. If you put all your things in one, you are being the individualistic saver, where the probability of failure is higher. But अगर मेरे पास टीम है, पूरी टीम है, and that is portfolio. So I would urge all of you that whilst you may want to invest in stocks, mutual funds is a very important part of the portfolio because it has a variety of stocks. It has a professional which is managing it. And most importantly, जब मुझे पैसे की ज़रूरत हो तो 48 hours मुझे पैसे मिल जाते हैं. तो जब when there is a bad day at work, when there is a bad day in my business, how do I remain Atmanirbhar, self-sufficient? Is to remain invested in other form of assets which are working when I am also not working, which is earning when I am not earning. And ये अगर कोई आपको बोले कि आज आपने पैसे रखे और कल आपके डबल हो जाएंगे, एक साल के बाद डबल हो जाएंगे, वो कभी नहीं हो रहा है. आपको धीरे 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 समुंदर का पानी, every drop creates the ocean.
इसी तरह से आपको कंसिस्टेंसी रखनी है अपनी सेविंग्स पे और डिसिप्लिन रखनी है अपनी सेविंग्स पे, और 5 साल 10 साल के बाद देखिए वो रिटर्न आपको भी शॉक आएंगे कि मेरे पास इतने सारे पैसे कैसे आ गए. दैट्स द पावर ऑफ डिसिप्लिन एंड कंपाउंडिंग. कई एक बुक में मैंने पढ़ा था कि वेल्थ इज नेवर क्रिएटेड बाय हाई प्रॉफिट हाई मार्जिन्स. वेल्थ इज ओनली क्रिएटेड बाय कंसिस्टेंट margins which are predictable, but by the power of compounding. कंपाउंडिंग जो इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट में अर्न करता हूं उससे वेल्थ होती है. प्रिंसिपल पे मैं हाई इंटरेस्ट अर्न करूं उससे वेल्थ नहीं होती है. तो ये सब के पीछे जो बैकबोन होता है स्टॉक मार्केट के लिए कि मेरे को इन्वेस्ट करने हैं, तो जैसे मेरे पास एक बैंक अकाउंट होना है, इसी तरह मुझे एक डीमैट अकाउंट भी रखना बहुत ही जरूरी है. अभी 2-2.5 साल के कोविड जब हुआ तब एक बहुत इंपॉर्टेंट साइको एनालिसिस करे पॉपुलेशन का, तो बहुत ही एक इंपॉर्टेंट मेजर हमें पता चला. हमें लगा जब मार्च 2020 में कोविड हो गया, लॉकडाउन हो गया, सब धंधा ठप हो गया, तब securities market, stock market was the only market which continued without a second of delay. Everybody was working from home. The exchanges, the depositories, the brokers, but more importantly, the investors also. Why was this possible? Because technology has helped in connecting the person to work from home, the broker to work from home, the exchange to work from home, but the market continues. और इससे क्या हुआ? पार्टिसिपेशन बढ़ा. क्यों पार्टिसिपेशन बढ़ा? On one word, trust. So today when I sit back and think about what CDSL should do or what the market should do, there's just one phrase which I keep on telling myself every single day, and that's my contribution, my vision of Atmanirbhar Bharat. That's my responsibility of those generations who has given me a free India where I am staying, is I want to build more and more technology which will build trust. The ethos behind all of this is that more and more technology I want to build which will give every individual the power to decide, the power to remain independent, the power to remain Atmanirbhar. I'll just give you a small example. CDSL got set up in 1998. It took 15 years to build the first crore of demat accounts. It took 5 years to build the second crore of demat accounts. It took 1 year to build the third crore of demat accounts. And it took 1 year to build 3 crores of demat accounts. So today, we are standing at about 6.75 crore demat accounts. It's a great journey in terms of the power of technology which builds trust. More the trust, more the participation. But this is only the surface. As I could see from the audience, only few people want to yet have come into the securities market. It only constitutes about 6 or 7% of our population. I want every Indian to remain independent, to become independent, to be responsible to itself. Not leave it to someone else, give a blank checkbook or a blank slip book and do whatever you wish. No, I want to be responsible for every rupee I am investing in that market. Because whether I am an entrepreneur or not an entrepreneur, I want to make everybody, or the vision is to make every Indian truly independent towards its own savings. So you can be an entrepreneur to your savings. You can be an entrepreneur
to whatever investments you're making. And for that, you need to be responsible. You need to be knowing what needs to be done. And today, a lot of people say, it's very strange. There's another very important analogy I keep on drawing. How many people of you order from these online platforms like Flipkart, Amazon? Wow, look at this. So if you have the wherewithal of using technology and trusting that technology to your daily effect, why can't the same logic work in opening a demat account or opening a trading account, but being responsible for that? It's as simple as this. Amazon या Flipkart में क्या करता हूँ? पैसे दे रहा हूँ, goods ले रहा हूँ. शेयर मार्केट में क्या होता है? पैसे दे रहा हूँ, म्यूचुअल फंड्स या शेयर्स ले रहा हूँ. It's the same thing. But there is a block कि ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज है. कॉम्प्लिकेटेड नहीं है. धीरे धीरे जाइए. 100 रुपये से, 500 रुपये से, 1000 रुपये से, but consistently every month कीजिए, and you will see the financial independence which you will get over the next 5-10 years. If I want to build a house, I take a loan. If the loan is for 15 years, 20 years, I am going to be paying EMI every month for that loan. Why? Because my hope is at the end of I am owning a house which will be mine. Why can't I have that same philosophy of investing and EMI type investments every month into building a corpus which will make me truly independent, truly Atmanirbhar? I would just like to leave these thoughts with you, but just one word of caution. And this is not only for stock markets, that as हमारा टेक्नोलॉजी से पाला बढ़ते जा रहा है, my life has become this phone. Right from my entertainment to my business to my talking to friends, talking to my family is all through this phone. There is a risk of ensuring that your phone remains safe, because today hacking has become a very, very big risk. So I would urge all of you to be responsible in terms of how you behave on your phone, because your critical information can get leaked. So remain up to date, and it is in your business to remain that, to remain truly Atmanirbhar. What I would like to conclude is that please spend time in educating yourself towards these newer innovations. There is a lot of momentum which is already happening, but if there is a lot of gain which you can do in making yourselves truly independent, truly Atmanirbhar. And I'll end with a quote from the father of the nation, Mahatma Gandhi. Change yourself. You are in control. Thank you. बहुत ही गंभीर ऐसा ये विषय था, और उतनी सरलता से आपने हमको समझाया कि कितना आसान है डीमैट अकाउंट होना और उसको ऑपरेट करना. अब यहाँ पर मैं 3 सवाल लूँगा. अगर किसी के मन में कोई 3 सवाल हैं तो वो गेस्ट से पूछें, और उसके बाद फिर हम यहाँ पर इंटरवल के लिए जाएंगे. आप सभी से इसके बाद लंच सेशन होगा, और फिर हम 1:30 पर मुलाकात करेंगे. उसके पहले 3 सवाल अगर किसी के हैं, किसी के मन में कोई है, तो 2 मिनट का समय है. आप हाथ ऊपर करें या आप यहाँ आ जाएं. किसी के मन में अगर कोई सवाल है, प्लीज कम. 3 सवाल है. माइक है तो माइक. कॉर्डलेस माइक है.
Hello everyone, greetings for the day. Hello guests. So sir, my question is very simple. Anyone can answer. To whom you are asking? Today we are talking about entrepreneurship, right? To whom you are asking? Anyone can answer. Anyone can answer. My question is very general. So Microphone. sir, when you talk about entrepreneurships, it is a very good thing. Like we are also talking about Atmanirbhar. So there are some startups in India who provide 10 jobs and kills hundreds of the jobs. And whose job gets killed? Those who wants to be Atmanirbhar. So my question is very simple. How should our India, who motivate us to be Atmanirbhar, can approve these kinds of startups? I don't want to mention the startups. So I'll try to answer that, and I'll ask my other panelists also to kind of contribute. See, the important thing in whether there are a lot of things, and in a startup, probably they'll out of 100 ideas, 95 may fail. So, as one of the panelists, my lawyer friend, said, that success and failure should not be your main motto. Working towards that hard work should be the motto, and leave the rest to how it will kind of evolve. If you kind of focus towards only success and failure, you will not give your 100%, because you will continuously, it is like basically driving a car and looking continuously at the rear mirror, that whether I am on the right track or not. The important thing is, given your 100%, even if you fail, the right attitude will make you learn and not lose. So I think that should be the mantra, because a very famous person once told me that success is what, if you want to define success, is making the decisions at the right time. And so then the person asked that, how do you make decisions at the right time? So he said, by experience. So he's saying, how do you gain experience? He answered, by making wrong decisions. So that is where I would like to conclude that. thank you, sir. Any other question? पीछे के भी स्टूडेंट्स को अलाउड है कि पीछे से भी आप सवाल पूछ सकते हैं. यस, आप अपना नाम बताइए, कहां से आए ये भी बताइए, और सवाल और किसके लिए है. Hello and good afternoon, one and all. My name is Mohib, and I'm a student of Kalsika Technical Campus. And my question is to Dr. Zahir Qazi. During a talk, you have talked about this new scheme the government has introduced, and we have also learned about it. But the thing is, like, the question erupts in our mind that how we will grade the student, as we have also built one of the product in our final year project, and we have won the national level prize in it as well. But the thing is, like, people ask that if we will not grade the student, then how we will filter out the good and a bad candidate for certain things. So what about the grading system in a new scheme? It all depends the kind of scheme you are going to adopt. Like, for example, you said you are in Kalsekar Integrated Technical Campus. Probably you got into some kind of innovation and you got some kind of award also. If that be the case, you have to pursue it how it will be applicable. And any innovations, if somebody wants to do it, it should be also to a large extent demand driven. If that happens,
then success is going to be there always. As rightly said, when you want to become an entrepreneur, you go with full blast, with all the confidence in the world. And in one particular community, I would not name, which is the most enterprising community in business, उनके घर में ये बोला जाता है जब तक मेरा बेटा एक दिवाला नहीं निकालेगा तब तक वो अच्छा बिजनेसमैन नहीं बनेगा. So we learn from our experience. I will not name that. And it's always that. Experience comes from foolishness and wisdom comes from experience. So you have to get into it. And in your campuses, you have got incubation centers and you can go for various things that you would like to do. Does that answer your question? Or? Not really, sir, but I was just asking. Otherwise, I have not understood your question or you have not been able to put it across to me. You want? I think Shruti madam is going to add. So you want to know about schemes, right? It's not about scheme, but how we will promote the student or how we will grade the student. As new scheme is not focusing much on the marks, right? That we are not focusing much on the toppers, first, second, third. I want to understand your question is for the community of you and yourself or for the startup which you're doing? For the startup as well, like how we will filter out the good people and a bad people, good students and a bad students, based on the वो आपके business customers हैं? side. Users Yeah, हैं? yes, application users. तो अच्छे users और गलत users को कैसे separate करना है? Yes, That is your yes. question, right? Yeah. In fact, you should study more bad users because the more bad users you will study, the better you will know the nuances in your already created system, whether it is a product or a service. So आपको तो ये परवाह करनी नहीं चाहिए कि user bad है या सही है या गलत है कैसा भी है. आपके objectives अगर defined है तो you will be able to automatically filter that okay, this is what the user is and this is what my product is going to do. So I think you need to change the reference frame here. You're seeing your product from the reference frame of the user, whereas you have to see how your product actually behaves with the user. थैंक यू. Yes, thank you, ma'am. अब आखिरी क्वेश्चन ये बच्चियों से है, लड़कियों से है. 2:1 होना चाहिए, ठीक है ना सर? 2:1 होना चाहिए. कितनी गपशप हम करते हैं ना, एक सवाल पूछने में कितनी सोचना पड़ता है ना. देखिए मुझे यहां से दिख रहा है कि कौन शांति से सुन रहा है, तो मैं फिर माइक उन तक पहुंचा दूंगा. वेरी गुड. सवाल जोरदार तालियां दीजिए, जोरदार तालियां दीजिए, जोरदार तालियां. आप अपना नाम बताइए, कहां से आई हो बताइए, और आपका सवाल किसके लिए है ये भी बताइए. सर मैं अंजुमन इस्लाम कॉलेज से हूँ, अंजुमन इस्लाम बैरिस्टर. सर मुझे रियल एस्टेट के बारे में पूछना था, पर उससे पहले मैं आप प्लीज पूछिए. सर मैं लॉ स्टूडेंट हूँ और मैं 1 महीने पहले मैं सीए का एग्ज़ाम कंप्लीट किया. मतलब इंटरमीडिएट में मैं इंटरमीडिएट और लॉ दोनों परस्यू कर रही हूँ मैं. तो मैंने एग्ज़ाम्स तो दे दिए और लॉ के सेकेंड ईयर भी मैंने कंप्लीट कर लिया है. अभी मैं 3rd ईयर में जाऊँगी और मुझे रियल एस्टेट में लॉयर के पास काम करना था और मैं फाइंड आउट कर रही थी. बट मुझे रियल एस्टेट में ज़्यादा एक जगह मैं इंटरव्यू देने गई, बट वहाँ पर मुझे ऐसा लगा कि यहाँ पर ज़्यादा क्लाइंट्स नहीं है. तो मुझे ऐसा एक सीनियर लॉयर्स देखना है जहाँ पर मुझे रियल एस्टेट में मतलब नॉलेज गेन करना है. और तो आपने अभी बताया कि कोई ऐसे कंपनी में आप करो जहाँ पर आपको एक्सपीरियंस अच्छा मिले, सीनियर्स अच्छे हो, ऐसे एक सर ने बताया. पर मुझे बिल्डर्स के यहाँ पर काम करना चाहिए या मुझे एक लॉयर फर्म के यहाँ पर काम करना चाहिए? एज ए एक्सपीरियंस मुझे पहले खुद को उसमें इन्वॉल्व करना है कि एक बिल्डर्स क्या करते हैं वो देखना है.
और मुझे प्रैक्टिस भी रियल एस्टेट में करनी है। मैं सीए इसलिए परस्यू कर रही हूँ क्योंकि मुझे नॉलेज हो उस चीज़ का। जैसे टीडीएस में बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं और टैक्सेशंस में इश्यूज आते हैं, तो मुझे ये सब प्रॉब्लम्स मुझे खुद को इस सब का ज्ञान हो तो मैं कहीं ना कहीं उसमें ग्रोथ करूँगी। इसलिए मुझे आपसे थोड़ा ये पूछना है कि मैं किस तरफ जाऊँ। मैं जो समझ पाया हूँ आपका सवाल देवेंद्र जी से भी है कि आपको कितनी लॉयर की जरूरत पड़ती है, और फिर चटर्जी साहब से पूछेंगे कि सीनियर काउंसिल अपने स्टूडेंट को कैसे चुने। बराबर है मेरा मतलब मैं जो समझ पाया हूँ? आपको मैं बहुत सिंपल भाषा में बता रहा हूँ। रियल एस्टेट का जो पहला काम शुरू होता है वो लॉयर से होता है। कोई भी लैंड की वेटिंग, को लैंड जेन्युइन है या नहीं है, उसकी प्रॉपर्टी की पूरी वेटिंग होती है, लीगल वेटिंग होती है। तो रियल एस्टेट का पहला काम लॉयर से शुरू होता है। हम अभी आपको जस्ट एग्जाम्पल दे रहा हूँ। लोअर परेल में 11 एकड़ लैंड है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, इंडिया गवर्नमेंट मिंट का जी, और वो 35 साल पुराना प्रॉपर्टी है। बहुत जमाने में किसी सिप्रोडी ने बनाया था और प्रॉपर्टी डिलेपिटेड हो चुका है। उसके बहुत से ओवरड्यूज हैं एमसीजीएम के साथ, और भी बहुत सारे जो है। अभी वहाँ पर इस प्रॉपर्टी की पहला जो काम है वो प्रॉपर्टी कंसलेंट एंड लीगल वेटिंग कराना है कि इस प्रॉपर्टी में किस किस अथॉरिटी को कहाँ कहाँ कितना ड्यूज है, वो सारा ड्यूज निकालना, उसको ड्यूज क्लियर करना। जब तक प्रॉपर्टी का लीगल वेटिंग नहीं होगा उसके ऊपर हम आगे नहीं बढ़ते हैं। आप तुरंत देवेंद्र जी को मिलिएगा। ये पहला असाइनमेंट आपका होगा कि पहले ये पता करिए कि कितने ड्यूज हैं, ठीक है। अब इसके बाद मैं आदरणीय चटर्जी साहब के पास में अनुरोध करूंगा कि सेकंड, कोई भी प्रॉपर्टी के ऊपर लोन सैंक्शन होता है तो लोन सैंक्शन करने के पहले भी इस प्रॉपर्टी की लीगल वेटिंग होती है। कोई भी बैंकर किसी भी प्रोजेक्ट को एडवांस नहीं करता है, लोन नहीं देता है जब तक कि उसकी लीगल वेटिंग नहीं होती है। रजिस्ट्री ऑफ प्रॉपर्टी, हर जगह लॉयर्स की इन्वॉल्वमेंट है। प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री भी बायर सेंसर के बीच में, वहाँ भी लीगल वेटिंग होती है डेट्स की। तो लॉयर्स का स्कोप तो जो है काफी ज्यादा है। साइलेंस प्लीज। रियल एस्टेट में हर एक स्टेप में जो है लॉयर्स का है। उसके बाद अकाउंट साइड से आजकल इतने टैक्सेशन हो गए हैं, इतने डिस्प्यूट्स हो रहे हैं, इतने जीएसटी का है, इनकम टैक्स का है, प्रॉपर्टी टैक्स का है, हर जगह लॉयर्स ही आते हैं फ्रंट में। तो बैकडोर में जो काम है लॉयर से ही काम है। आप देखते हैं कंस्ट्रक्शन चल रहा है, ठीक है, वहाँ पर जो है स्किल वर्कर्स काम कर रहे हैं, बट उस कंस्ट्रक्शन को सेफ देने के पीछे बहुत सी टीम इन्वॉल्व होती है। उसमें एक टीम जो लीगल टीम भी है, जो बहुत स्ट्रॉन्ग टीम होती है। तो आपको पहले किसी जो बताया सर हमारे सीनियर एडवोकेट ने जो है कि आपको एक किसी मेंटर के साथ जुड़ना पड़ेगा। स्टार्ट करने के लिए सीखना पड़ता है, ABCD से सीखना पड़ता है किसी फील्ड में। तो पहले आपको किसी मेंटर से जुड़ना पड़ेगा। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ एंड मोर आपको ही बताएंगे साहब हमारे जो है। चटर्जी साहब से अनुरोध करूंगा कि आप भी, ये बच्ची दुविधा में है कि मैं कहाँ जाऊं, तो आप इसको सही रास्ता दिखा दें। बड़ी आपका कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा है। कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा है। आपको डिसाइड करना है आपको एंटरप्रेन्योर बनना है या लॉयर बनना है। आज जैसा कि देवेंद्र जी ने बताया, किसी भी रियल एस्टेट के लिए एनीथिंग स्टार्ट्स विद द टाइटल सर्टिफिकेट। देवेंद्र जी किसी भी प्रॉपर्टी को नहीं छुएंगे जब तक अ लॉयर टाइटल सर्टिफिकेट नहीं देगा। और जब लॉयर एक टाइटल सर्टिफिकेट देता है उसको बहुत रिसर्च करना पड़ता है, उसको देखना पड़ता है ये प्रॉपर्टी कभी कहीं मॉर्गेज तो नहीं था। देयर आर सो मेनी थिंग्स जो चीज़ आप यहाँ नहीं सीख पाएंगी, आप किसी सोलिसिटर फर्म के साथ ही सीखेंगी। देयर आर टू एस्पेक्ट्स ऑफ द लॉ प्रोफेशन। One is a counsel profession like I do. I argue the matters in the court. Second is the solicitors who are the attorneys at law. उनका काम जो होता है वो बैठ के अपने ऑफिस में ब्रीफ बनाते हैं। तो सोलिसिटर्स का काम ये होता है वो जो टाइटल सर्टिफिकेट देते हैं। तो देवेंद्र जी जैसे हैं वो किसी सोलिसिटर को बोलेंगे कि इसमें ये लैंड हम सोच रहे हैं खरीदने का, आप हमको बताइए ये लैंड ठीक है कि नहीं। तो वो सोलिसिटर वो रिसर्च करेगा, उसका रजिस्ट्रार ऑफिस में जाएगा, वहाँ पे 40 इयर्स के रिकॉर्ड देखेगा, इफ देयर इज एनी मॉर्गेज रजिस्टर्ड और नॉट, इफ देयर इज एनी बैंक लोन इज देयर, many things which has to be seen. So that is the solicitor's work, which if you want to become a solicitor, then you have to join a solicitor's firm.
सोलिसिटर्स का काम ऑल्सो ये भी होता है कि वो पिटिशन क्रिएट करते हैं। अगर उनके पास कोई लिटिगेशन आ गया तो वो अपने सोलिसिटर के पास जाएंगे। मैं बॉम्बे की पद्धति की बात कर रहा हूँ, डिस्ट्रिक्ट लेवल्स में या यूपी वगैरह में, अदर साइड में लॉयर्स दोनों ही काम करते हैं। मैं बॉम्बे में जो सिस्टम चलता है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। मुंबई का सिस्टम जो है, यहाँ लॉयर्स 2-tier सिस्टम है, विच इज़ टेकन फ्रॉम इंग्लैंड, द सोलिसिटर एंड क्वींस काउंसिल्स। तो वहाँ पे सोलिसिटर्स भी होते हैं, क्वींस काउंसिल होते हैं, सोलिसिटर्स भी प्रिपेयर करते हैं और क्वींस काउंसिल कोर्ट का आर्ग्यू करते हैं। तो ये सिस्टम यहाँ पे लिया है, मुंबई में अभी भी प्रिवेलेंट है। सो यहाँ पे आपको सोचना पड़ेगा कि आपको सोलिसिटर बनना है, आपको सोलिसिटर के ऑफिस में काम करना है या कोर्ट में जाके आर्ग्यूमेंट करना है। अगर आपको कोर्ट में जाके आर्ग्यूमेंट करना है तो मैंने आपको कहा है यू हैव टू हैव द बेस्ट लॉयर्स। आपको देखना पड़ेगा किस लॉयर का रेपुटेशन अच्छा है, उसी के साथ काम करें, क्योंकि जो लॉयर आर्ग्यू करते हैं वो भी वही जज बनते हैं आगे जाके, तो वो फिर आगे आता है। और सोलिसिटर अगर आपको बनना है तो एक बहुत से आजकल तो यंग बच्चों ने बहुत मेरे ही जूनियर्स ने 2-3 सोलिसिटर फर्म खोल लिया है। सो आजकल यंग बच्चे लोग बहुत सोलिसिटर्स 2-3 बच्चे मिलकर अपना सोलिसिटर फर्म ले लेते हैं, कर लेते हैं। तो ये आपको डिसाइड करना है आपको क्या करना है, या फिर रियल एस्टेट में जाके उनके साथ काम करना है। दैट इज अप टू यू। मेरे ख्याल से आपकी शंका का समाधान हो गया है। यस सर। एंड धन्यवाद। डोंट बी कंफ्यूज्ड इन लाइफ। वो हमारे जैसे, इस लाइन को सुनिए, उन्होंने कहा डोंट बी कंफ्यूज। हमारे जैसे महाभारत में कहावत कहा है कि सिर्फ अर्जुन से पूछा कि तुमको क्या दिख रहा है, तो मुझे बोला वो मुझे सिर्फ उस चिड़िया की आंख दिख रही है। तो वही चीज़ आप फॉलो कीजिए, आपको क्या करना है, यू हैव टू फॉलो दैट ओनली, नॉट डोंट गो हेल्टर स्केल्टर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। थैंक यू सर। अब इसके बाद मैं वोट ऑफ थैंक्स के लिए और एक मैसेज हमारे जफर सरेशवाला जी ने भेजा है, मैं उस मैसेज को यहाँ पे शुरू करने की। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। आप लोग सब बच्चे यहाँ पर आए हैं, ये हमारी जो एजुकेशन। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। आप लोग सब बच्चे यहाँ पर आए हैं, ये हमारी जो एजुकेशन टू एंटरप्रेन्योरशिप की जो इनिशिएटिव है, तो मैं बहुत आपका शुक्रगुजार हूँ। लेकिन मैं आज आपके सामने बिल्कुल इसलिए नहीं हूँ कि मैं कुछ दिनों से बीमार हूँ और मुझे कहा गया था कि भाई अभी मजमे में आना ठीक नहीं है। लेकिन मैं शुक्रगुजार हूँ तालीम और तरबियत की टीम, नरसी मोंजी यूनिवर्सिटी, अंजुमन इस्लाम, CDSL, नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कंपनी और हमारे जो दूसरे साथी जिन्होंने मदद की और आज ये प्रोग्राम हुआ है। बस ये है कि देखिए आप लोग यहाँ आए हैं और हम लोग 3 चीज़ों की वर्कशॉप चला रहे हैं, फाइनेंशियल लिटरेसी, कैपिटल मार्केट और एंटरप्रेन्योरशिप। तो ये वो चीज़ें हैं कि जो आपको ज़िंदगी में आगे बहुत काम आएंगी। तो बस लीजिए इसका ज़्यादा से ज़्यादा, जितना आप इसमें इल्म हासिल करेंगे ये आपको फ़ायदा होगा। और ये एंड नहीं है बल्कि ये शुरुआत है। यहाँ से आपको एक ज़िंदगी की सोच मिलेगी और उस सोच को आप आगे लेकर चलें। हम लोग आपके साथ रहेंगे, ये नहीं कि ये प्रोग्राम के बाद हमने आपको छोड़ दिया, हम आपके साथ रहेंगे। CDSL के लोग हैं, ये NMIS है, ये सारे जो लोग हैं, आप अगर आपका आइडिया है ऐसा तो हम उस आइडिया को आगे लेकर जाएंगे। और उसमें ख़ास तौर से जो टाई के 2 लोग आए हैं वो ज़बरदस्त आपको ये बताएंगे कि भाई आइडिया को पहले तो स्टार्टअप में से कैसे कन्वर्ट करना, वो स्टार्टअप जो है उसमें क्या वैल्यू हो कि लोग उसमें पैसा डालें, उसमें इन्वेस्ट करें, और फिर ये स्टार्टअप यूनिकॉर्न कैसे बने। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक ये भी है कि टेक्नोलॉजी के बाद क्या। तो आप लोग इसका फ़ायदा भरपूर उठाएं। आपका मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप अपना वक्त निकाल के आए हैं और आपकी हाज़िरी से हमें और करने की हिम्मत मिलती है। थैंक यू सो मच। धन्यवाद ज्ञापित करें और अब हम अगले सेशन के लिए मिलेंगे 1:45 पर।
बाहर की लॉन्च में भोजन का इंतज़ाम किया गया है, लंच की अरेंजमेंट की गई है। पहले लड़कियों को लेने दें, उसके बाद फिर लड़के लें और फिर बाद में पुरुषों ले लें। और ज़्यादा से ज़्यादा सवाल आप अगले सेशन वर्कशॉप में पूछें। पहला सेशन हमारा 145 को होगा, वर्कशॉप ऑन फाइनेंशियल लिटरेसी। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। मैं रवि लालपुरी जी से अनुरोध करूं कि आप मंच पर पधारें। धन्यवाद।
हाँ सर, उनको बुलाना पड़ेगा अंदर। सभी फैकल्टियों से मेरी अनुरोध है, सभी फैकल्टी मेंबर से मेरा अनुरोध है कि आप अपने स्टूडेंट्स को जल्द से जल्द अंदर लेकर आएं। अगला सेशन हम अगले 5 से 7 मिनट में शुरू करना चाहेंगे। हाउ इज द जोश? लंच ठीक था? कुछ कम ज्यादा? कम था? ज्यादा शायद इसलिए दिया नहीं होगा, नहीं तो बाद में नींद आ जाएगी एसी रूम में।
एक बार जोरदार तालियों के बीच में हम श्रुति कुशवाहा जी का यहाँ पर स्वागत करें। आपका जो विषय है हाउ टू बिल्ड अ बिजनेस फ्रॉम एन आइडिया एंड टू स्केल इट बीइंग अ यूनिकॉर्न, इस विषय पर वो अपना वक्तव्य रखेंगी और उसके बाद में आखिरी 10 मिनटों में फिर हम क्वेश्चन एंड आंसर सेशन पे जाएंगे और उनके साथ में ही हर्षित देसाई जी भी रहेंगे और वो भी अपना व्हाट नेक्स्ट आफ्टर टेक्नोलॉजी उस विषय पर वो भी अपना मत रखेंगे। मैं सबसे पहले श्रुति जी को यहाँ पर आमंत्रित करता हूँ कि वो अपना मनोगत यहाँ पर व्यक्त करें। आपने हर्षित देसाई जी के लिए तालियां बजाई क्या? नहीं बजाई ना? बस जोरदार तालियों से देसाई जी का भी हम यहाँ स्वागत करें। धन्यवाद। We will have to. Whatever instruction you wanted to give you. Lights go in. Lights dim. जरा मामा लाइट बगल। But we will need this screen here actually. Lights. How is the projector? दोन्हीकडे आहे ना, दोन्हीकडे स्क्रीन येतं. दोन्हीकडे स्क्रीन येते हैं। The screens are there on both the sides. So This you will are go to okay. this will go to the audience. अगर आपको थोड़ा सा टिल्ट कर दूं क्या? ये कनेक्टेड है ना आपका, ये कनेक्टेड है ना, ये ले जाओ ना। ये नीचे। बराबर मेरे को मेरा लैपटॉप दे दो ना, आप स्क्रीन पे खाली इससे लोगो। अरे तब तक आप बोलना शुरू कर दीजिए। बच्चों का ऑडियंस। गुड आफ्टरनून एवरीवन। काफ़ी लोग चले गए हैं, देख के थोड़ा सा डीमोटिवेटेड फील हो रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, चला लेंगे इतने ऑडियंस में। सो अभी जो हम सेशन लेंगे, वर्कशॉप लेंगे, वो बहुत ज़्यादा इंटरेक्टिव होगा, क्योंकि मुझे पता है लंच के बाद लोगों को सोना आता है, राइट, सबको आता है। तो काफ़ी सारी मेहनत ना आप लोगों से ज़्यादा होगी, हमसे कम होगी। तो वी विल गो थ्रू अ लॉट ऑफ ideas and then how we can assess ideas and then at what stages we can then refine those ideas and then filter that these ideas are subjected to making a business and then how we can build a business from those ideas. तो आज आप इस workshop के बाद जो भी काम कर रहे हैं, मतलब whether you are building a business, whether you are thinking of a startup, whether you are thinking of making an NGO or anything, उसमें 10% ज़्यादा क्लैरिटी आएगी एंड दैट इज़ अ गारंटी। सो गिव मी 5 minutes एंड आई थिंक वी शुड बी डन विद द सेटअप। सबके पास पेन पेपर है ना? एवरीवन हैज़ पेन एंड पेपर? जिसके पास नहीं हो वो अपने अगल बगल वालों से मांग ले ज़रा। कलेक्टिव सोर्सिंग और वी कैन से क्राउड फंडिंग। नहीं, हम डिजिटल नहीं, पुराने तरीके से कभी कभी सही रहता है। या आई थिंक ये वाले, these ones. Lights. अरे वाढवू नको, कमी कर, बंद कर। ठीक है इतना? माइक वरनं सूचना द्या, माइक वरनं सूचना द्या मामा। और बंद कराई। स्क्रीनवर चालू आहे ना? स्क्रीन कुठे गेला? प्रोजेक्टर चालू नाही केलं त्यांनी? अरे स्क्रीनवर लाईट द्या ना मॅडम, आप तब तक बोलते नहीं। You go उनका ध्यान बना रहे हैं। There is light there. You stand there. थोड़ी लाइट दे दो। हाँ, थोड़ी लाइट चल सकती है। You go forward. अच्छा सचिदा, थोड़ी सी लाइट द्या। So meanwhile, okay, they are setting up.
कितने कितने लोगों के पास आइडियाज़ ऑलरेडी रेडी हैं या फिर ऐसे हैं जो अभी पकाने बाकी है? मतलब सब्ज़ी किसके पास है और सब्ज़ी लानी कितने लोगों को बाकी है? तो सब्ज़ी किसके पास है वो ज़रा हाथ उठा लीजिए। सब्ज़ी है, सब्ज़ी है, सब्ज़ी है, सब्ज़ी है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। सब्ज़ी बिल्कुल नहीं है, मतलब सब कुछ पकाना बाकी है, ऐसे मुझे लगता है काफ़ी सारे लोग हैं ना। तो आप जिस शीट को निकाला है अभी आपने, उसमें जितने भी आइडियाज़ आपको आते हों या आपने सोचे हों, without thinking whether you will be able to achieve it or not, I want you guys to write 10 ideas which you think you can work and build a business. 10 आइडियाज़। मैं आपको 5 मिनट दूंगी, आपको 10 आइडियाज़ ऐसे लिखने हैं जो आपको लगता है कि बिजनेस बन सकता है उनमें से। भूल जाइए कि वो लॉजिकल हैं, इलॉजिकल है, रैशनल है, इरैशनल है, सोर्सेस नहीं हैं, नहीं कर पाएंगे, सब भूल जाइए। मुझे 10 आइडियाज़ आपके पेपर्स पे चाहिए एंड आई विल पिन पॉइंट। आई am actually very famous for being strict on these matters. तो मैं 5 मिनट दूंगी आप लोगों को, प्लीज़ राइट एंड आई वांट एवरीवन टू राइट। जो एक्सरसाइज हम आज कर रहे हैं वो बिगिनर लेवल पे भी होती है, मिड लेवल पे भी होती है और हाईएस्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस भी करते हैं। द ओनली डिफरेंस इज इनके अप्रोचेस अलग अलग हो जाते हैं। सो प्लीज़ अंडरस्टैंड, जिस चीज़ का आपको एक्सेस आज मिल रहा है उस चीज़ के लिए लोग लाखों रुपए खर्च करते हैं सिर्फ अपनी ऑर्गेनाइजेशन को सही बनाने के लिए। So I want 10 ideas and I will pinpoint 10 people, 10 ideas, 5 minutes. When anyone is done, please tell me. Everybody, I want everyone to write, everyone. पूछो पूछो, नहीं है दिमाग में आइडिया नहीं आया है, पूछो बाजू वाले से। किसी आम दिन पे दिमाग में 30,000 आइडियाज़ आएंगे, लेकिन आज 10 पूछ लिए तो याद नहीं आएंगे। टेन आइडियाज़। हो रहा है नहीं हो रहा है? हो रहा है? I think I cannot give more than that time. So, ladies, one of the ladies there, please stand and tell me the ideas. 5 ideas. 10 नहीं लिखे हूँ, जितने लिखे हूँ उतने बता दीजिए। कोई एक तो लिखा होगा? बिजनेस सीखने आए हैं ना, तो शर्म थोड़ी घर पे डिस्काउंट में रख के आइए और उठिए और बोलिए। चलो, उन्होंने फुल स्कीम में ही शर्म रख ली है। पीछे वाली रो में ज़रा कोई खड़ा होके मुझे, कोई भी खड़ा होके मुझे 10 आइडियाज़ पढ़ेगा प्लीज़। इट इज़ ऑल गोइंग टू हेल्प अस ओनली। फिर आप ही लोग जाके बोलेंगे कि हमारी कोई मदद नहीं करता है जब आप बिजनेस स्टार्ट करेंगे। कोई खड़ा होगा या फिर मैं पिन पॉइंट करूँ? मैडम, एनीवन दिस साइड? You have one idea? Stand up and say one idea, please. Give a mic to the little girl. Franchising of shoes, like Bata, taking a franchise of Bata. ये आपका आइडिया है कि देयर ओनली, ठीक है। इस एक्सरसाइज में थोड़ी बहुत ऑफेंसिव डिफेंसिव चीज़ें होंगी, बुरा मत लगाना, ठीक है। कितने लोग मानते हैं कि ये एक बिजनेस मॉडल है? हाथ रेज कीजिए। कितने लोग मानते हैं कि ये एक बिजनेस मॉडल है?
हाथ उठाना है, आवाज नहीं उठानी है। कितने लोग मानते हैं? अच्छा, कोई नहीं मानता कि ये बिजनेस मॉडल है। ओके ओके, you sir, you believe it is a business model, you believe it is a business model, okay, so we have a very less ratio. I will tell you that it is a step towards business, but it is not a business, right? मैं आपको बोलूँ कि मेरा जूहू में ये फ्लैट है, आप ज़रा जाके उनकी देखभाल कर दीजिए, आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा, है ना? वो फ्लैट कैसे देखना है, केयर टेकिंग कैसे करनी है, पूरा स्टाफ कैसे संभालना है, क्या करना है, सब कुछ सीखने को मिलेगा। लेकिन वो फ्लैट लेने तक का काम आपको नहीं सीखने को मिलेगा। सो दैट्स व्हाट लैक्स इन अ फ्रेंचाइजी मॉडल, क्योंकि किसी का बना बनाया खीर आप गरम करके खाएंगे, राइट? नेक्स्ट आई थिंक somebody had. So see, why we are doing this exercise, please be attentive here कि ये जैसे इनके दिमाग में फ्रेंचाइजी का मॉडल आया, आप बहुत सारे लोगों के दिमाग में फ्रेंचाइजी का मॉडल आया होगा। अब हर मॉडल को हम डाइसेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन इन्हीं में से कुछ आइडियाज़ को हम फिल्टर करके एक कैनवस क्रिएट करेंगे। सो यस मैम। Yes ma'am, I was thinking about e-commerce business of jewelry. E-commerce business of jewelry, yeah. Absolutely fantastic. One idea. Then no men here have the audacity to give ideas. सबको जॉब करनी है? Yes, yes. Ma'am? 2 minutes. Yes. मैम वेस्ट मटेरियल से जो भी मतलब कपड़ा फेंक देते हैं हम लोग, यूज़ नहीं करते उसको बाद में, तो उससे हम लोग रिसाइक्लेबल फैशन, हाँ, जनरेट कर सकते हैं, लाइक हिजाब्स, कुछ भी हो। Recyclable fashion, yeah. Right? Point number 2, recyclable fashion. Great. Hello ma'am. Yes. Wireless charging in e-cars. Wireless charging in e-cars. E-cars. Yes. ठीक, मैं सारे आइडियाज एक्सेप्ट करूंगी विदाउट नोइंग वाई एंड हाउ। ओके, वायरलेस चार्जिंग ई कार्ड। सो विल टेक दिस 3 ideas and do we still have the presentation? 5 minutes? Okay. So yes, I think you have something to say, please. Okay ma'am. My idea is also same, collecting plastic waste and making some useful things. And second is starting a group who done accounting and auditing of societies and etc. First. So whenever you write an idea, point number 1, it has to be very simple for your audience to understand. क्योंकि जब भी आप बिजनेस बनाएंगे तो आइडिया समझा नहीं पाएंगे तो शुरुआत कैसे होगी ना? So your idea has to be written in a very simple language. Now, please go again with your ideas. मिस एक ग्रुप रहेगा जो ऑडिटिंग और अकाउंटिंग करता है ना सोसाइटीज़ की जी। एक ऑर्गेनाइजेशन रहेगा, तो सेटअप रहेगा एक छोटा सा, ताकि आगे फ्यूचर में इसका और सोसाइटीज़ की अकाउंटिंग है, एक इनकम जनरेट हो, एक्स्ट्रा इनकम इसके लिए। सेकेंड, और आजकल जो प्लास्टिक का सबसे बड़ा इशू चल रहा है इन्वायरमेंट में, जो प्लास्टिक है वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल है हमारे इन्वायरमेंट के लिए, तो उसको कलेक्ट करके उससे कुछ यूज़फुल थिंग बना के उसको सेल करेंगे तो उससे 2 बेनिफिट रहेगा, एक तो इनकम जनरेट होंगी और दूसरा प्लास्टिक वेस्ट जो है इन्वायरमेंट से वो कम होगा। तो आजकल वो बहुत ट्रेंड में चल रहा है कि प्लास्टिक से बहुत बड़ी बड़ी कंपनी जो ओशंस को क्लीन कर रही है और उससे गॉगल्स वगैरह बना के सेल कर रही है। ओके। ये आप लोगों ने जितने लोगों ने आइडियाज़ बोले प्लीज़ अपने पास नोट करके रखिएगा। वी आर गोइंग टू यूज़ दीज आइडियाज़, ऑलराइट? आई वांट द लाइट्स टू गो बी डिम प्लीज़, इट्स हर्टिंग माय आईज। So how many people think that business के लिए आइडिया और एरा आइडिया डिफरेंट होता है? जैसे आप लोगों ने भी सुना अपने कॉलीग्स से कि ये आइडियाज़ हैं, तो कोई मुझे बता सकता है कि क्या डिफरेंस होता है? एनीवन?
एनीवन? क्या डिफरेंस, एक आइडिया को एक बिजनेस में हम क्या डिफरेंशिएटिंग पॉइंट्स क्या होंगे? आप तुक्का लगाइए प्लीज़. यस प्लीज़. Can we dim the lights a little, please? गुड आफ्टरनून मैम. मैम आइडियाज़ तो हर किसी के पास आते हैं, इंसान का काम है सोचना. बट इम्प्लीमेंट कौन से आइडिया होंगे वो हम लोग 2-3 फैक्टर्स में उसको हमने जज किया है. जैसे डिमांड है कि नहीं, उस टेक्नोलॉजी को लोग समझेंगे कि नहीं. अगर हम कुछ नया इन्वेंट कर रहे हैं विच इज़ न्यू फॉर द होल जनरेशन, तो पहले हमको कैंपिंग चलानी पड़ेगी कि वो चीज़ वो समझ सकते हैं कि नहीं, उसको अडेप्ट कर सकते हैं कि नहीं. तो कोई भी आइडिया इम्प्लीमेंट तभी हो सकता है जब तक उसकी डिमांड या उसको बोले ना, उसको मार्केट में चला सको. आप एक बार बना के सबको टॉयस की तरह दे दो, उसके बाद वो वेस्ट हो, मतलब नहीं है. वो प्रतिदिन उसकी डिमांड बढ़नी चाहिए और आप उसमें इतना वास्ट फील्ड पकड़ो या कोई ऐसा आइडिया पकड़ो जिसमें आप थोड़ा भी एनहांस करो तो वो प्रोडक्ट बढ़ते जाए. फॉर एग्जांपल आईफोन जो स्टार्ट हुआ था उस पीस से अभी पीस तक कोई ज़्यादा मेजर चेंजेस नहीं किया है उसने, लेकिन वो अपने हर एक न्यू प्रोडक्ट के साथ एक छोटा सा बोले ना तड़के के तौर पे एक नया फीचर डाल देता है जो कि कॉमन है बाकी सारी चीज़ों के लिए, बट आईफोन कर रहा है. तो ब्रांड बनने के लिए लोगों की पहले अपने को समझना पड़ेगा नीड क्या है और उसका क्रेज़ बना के रखना है मार्केट में. तो अरे गहरे आइडिया तो बहुत आते हैं दिमाग में, लेकिन जिस आइडिया को इम्प्लीमेंट करना है तो उसकी पूरी वास्ट स्टडी करनी पड़ेगी. इवन दो पास्ट में भी और फ्यूचर में भी उसका क्या स्कोप है उस हिसाब से, तो उसी आइडिया को हम लोग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. मार्केटेबल आइडियाज. Yes. जो चीज़ आप मार्केट कर सकते हैं वो आइडिया जिससे हमको कुछ बेनिफिट हो, चाहे वो इन्वेंशन हो, चाहे हमें किसी फ्रेंचाइजी को रन करना ही हो. फॉर एग्जांपल जैसे मैम ने बोला फ्रेंचाइजी इज़ गुड बट इट इज़ साइड बिजनेस, नॉट अ बिजनेस. बिजनेस के लिए आप कोई भी चीज़ को एक पॉइंट से स्टार्ट करके एक पॉइंट पे ले जाओगे तो उसे बिजनेस कहा जाएगा. आप एक अच्छे मार्केट टेकर बन सकते हो फ्रेंचाइजी चला के, बट उसको बिजनेस नहीं कहा जाएगा. यू आर अ गुड फ्रेंचाइजी मेकर. जैसे फ्रेंचाइजी के तौर पे मैकडोनल्ड्स सबसे ज़्यादा वर्ल्ड में मैकडोनल्ड्स के पास फ्रेंचाइजी, बट वो रियल एस्टेट करती है. आई अंडरस्टूड, आई टेक योर पॉइंट. फॉर रिकॉर्ड्स ये साइड बिजनेस पूरा टर्मिनोलॉजी ना मुझे कभी समझ में नहीं आता है, इसलिए साइड बिजनेस मैं मेरी डिक्शनरी से निकाल चुकी हूँ. बिकॉज बिजनेस इज ईदर बिजनेस or it's not. There is nothing like side business. There is side hustle, absolutely, but there is no side business. It is like half girlfriend, half boyfriend, half wife. Can you do that? You cannot, right? So yes, so coming back to the idea, so first is, of course, he has a valid point. Anyone else has more points? नो वरीज. बहुत ठंडे लोग हो रहा है यार, मतलब हमारे अहमदाबाद में तो धूम मच जाती है. हमने तो बहुत सुना है मुंबई गर्ल्स के बारे में. ऐसे है मुंबई गर्ल्स, गरबा चालू कर देंगे फिर हम अहमदाबाद वाले. सो नेवरदलेस, so this is what we are at. Okay, for anyone who starts a business, first is the idea, the clarity of the idea, how the idea is, how much the idea is researched, validated and analyzed. So 3 parts are majorly important. So as you can see from here, ये तो ये ना मतलब बहुत सारे आइडियाज़ आते हैं, बहुत कॉम्प्लिकेशंस आती हैं. जैसे कि आई गिव यू द एग्जांपल ऑफ दैट लेडीज़ क्वेश्चन कि मुझे सीए भी करना है, लॉयर भी बनना है, ये भी करना है, वो भी करना है. तो जब आप बिज़नेस करेंगे ना तो आपको एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने में ना आपको बहुत सारे सोल्यूशन मिलेंगे. आपको लगेगा ये भी कर लेते हैं, ये भी कर लेते हैं, ये भी कर लेते हैं, बट इवेंचुअली ऐसा होगा नहीं, राइट? So don't make mistakes of executing business ideas without evidence. So you need evidence, which is the most suitable approach for building your idea, right? So discovery and validation. आइडिया पे रिसर्च कितना किया है आपने, कितनी तगड़ी आपकी रिसर्च है. जैसे कि उन्होंने ई कॉमर्स का बोला, सो उनके केस में ई कॉमर्स ऑफ ज्वेलरी में उनका डिस्कवरी क्या होगा? उनका डिस्कवरी होगा कि व्हाट इज़ द डिफरेंशिएटिंग फैक्टर. लोग बाकी ई कॉमर्स में से क्यों नहीं खरीदेंगे और उनके पास से क्यों खरीदेंगे, इनकी वो लिस्ट बनाएंगी, राइट? बाकी लोग जो कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, कितने चला रहे हैं, कितने नहीं चला रहे हैं.
क्या डिज़ाइंस बन रहे हैं, क्या परसेप्शन है ज्वेलरी को लेके कस्टमर सेगमेंट में, ऑल ऑफ दैट इज़ इन द डिस्कवरी फेज. देन शी विल टेस्ट. उनका कुछ क्या बोलते हैं डिज़ाइन आएगा, ठीक है, फर्स्ट आउटलुक आएगा, सेकेंड आउटलुक आएगा, तो वो अपने कस्टमर से टेस्ट करेंगी. तो ये 2 चीज़ें ना आपको हमेशा ही करनी ज़रूरी होती हैं, दैट वेदर हाउ मच रिसर्च योर आइडिया इज़, एंड सेकेंड व्हाट इज़ द वैलिडेशन. सो ये शीट आपको मिल जाएगी वैसे, बट मेजरली आइडियाज़ कैन बी डिफाइंड इन ऑल ऑफ दीज कैटेगरीज. कभी बाथरूम में बैठे बैठे आइडिया आता है कि मतलब ये करना है, एंड दैट्स द यूरेका आइडिया. कभी इनसाइड द बॉक्स, मतलब हम मन में सोचते रहते हैं, मतलब घुट रहते हैं कि हाँ यार ये करना है, ये करना है, ये करना है, दैट्स इनसाइड द बॉक्स. पीस ट्रीटी, मतलब डिसाइड नहीं कर पा रहे हो, मतलब कि ये भी करना है, ये भी करना है, अच्छा हाँ सभी करते हैं. कलेक्टिव, ये मेरी ये फ्रेंड ने ये बोला, मेरी ये फ्रेंड ने ऐसा करने को कहा, मेरी वो फ्रेंड ने ऐसा करने को कहा, मेरी जितनी फ्रेंड्स सब बोल रहे हैं मैं सब करूँगा. कलेक्टिव. सो लाइक दैट. Now I want you guys to actually see this. This is a very important part. अपनी sheets निकालिए. We were supposed to give the printers of this. First column लिखिए key partners. First column लिखिए key partners. की पार्टनर्स. हेडिंग आपका जो भी पेज है उसमें हेडिंग आपका आइडिया डालिए. क्या है आपका आइडिया, वो जो भी आपका आइडिया है वो डालिए. की पार्टनर्स क्या होते हैं, तो सबसे पहले किसी भी बिजनेस मॉडल को बनने के लिए हमें कितने लोग चाहिए. सो पार्टनर्स, मान लो कि इनका ई-कॉमर्स का ज्वेलरी का बिजनेस लेते हैं, ठीक है. आई विल टेक अ लिटिल अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम द ऑडियंस ऑल्सो हियर. अगर मुझे ज्वेलरी का ई-कॉमर्स बिजनेस लॉन्च करना है तो मुझे कितने रिसोर्सेज लगेंगे वो बिजनेस बिल्ड करने में. आई वांट आंसर्स फ्रॉम यू गाइस. कितने रिसोर्सेज लगेंगे, क्या क्या लगेगा मुझे. यस, सॉरी, वेब डेवलपमेंट, एब्सोल्युटली. देन व्हाट काइंड ऑफ वेंडर. जो ये तो आपने पूछा नहीं ना कि वो बनाने वाले हैं या थर्ड पार्टी लेने वाले हैं. राइट, एब्सोल्युटली. सो वी कैन कंसिडर दैट. यस, समबडी देयर. सो दैट कम्स एज अ पार्ट ऑफ टेक्नोलॉजी, वेब डेवलपमेंट एज ही सेट. तो जब हम की पार्टनर्स लिखेंगे ना, दिस इज सो थ्रू दीज आंसर्स आई एम ट्राइंग यू टू अंडरस्टैंड व्हाट इज इंक्लूडेड एंड व्हाट इज नॉट इंक्लूडेड. सो वेब डेवलपमेंट या टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट के लिए जितने सोर्सेस लगेंगे, दैट विल कम अंडर द की पार्टनरशिप्स. सेकेंड इज़ आप किससे माल खरीद रहे हैं, ठीक है, आप वो कहाँ से सोर्स होके आ रहा है, वो सारे सोर्सेज ऑल्सो विल बी योर की पार्टनर्स. Legal will be your key partner. Logistics will be your key partner. Marketing consultings will be your key partner. Marketing will include offline and online both. So SEO, Google Analytics, everything will come under this. So मोटा मोटी इतना key partner समझ सकते हैं हम किसी भी e-commerce business का, राइट? और कुछ होता है क्या? आप लोग मेरे से ज़्यादा समझदार लगते हो, इसके लिए मैंने बोला पूछ लूँ कि और कोई होता है क्या की पार्टनर्स. मतलब आपको समझ में है ना, ये चीज़ चाहिए मुझे, मतलब इतनी चीज़ों के बिना मॉडल खड़ा नहीं कर पाऊंगी मैं. तो ऐसी चीज़ें आप बताइए. इफ़ यू आर मिसिंग समथिंग, इट इज़ योर आइडिया. राइट. टारगेट कस्टमर्स माय डियर विल नॉट बी की पार्टनर्स. कस्टमर्स तो तब बनेंगे ना जब उनका प्रोडक्ट लॉन्च होगा या बनेगा. सो की पार्टनर्स मीन्स जिन लोगों की मदद से मैं वो मॉडल बना सकती हूँ, या तो वो प्रोडक्ट हो सकता है या तो वो सर्विस हो सकता है, राइट? वेंचर फंडिंग कैन बी, बट इन द इनिशियल लेवल इफ यू नो शी वांट्स टू बूटस्ट्रैप, शी कैन डू दैट ऑल्सो. लॉजिस्टिक्स आ गया ना, आई सेड लॉजिस्टिक्स, राइट? सो लॉजिस्टिक्स एंड डिलीवरी. You guys have some dispute over there?
You want to ask any further retro question? Okay. So I hope we are clear with the key partners here. So key partners will be your market, your finance, your logistics, your technology. Everything will come under your key partnerships, right? Now second is how do you do it? So key activities. So in the next sheet, please write. So this is going to be, मैं आज की डेट में भी मेरी 2 कंपनीज़ हैं और मैं आज की डेट में भी कई बार कंफ्यूज होती हूँ तो BMC निकाल के करती हूँ अपने बिजनेस मॉडल्स के लिए. And it is absolutely the most phenomenal exercise that can bring clarity to your ideas. So key activities, marketing, yes, then design, yes, advertisement, yes, और किसका इनका बिजनेस मॉडल है आप बताइए. Branding will come under as a part of marketing and advertisement. So distributors will not come here. We are talking about key activities. Key activities. Activities, not people. Delivery of the product. So you mean to say handling the logistics, right? Okay. Okay, that can be also a key activity. Anything else is missing in the key activity? Product development, absolutely. So building some sort of new material in the jewelry. That could be alloy, that could be 3D printing, that could be any new thing in the jewelry, right? That also comes as a part of key activity, product development. Now what do you do? Value proposition. So value proposition. Ab na, I want you guys to write this, make a group of 2 or 4, whoever is in the row, and I'll give you 15 minutes to finish this. I want you guys to do it, and then we can discuss. Since it is मेरे लिए थोड़ा सा बोरिंग हो रहा है, मुझे थोड़ा सा एडवेंचर करने का मन हो रहा है, तो हम ऐसा करेंगे. How many groups are we making? We need 5 people minimum in the group. 5 people. Make a group of 5. Accommodate. 5 लोगों का ग्रुप बनाइए. 5. मुझे दिखना चाहिए, हाँ, 5 ऐसे बैठे हुए दिखने चाहिए. और अगर ये दिखाई नहीं दे रहा है तो मैं पढ़ूंगी इसको ताकि आप लोग नोट कर सको. One, 2, 3. You 2 are separate. You are with them, and you 4. Are you guys together? In one group? Okay. And you guys are 3, 4. 4 together? 4 together. 1, 2, 3, 4, 5. You? 6 together? 6 together. 4 together. कितने लोगों? 3 ladies. Are you in one group? Okay. Here 1, 2, 3, 4, 5. 4 boys and 1 girl. So many people are leaving. I love it. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. पीछे. Hello. Group is ready? 5. How many groups are there at the back? 5. 5. We're done. Settle down, please. Settle down. शीट बना ली? पॉइंटर्स लिखेंगे तो भी चलेगा. ये तो एक ड्राइंग किया हुआ है. आप पॉइंटर्स लिखेंगे 1, 2, 3, 4 तो भी चलेगा.
आपको करना क्या है सुन लीजिए, आपको करना क्या है सुन लीजिए। आप ग्रुप में कोई एक आइडिया फाइनलाइज करेंगे, उस आइडिया पे आप ये बीएमसी के अंदर डिटेल्स फिल करेंगे। आपको मैं 15 मिनट या 20 मिनट मैक्स दे सकती हूँ। आइडिया भी आप ही लोग लिखेंगे और ग्रुप में फाइनलाइज भी आप ही लोग करेंगे। दिख रहा है ये? मैं लिखवाऊं? पॉइंट नंबर 1, की पार्टनर्स। पॉइंट नंबर 1, की पार्टनर्स। पॉइंट नंबर 2, की एक्टिविटीज। पॉइंट नंबर 2, की एक्टिविटीज। पॉइंट नंबर 3, की रिसोर्सेस। की रिसोर्सेस। Point number 4, value proposition. Point number 4, value proposition. Point number 5, customer relationships. Point number 5, customer relationships. Point number 6, distribution channel. Point number 6, distribution channel. Point number 7, customer segment. Point number 7, customer segment. Point number 8, revenue stream. Point number 8, revenue stream. And last point, cost structure. सर आपके पास पेन पेपर नहीं है? कॉस्ट स्ट्रक्चर एक ही पेपर है, आप फोन पे लिख सकते हैं। कॉस्ट स्ट्रक्चर। और कुछ रिपीट करूं मैं? What? Your time will start in next 2 minutes and I will give every one of you 20 minutes. I will personally come up till the last row actually to see. "20 minutes. मज़ा आ रहा है? मज़ा आ रहा है? मज़ा आ रहा है? बहुत मज़ा आएगा। Weak people will leave this stage. Weak, I repeat, weak people will leave. You decide. Yeah, absolutely. हाँ, मुझसे आइडिया पूछो मत। आप 5 लोगों में कोई एक ही आइडिया हो सकता है। Decide one idea amongst yourself. Write it. हाँ, ले सकते हैं। Idea decided? Yes, coming. Idea decided? Decide कर रहे हैं? करे। Idea decided? करिए।
डिफरेंट क्या दे रहे हो कस्टमर को, उससे डिफरेंट आप क्या वैल्यू दे रहे हो, उससे डिफरेंट, या फिर आप क्या वैल्यू दे रहे हो। मैंने आपसे बात की, इसने भी आपसे बात की, लेकिन मैंने आपसे बहुत प्यार से बात की, इसने आपसे बहुत रूडली बात की। प्यार से बात करना मेरा वैल्यू प्रोपोजिशन है, रूड से बात करना उसका वैल्यू प्रोपोजिशन है। अब समझ में आया? पैसा कहाँ से बनेगा, कहाँ कौन सी साइकिल से पैसा बनेगा? 2 minutes, 2 minutes are gone, 2 minutes are gone. Nice, nice. You won't need help? Nice. You guys are done? You have questions? Then why are you hiring me? Am I your friend? Product development in market. So suppose I have a product which is traditionally made at my home. So there would be a name of the product, no? Write that name. Website designing company, what we had the key partners and key activities. तुम सोचो. It's an agency. सोचो. Ma'am, I have an idea that for a startup that's pick up and drop service, but it will do a free service, free delivery, but from 10 rupees things to 1000 and मतलब कि कम से कम रुपए वाली चीज़ का भी आपको होम डिलीवरी मिलेगा, वो भी ऑन द स्पॉट 10 से 15 मिनट के बीच में। जो भी आइडिया है इस पर लिखो, जैसे जैसे करोगे वैसे वैसे क्लैरिटी और आएगी। Nice, nice. Bootstrap as what? It can be an approach. Bootstrap means खुद के पैसे से बिजनेस करना, इन्वेस्टर्स के पैसों के बिना बिजनेस करना। आपका कस्टमर टारगेट क्या होगा? 20 साल के लोग होंगे, 30 साल के लोग होंगे, इंडियंस होंगे, अमेरिकन होंगे, चाइनीज़ होंगे, टायर 1 सिटीज़ के होंगे, टायर 2 सिटीज़ के होंगे। yes. मैं ये नहीं डिस्कस कर रही, डोंट वरी। द मोर इट इज़ फॉर यू ओनली, द मोर यू राइट इट, you will get clarity for your business idea. What do you think? I have the time to discuss all of these ideas? No, I'm not going to do that. You have 10 minutes left. 10 minutes left. 10 minutes are gone. 10 minutes left. Whatever questions you have, keep it with you. I am going to explain you the entire model. This exercise is only to know how close your understanding is to each of the segments. Please continue doing. I only had gone through the entire hall to check whether everyone is involved or not.
चल रहा है ना सेक्शन चल रहा है वो कुछ क्वेश्चन पूछने के लिए ऊपर नीचे जहाँ बात बात में कास्ट पे क्या आ गया समझा दो उसको कास्टिस कहीं का कैसे होमोफोबिक मतलब इस्लामोफोबिक The one who finishes, any group who finishes their business model canvas first will get 1 hour of free consultation from me of their business. Stand up when you're finished. Five minutes left. 5 minutes. Three more minutes. Are we done? Is anyone of you done? Great. Mic दीजिए जरा please. Just give me the idea first. What is the idea? Plastic brick.
plastic brick. Move ahead. Explain your idea. Explain your idea. मैम जितने भी ब्रिक्स है वो सब गिरने पे टूट जाएगी ऑन द स्पॉट, और हम लोग की ब्रिक स्ट्रॉन्गर है 2.5 देन नॉर्मल ब्रिक से, और ये सब वेस्ट प्रोडक्ट से बनता है, वेस्ट प्लास्टिक, वेस्ट सैंड. राइट. तो आपके की पार्टनर्स कौन है? प्लास्टिक. Everyone is listening. There is a gentleman between us who has proposed to create a business of plastic brick manufacturing. I repeat, plastic brick manufacturing. तो आपने की पार्टनर्स क्या क्या लिखे हैं? कैपिटल, मैन्युफैक्चरिंग, मशीन्स. मशीन्स आर नॉट योर की पार्टनर्स. मशीन्स के साथ काम करवाने के लिए भी तो बंदे चाहिए ना. वर्कर्स, लेबर. व्हाट काइंड ऑफ मशीन्स? बर्निंग मशीन, प्लास्टिक को पिघालना पड़ेगा पहले. राइट. सो यू नीड फैक्ट्रीज. शेडर मशीन, प्रेस करने के लिए, शेप देने के लिए. Factories, right, are your key partners. Yes. Engineering factories. Yes. Right. Then की एक्टिविटीज, मार्केटिंग. मैं अपना प्रोडक्ट जब निकालूंगा तब कोई पहचानेगा ही नहीं, तो मुझे मार्केटिंग करनी ही पड़ेगी. की पार्टनर्स में कौन और आ सकता है, ऐसा लोग बोलते हैं? कौन और ऐड हो सकता है? इन्होंने मेंशन किया है मार्केटिंग, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, इंजीनियरिंग वर्कशॉप, और क्या मेंशन किया है? मशीन्स, ट्रांसपोर्ट मशीन्स. यस. So we are not testing the feasibility of the idea here, sir. We are testing the clarity of the idea. So we are not saying what is possible and what is not possible. Understand? We are just trying to have clarity कि X, Y, Z idea भी है, तो आप X कितना clearly पढ़ पा रहे हो, Y कितना clearly पढ़ पा रहे हो, और Z कितना clearly पढ़ पा रहे हो. I think I have somebody to answer you. ऐसा मैं डिफर कर रहा हूँ. गवर्नमेंट का ये इनिशिएटिव है कि कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन का जो वेस्ट मटेरियल्स है उसको रिसाइकिल करके जो प्रोडक्ट बनेगा उसको गवर्नमेंट प्रोडक्ट में यूज करने का है. आपको मैं बता दूं कि दिल्ली में बुआरी में एक CND वेस्ट प्लांट लगा है, जहां पर दिल्ली के जितने जो पुराने बिल्डिंग्स, रोड्स डिसमेंटल होते हैं उसको डिस्पोजल पॉइंट उसी वेस्ट कलेक्शन पॉइंट पर है, और फिर उसको वहाँ पर क्रश करके रिसाइकिल करके और जितने जो पेवमेंट टाइल्स है वो बनाया जाता है, और उसी टाइल्स को फुटपाथ में या जहाँ जहाँ गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं वहाँ पर ही यूज किया जाता है. इनका जो आइडिया है ये ऑलरेडी जो है टाइल्स में चल रहा है, पेवमेंट टाइल्स के ऊपर, जिसके ऊपर जो है प्लास्टिक कोटिंग करके टाइल्स को जो है स्ट्रॉन्ग बनाया जा रहा है. तो उसमें एडमिक्सचर्स और केमिकल्स मिक्स करके जो है उसको स्ट्रेंथन किया जा रहा है, और प्लास्टिक को भी ऊपर से रबराइज शेप देकर उसको यूज किया जा रहा है. प्लास्टिक ब्रिक्स अभी नहीं आया है, बट हिज आइडिया इज गुड, नॉट बैड. Thank you. So key partners, we were on the key partners. Anything else is missing on the key partners? Sorry? Finance you already mentioned. Then legal, yes. Legal was missing, right? Production he already mentioned. Anything else is missing? So I think by and large we all understand what are key activities around a business. Yes or no? Correct. So we move to the next one. Key activities now. So what are the key activities, gentlemen? Advertisement first. Advertisement, then? Design. Then? Research. Then? Then? You guys can also contribute. Key activities. Activities.
Product development, fantastic. Yes. Your understanding. You need to add product development because you missed it. Yes. Right? Whoever you are talking to me, you will understand the difference between what you did before and what you did after. So in your first column, please write all the points which are mentioned by this hall and compare it with the previous one. Okay. Right? So in the key activities, what are the other key missing activities? Quality check. Okay. Managing marketing. So that comes as a part of marketing, no? Anything else is missing? So how many points in your BMC? Sorry? That is a part of marketing. Advertisement. ठीक है? Key activities are the core activities जिनकी वजह से आपका वो बिजनेस चलेगा या प्रोडक्ट बनेगा. जैसे कि इनका जो आइडिया है प्लास्टिक ब्रिक मैन्युफैक्चरिंग में, उसमें की एक्टिविटीज़ में हमें चाहिए प्रोडक्ट डेवलपमेंट, प्रोडक्शन, डिस्पैच, पैकेजिंग, राइट, डिस्ट्रीब्यूशन, स्टॉकर्स, relationships with the buyers, relationship with online suppliers, export channels. So all of this will come as key activities. Am I clear here? This has to be understood by an example only, which is why I cannot go beyond examples. So key activities are those activities which you need to do. मतलब उसके बिना business कहीं ना कहीं से मिसिंग हो जाएगा और आप फिर वही पॉइंट 0 पे पहुंच जाएंगे. सो दैट्स की एक्टिविटीज. सेकेंड इज वैल्यू प्रपोजिशन. आई वांट टू आस्क वैल्यू प्रपोजिशन. प्राइसिंग. आपका प्राइसिंग इज योर वैल्यू प्रपोजिशन. यस. एनीथिंग एल्स इज योर वैल्यू प्रपोजिशन. स्ट्रॉन्गर देन नॉर्मल ब्रिक. स्ट्रॉन्गर देन नॉर्मल ब्रिक. राइट? ओके. स्ट्रॉन्गर देन नॉर्मल ब्रिक. So for rest of the audiences, how many of you have understood what is value proposition? Stand up and give your answers. Brand value? No. What is a value proposition? What is a value proposition? Unique one. Some problem. What? No. Sorry? Capital you need for a business is the value proposition. Great. What problem of the customer you are solving in a unique way? Okay. Ma'am, the way we talk to the customer. मैं ही तुमको एग्जांपल देके गई थी, तुम ही मेरे को पढ़ा रहे हो. हाँ? So value for the money. Okay. So right. I'll explain this in one example in one of the slides where we have Swiggy का business model canvas. Swiggy, everyone is known to Swiggy, right? So just read the value proposition of Swiggy. Swiggy का value proposition ये है, food delivery with no restriction order policy. Food delivery with no restriction order policy. Second, efficient online payment system. आपको याद है जब स्विगी लॉन्च किया था तब उसने ये बोला था कि कोई भी नो मिनिमम ऑर्डर चार्जेस. That was the value proposition. No minimum order requirement, right? Different payment methods. ये भले ही कोई कॉम्पिटिटर कर रहा हो, पर ये हम भी कर रहे हैं. ये भले ही जोमेटो कर रहा था, पर ये हम स्विगी भी कर रहा है.
So whatever addition activities they do that can bring value to the customer is your value proposition, because it differentiates you between the competitor in a market. Am I clear here now? Do you guys understand now what is a value proposition? So for the online jewelry business, what will be your value proposition? Either. What will be the value proposition for e-commerce jewelry business? Different cultural jewelry. Great. Yeah, we thought of that, the jewelry from different states of the country which are famous for that area. So local jewelry. Yeah, Absolutely great. Yes. Then? Cheaper than other companies. Mostly these kind of values when anyone writes, right? Either the cheaperness, when we are using a comparative word, has to be associated with a percentage, that 10 times cheaper or 20 times cheaper, or you use a superlative degree, that cheapest from the available. Contemporary design. Design, obviously. Okay. Then there was somebody who's voicing out from here. Customized jewelry. Customized jewelry, ठीक है, कर सकते हैं. Customized jewelry is a value proposition? No? It is not? But it can be. Refund policy. So if you have a refund policy which is absolutely different from what competitors are doing, you can include that as a value proposition. Any other question on, क्योंकि इसके बाद ना हम value proposition पे canvas करने वाले हैं. Yes. The patent of the design. एक second. Patents, I'll give you something which you can write if it is not taught in your institute. Patents are for pharmaceuticals, machines, or any kind of innovation which is in the form of formulas, mathematics, science, or even architecture, which has mathematics involved. Design comes under a part of copyrights. There is a section which recently got launched, which is called design patent. Now, design patent means the outer structural engineering needs to be protected through IP. So that's design patent. ठीक है, तो ये थोड़ा सा फंडामेंटली घर जाके ज़रा पेटेंट, कॉपीराइट, डिज़ाइन पेटेंट, ट्रेडमार्क के 4 पे पढ़ लेना, उसके बाद बिजनेस मॉडल कैनवस बनाना है ना. उससे पहले ऐसा मर्डर मत करना प्लीज़. यस प्लीज़. Help center, what is the value which your help center is giving and other help center is not giving? No, it doesn't work like that. No. Yes. So we are absolutely clear, right? So these many ideas are actually making me feel that you guys are close to what value proposition is, right? Now, so key resources. We haven't done key resources. So same, please, your plastic brick. What were the key resources? I think we did key resources, right? We didn't do key resources? Are you sure? Okay. Key resources. ऐसे ही बोल दो, सुनाई दे जाएगा, बोलो. Plastic. Key resources, matlab, okay, this plastic and sand, you can put it in the form of material, raw material, right? Then what? Labor, okay. Land. लोकेशन को लैंड एक्विजिशन गिनेंगे या फिर लैंड परचेज गिनेंगे या वॉट एवर, ठीक है.
सॉरी, हाँ, तो वो लैंड एक्विजिशन आ गया ना, मतलब सो फैक्ट्री एक्विजिशन और फैक्ट्री पार्टनरशिप और वर्कशॉप पार्टनरशिप, राइट? यस, की रिसोर्सेज, शेडिंग मशीन, बर्निंग मशीन. so all sorts of machine. Yes, Okay, yes. so one is raw material, second is land, third is engineering machines, fourth labor, fifth की रिसोर्स मैनेजर HR में आएगा. सो ह्यूमन रिसोर्सेज आर योर की रिसोर्सेज. पर वो मैनेजर के बिना क्या आपका बिजनेस चल सकता है? चल सकता है? चल तो सकता ही है, क्यों नहीं चल सकता? ट्रांसपोर्टेशन, फंडिंग, की रिसोर्स. इट सो इन्वेस्टर cannot be a key resource in any business model, because इन्वेस्टर नहीं मिलेगा तो क्या बिजनेस नहीं करोगे? इन्वेस्टर नहीं मिलेगा तो ऐसा तो नहीं है कि बिजनेस नहीं करोगे, लेकिन फैक्ट्री नहीं मिलेगी तो प्रोडक्ट कहां से बनेगा? राइट? सो इन्वेस्टर इज नेवर अ की रिसोर्स. सो की रिसोर्स, यस. ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन एक स्टेट से दूसरे स्टेट तक लाने के लिए ब्रिक्स. वी से डिलीवरी पार्टनर्स और ट्रांसपोर्टेशन पार्टनर्स. रिसोर्स है, समझो. ओके मैम. है ना? ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, रिसोर्स करना है, रिसोर्स. ओके, देन लॉजिस्टिक्स इज इंक्लूडेड इन वॉट एवर ही सेड. Key resource. So does he want to create a website? If it is in his business model to create a website, yes or no? Requirement of raw materials. Requirement of raw materials, sources of raw materials. How to get the raw materials? Raw materials, collection of raw materials. So that will include in raw materials, sir. So the entire cycle of purchasing, identifying, everything, analyzing, everything will come under raw material. Last 5 minutes only. Okay. Packaging is a key resource, yes. That is not a key resource. So you have to identify key resource. मतलब जब आप मुझसे पूछो ना, उससे पहले खुद पूछ लो कि क्या उसके बिना मेरा बिजनेस चल सकता है, वो रिसोर्स के बिना. If the answer is yes, then it is not a key resource. Right? We are talking about absolute fundamental things in key resource. Yes, please. Capital के बिना तो कोई भी बिजनेस नहीं चलेगा ना. But key resource है. So capital is your own resource. Here we are talking about a reference resource, right? So that's key resource. Value proposition, key activities, I think we are done. Key partners. Customer relationships. So what are your customer relationships? ट्रस्ट एंड सेटिस्फेक्शन. ट्रस्ट एंड सेटिस्फैक्शन. क्या घर घर जाके दोगे? अरे मैं प्लास्टिक ब्रिक है ना, अभी बोलेगे पिघल गई तो. अच्छा. When I say customer relationships, that means the systems you build, the approach you define to actually build a customer relationship. क्या सिस्टम बिल्ड करोगे? टेलीफोनिक सिस्टम बिल्ड करोगे, फीडबैक सिस्टम बिल्ड करोगे, और कस्टमर किस B2B कस्टमर होगा उसको कैसे रिलेशनशिप बिल्ड करोगे, डिजिटल कैंपेन्स लॉन्च करोगे, गिफ्टिंग करोगे, टूरिज्म करोगे, क्या करोगे? All of those options are considered under customer relationships. Am I clear? Yes. Channels, customer channels. In your brick वाला customer channels क्या होंगी? Customer channels. बेचोगे कहाँ? बना दिया, बेचोगे कहाँ? Online platforms can be a customer channel, yes. Retail system, customer channel, yes. Builders, relationship with builders, yes.
Government tenders, yes. Fast, I have 5 minutes only. Go ahead. No worries. So, your channels will be all those channels जिनसे आप बिजनेस ला सकते हो. मैं फिर से स्विगी वाला स्लाइड खोलूंगी और चैनल्स में देखिए मोबाइल ऐप, वेबसाइट्स एंड डिजिटल मार्केटिंग. इज इट कॉम्प्लिकेटेड? एब्सोल्युटली. लेकिन मैंने इसलिए आपको स्विगी तो इज एन एंटायरली ऑनलाइन मॉडल, राइट? नाउ रेवेन्यू स्ट्रीम्स, पैसा कहाँ से बनेगा? दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ मेकिंग अ बीएमसी. व्हाट आर एनी बिजनेस डजंट हैव ओनली वन रेवेन्यू स्ट्रीम. प्रिंसिपल लाइन, आप चाहे किसी भी चीज़ का बिजनेस कर रहे हो, अगर आप ये सोच रहे हो कि मेरा रेवेन्यू स्ट्रीम सिर्फ एक ही है, तो आप या तो गलत बिजनेस में हो या तो आपका बिजनेस अभी तक समझ में नहीं आया है. ऑनलाइन है, ऑफलाइन है. रेवेन्यू स्ट्रीम्स, can be a revenue stream. Yes. Right. So I'll tell you, your revenue streams will be first business to business owners. ठीक है? B2B. Your second revenue stream would be B2C. Your third revenue stream would be B2G. Business to government. Right? Your fourth revenue stream would be affiliate marketing, where you sell white label production for people. White label production क्या होता है? श्रुति कुशवाहा के नाम की जगह राहुल कुलकर्णी के नाम की ब्रिक्स बनेंगी, लेकिन एक ही फैक्ट्री से बनेंगी, है ना? दैट इज व्हाइट लेबलिंग. दैट इज अ रेवेन्यू स्ट्रीम. ठीक है? और कौन सी रेवेन्यू स्ट्रीम आती है? But export distribution can be a revenue stream, right? So revenue streams means in how many ways you can collect money in your business. Okay, so whenever you decide, you have to have more than one revenue stream, and every business has it. मेरा खुद का एक वाइन का बिजनेस है, मेरे वाइन के बिजनेस में से 4 रेवेन्यू स्ट्रीम्स हैं, एक नहीं, राइट? मेरा प्रोडक्ट इंजीनियरिंग का सर्विस का बिजनेस है, मेरे प्रोडक्ट इंजीनियरिंग सर्विस बिजनेस में 3 रेवेन्यू स्ट्रीम्स हैं. Cost structure always includes fixed cost, variable cost and your everyday cost. So it's a very simple fundamental game कि रोज कितना पैसा खर्च हो रहा है, क्वार्टरली कितना पैसा खर्च हो रहा है, वन टाइम कितना पैसा खर्च हो रहा है, and that will give you an analysis of profit and loss by comparing your revenue streams. So once you conclude this entire exercise, I will run a little fast because we are running out of time. Once you include all of those important matters into this BMC canvas, as we can see here from Swiggy, right? You can sit down. Thank you. Very good work actually. So then you will come to know कि कहाँ पे क्या part missing है. And you will come to a much more clarity कि अच्छा मेरा business ये है. कई बार ऐसा होगा कि जो आपका idea होगा ना वो बहुत अलग होगा starting में, और canvas करने के बाद आपका जो idea होगा ना वो एकदम बदल जाएगा. So ऐसा भी होगा. So canvas is available at strategizer.com. Download it today or whenever you have time. Do your business model canvas before you actually want to start a business, and then see how refined it is coming in the coming days. So that's it. We don't have time for actually value proposition canvas, and we don't have time for this also. Harshit. These are my credentials. I'm available at these many places. Entire social media, Shruti Kushwaha is the name, wherever you find, wherever you Google. Reach out to me for mentorship or for consultation. So you will find each and everything about me on the internet practically, but I am giving access to my email ID and number here.
to this particular audience. And now I will actually welcome my dear friend, Harshit. So Harshit is an amazing friend and he adds a lot of value to wherever he goes. So it is my immense pleasure actually to welcome you. Hi, thank you so much. Hi everyone. ये वाला लैपटॉप रिप्लेस कर दीजिए. I see people leaving. Black shirt, black t-shirt. Can you continue waiting? Can you count how many people are coming behind you? Are they all coming for the same reason? By the way, I don't intend to stop, but just to make the mood lighter, in case if you really need to take a bio break or something like that, please help yourself. But I was just trying to understand. I see quite a lot of people, kind of the numbers have dwindled, but can I request all of you to stand up, please? I don't know how the food was for you guys, but for us it was fantastic. So if I can request you to stretch a little bit, if you want to open up your sleeve cuffs, just stretch your back a little bit, move up and down. It'll just help. The speakers can also do so, please. It'll just help. I mean, this environment is for us to learn. We don't have to punish ourselves. And also, can I request all of you sitting behind to come forward? So I can still step down and get some of you people and request to please step forward. Please step forward. It just helps us not feel demotivated that we are talking to empty chairs. So please sit forward. And I guarantee I won't bother you much more than maybe 20 minutes or so, and it is going to be very interesting. Okay, so can I request all of you to come forward? Please come forward. Continue coming forward, please, please, please. Let's be quicker so that we can finish the second session quickly. And I guarantee that there is a tea break after this session. Please come forward quickly. जो लोग पीछे हैं उन लोगों से अनुरोध है कि आप लोग जल्दी से आगे आ जाइए. Please come forward. थोड़ा सा आगे आ जाइए, इस तरफ बीच में आ जाइए, बीच में. Please occupy the chairs. इसके बाद हमें और 2 सेशन लेने हैं. आप लोग जितना जल्दी कोऑपरेट करेंगे उतनी जल्दी हम आगे का सेशन शुरू करेंगे. Over to Desai sir. So we all settled down. Can I quickly request all of you to just quickly sit down? And I can guarantee one thing, out of all the 4 sessions, this one, the second one, is the most interesting one. So please keep your eyes wide open. I'm not saying that the third and the fourth are not great, but my only request is, I thought that while Shruti did a fantastic job of, guys, please be with me. So I think Shruti did a fantastic job, because all what goes here in the cognitive space, right, in terms of what you think, she helped you get a very simple and effective way to lay it on a piece of paper. How do you distill different things which keep on coming in your mind, put them in smaller boxes around key activities, key ideas, value proposition, what is going to be your differentiator, etc. But when you move from the ideation stage
and start moving forward in terms of execution, right? Guys, please be with me. Are all of you with me? Fantastic. So what happens is typically when you start taking the next step, that you have clarity of idea as to this is going to be my differentiator. This is how I'm going to do production of specific plastic tiles we are talking about, etc. When you step out in the market, the reality is very, very different than what you might have put down on the paper, right? Because some things are kind of made up in the head, saying this will be my value proposition, but when you go out and talk to someone, like Swiggy, you might have an initial euphoria of people saying, oh wow, this is like the next thing after sliced bread, but very soon you will realize that customers will now have a different view after 6 months, that they will think, no, Swiggy and Zomato are by the way, but what's new? And then you will have to think back and say, hey, how will I continue to keep my differentiator? So what we are going to do is, given that you have some ideas formed up in your mind and you're moving forward, and when you start implementing, you will suddenly hit a reality wall, and then you will not know where to move. One of such inflection points right now is technology and use of technology these days, right? So for everything, the easiest way people do is take an existing domain or a business model, put in technology on top of it, and say, hey, this is my new model. So if you look at healthcare as an industry, people put in so much of technology and say this is health tech. People look at any other industry like insurance, they put in technology and they say it is InsurTech. You take education as an industry, put in technology, it becomes EduTech, and you have the Baijus of the world. Now, very soon, and I would love to be proven wrong, very soon we'll realize that there will be so many things which will be all tech, 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 and then you will start scrambling saying, in which industry can I do something which is non-tech, and how can I differentiate myself, right? So I think quite a lot of you guys were talking about brand, and I heard Shruti talk about marketing, and branding comes within marketing. What we are going to do is, before we move forward, I'll make you do a quick recap of what she talked about, right? I'm sorry, this is not at how this is supposed to be. So the right thing which you see is, I don't know where it is coming from, but it is actually supposed to read, let's do a quick recap of the previous session. And I thought I'll leave you with a few of these images, which will help you understand that what is the right balance when you move or take first step from ideation into reality, right? So when you think of your ideas, it can't be just technological. It got to be equally logical as to, will it help the customer, right? Will it be a real value add? So, I mean, I heard someone talk about customized jewelry and e-commerce just for jewelry, but imagine how much more effort will you have to put for you to be discovered in such a crowded marketplace. In Amazons and Flipkarts of the world, how will you sell yourself and be positioned saying, I am the place for you to come and order jewelry? And imagine the clutter in customers' mind when they have to look at one new place just for jewelry. So imagine if you would have had .coms for each of these categories which are there, the customers will start going mad. And then again the same problem of discovery, saying, oh, so for shoes, which website should I go on? And is the reason why some of these aggregator websites like the Flipkarts and the Amazons of the world, they rule, right? Because only one place, you think of it and you will get it there. So one of the main reasons why you might struggle while even having a strong value proposition is that your idea will not continue to be logical for a long time. So that's what, when you do some ideation, that's what you got to do. When you think of all the activities which you did, right, around production, around marketing, around exports, etc., etc., all of that is going to be your input into the business. But what is going to be your return on investment is
a very, very important thing majority of the businesses now miss. So if you look at, I don't know, I hope some of you guys heard that first guy asking questions saying that why are the layoffs happening in the startup industry, right? Now what happens is some of the businesses, if they are built on just burning external fund money, then you will soon realize that there is no exit strategy or there is no return on investment and you will face a roadblock. By the way, the reason why I use some of this imagery is I hope majority of you know who this guy is. Tiger Woods. He's one of the legends in golf. All these images, if you see a small text here, this is copyright of a consulting firm called Accenture. You guys can look up for these images, you will find them online. These give a very, very good balance of how level-headed that sports person was, and I tend to use this in a metaphorical way. So the photographs are not mine, the creativity is not mine, but these are good reference photographs for you to understand. As an entrepreneur, you got to be an equal doer, right? So the reason why you see Shruti emphasizing so much on thinking, ideation, and having clarity is so that when you step out, you know what to get started with, and you don't keep on jumbling things. So you don't consider export as your value proposition and start talking about it or start doing stuff in export thinking that, you know what, export is my going to be value proposition. No, export will continue to be the mode in which you distribute your goods. So all of that clarity is good provided you are equal doer. It can't be that you are an armchair activist, right? That you are just thinking, and if I ask you after 7 days, so tell me what's the progress on your new venture, and you will say, I'm thinking of doing this. No, you have to be an equal doer, right? When you start being an equal thinker and a doer, what you do, and now to the earlier point which I was making, right? If technology continues to be your only lever, then you don't know what is your real expertise. What is it that you get in as a skill, right? So it got to be a good blend of a tech and a technique as to what is it that the value proposition is there, but how will you be the only guy continuing to do that value proposition well over time? So how will you be the person where people will come looking for the jewelry just on your website and not any other site? So for that, will you need a search engine optimization which is best? Will you be the best website where people will come and quickly able to browse the product? Or will you be the website where people will come, browse products quickly, and also do the payment quickly? Or will your services be so smooth that the products will be shipped properly? So all of these things will go as part of fine-tuning your technique as to how you are going to become better every day. So it is not going to be just about tech. You will soon realize that businesses and new ideas are very, very little about all the ingredients which go in. Like she was talking about, the resources which go in will be a long list. Once you put all of that in the mix, you'll understand that it is like cooking, right? You having all the sabjis she's talking about doesn't help. All the masalas doesn't help. It is the sequence, the style of what you're putting in, equal amount of passion being put in, and then you have a recipe which comes out very, very well. So it is a mixture of all of this, and the reason why I'm emphasizing on some of these points is for you to understand that there is not going to be any right or wrong to what you are thinking right now. You may want to think, you may want to put it on paper like she was asking you to, get clarity, but then when you start executing, the real world will be very different. So you'll have to keep jostling between the reality, what you have thought through on paper, and keep on tweaking it. So that agility got to be there between technique and the technology. One very, very important aspect which majority of the entrepreneurs miss is think through and follow through. So say for example, you would have decided that one of my channels for a jewelry website is going to be mobile app is my channel, right? When you meet the first developer, he'll not know how to code. When you meet 5 developers, you think they are out of your budget, etc., etc. But the follow-through thing
is to make sure that once you have decided that mobile app is going to be your channel, you put in all efforts to make it happen. Thinking through, ideating is the easy part of the job, but following it through is the main difficult thing and is where majority of the people struggle. So when you move one step forward from ideation, the first roadblock is to make sure that all what you have thought through, you stick to that. Because the second day you're going to face problem and you will throw half the things away saying, no, leave this aside. This someone else also does. This is no longer my value proposition, and you will move on to the second thing. The difficult part is to stick on the same value proposition which you thought through and make it happen. During my conversation, I talked about this point, right? The team. Shruti helped you realize that the power of an individual and how you think, get clarity. But when you step out, it can't be a lone battle. You can't be the solo warrior. In entrepreneurship, you can't be the only guy standing and saying, hey, you know what, I'll make everything happen. It doesn't work like that. Okay? You may be good in ideation. You will need a co-founder who is good in technology. You will need a third guy who is good in operations. You will need a fourth guy who is going to be good in finance and billing, etc., etc. So hence, you will need a very, very good team. And if you hear Steve Jobs also, right? He'll say that the best thing is I am very good at finding people who are better than me. So you should be able to find a group of people around you who will be good at things much, much better than you. So if you look at this photograph, it says that Tiger Woods is a sports star. I mean, people think of him as God. But if you look at the guy who carries his saddle also, that guy has very good clarity and he's equally competent to understand when Tiger Woods thinks of that, how long is this shot going to be for me? The guy can think much, much sharper than him. So your team got to be much better than who you are. And only then you will be able to grow the entire team, and you can take each of these departments which you have identified as part of your business model canvas forward. Right? So if you look at the point I was making about team, the second point is going to be that invariably it will end up being that you say, you know what, hey team, let's start doing these 5 things. 4 out of those 5 people will take things forward. There will be one guy who will not be able to take it forward. So you should be able to juggle between the duet and the soloist. So every time one of your team member or one of the departments keeps on lagging, operations is not doing great. You as an entrepreneur, the guy holding the fort, should be able to step in and say, hey, you know what, ops is not running well, I will step in, I'll help you move it forward. So you should be able to juggle between a dualist role and being a solo. So every time a problem comes, you should step in like a solo warrior, solve it. But you still have each one of them carved out, giving them their own fort, saying that what is it that they are supposed to do. What is this? How many of you know this? Fantastic, no one knows. Yes. Yes, ma'am. I guess it's the black half and the white half which completes life, something from Chinese philosophy. Yes. Anyone else has heard about this? Obviously, I can read English as well, yin yang, but what does it mean? It's like balance of life, right? If you know a left brain and right brain, right? Left brain is all analytical, logical, etc. Right brain is all creative, fuzzy, colorful, etc., etc., right? So when you think of anything in your business and when you want to go out and implement, it got to be a good balance. It can't be just that I'm the cheapest. I mean, as a value proposition, it is good, but when you go out in the market, you don't take extreme measures. You don't go out and say, you know what, I want to find out the cheapest developer. You will not be able to get good quality. You can't say, I want the best developer. You will not be able to afford the best developer. So you got to have a good balance always, right? And that's what yin yang is about. By the way, ma'am, it's absolutely correct. Yin yang is, if you would have seen a big black dot and a big white dot and they are covered with life and they go towards infinity, that's the Chinese philosophy, that it always got to be a balance. Perfect, so we are at the tea break now.
Are we all ready for the tea break? What? Yes. I'm just 10% done. Okay? So, no, not 10% done. I mean, almost we are halfway through. So what I wanted to say is, if I go back to the earlier proposition of what I was talking about around technology, right? What do you think is the next thing happening after technology? Sorry, is someone screaming something to me? No, right? So what's the next thing which you think is going to be after technology? So maybe if you look at 2005, maybe there were quite a lot of business models which were lesser technology but more offline. Now for almost every business which you hear in the market, there is a tech component to it. But say for example, imagine yourself in 2027, 5 years from now. Will it continue to be ruled by technology? What do you think? Yes, ma'am, you have any idea? Give it a shot. No? What is going to be there in 5 years? Sorry? Who said metaverse? Who said metaverse? You have invested in Facebook? Pull out the money. They are bleeding big time. By the way, some of these new things which you hear in the market are sometimes to create that initial euphoria, right, for people to start following. If you look at social media in 2005, 2006, there was quite a lot of skepticism saying, I don't know, it'll waste quite a lot of time. And now, after 15 years, 20 years, we see quite a lot of people saying, no, in a day I end up spending more than an hour and a half on Facebook. Let me not keep on going there. They delete the Facebook app, etc., etc. So some of those initial inhibitions will come to light, but they may take much, much longer. If you look at metaverse, maybe you will find a few use cases and you'll be floored saying, hey, you know what, this is going to be the next big thing. But for budding entrepreneurs like you guys, it is always good to have a larger, grand view of things and then select and be sharper there, rather than understand one sharper thing like metaverse and say, you know what, I'm going to do something in metaverse. First, see how good you are at understanding the technology. Second, understand how good are you going to be getting a team who can create more and more technology. Third is, how will you continue to be on top of things when you are 5 years into the same game. So those are some of the things which you'll have to keep on thinking when you be so sharp around a metaverse, right? So the first thing when you come to implementation is what you got to be a little bit more broad-based, saying, what is it that I would want to do, right? How many of you guys think data is the next oil? I know we are before tea time, but you can hold the hand higher up. Why? Why data is the next oil? That's what, that will really decide what is the behavior of the whole the pattern, and the vendor or customer, we can decide what to do and based on that. Fantastic. It will help you decide larger patterns. It will help you understand what's going to happen next. If I look at so much data of last 15 years, I'll be fairly able to predict what's going to happen in next 5 years. And it's the reason why data is becoming increasingly important, right? But when you have so much data, what is it that is going to be the role of human experience in a sector like banking? How many of you have, I'm sure you guys know, right? When you install a banking app, there is a chat which is possible nowadays, right? That you can chat, and on the other side, actually there is no one. There is a bot, and there are automated responses which you keep on getting, right? Imagine that you are doing this for another 2 years, okay? Will you not start longing to see a relationship manager who will come and say, hello sir, happy Diwali, right? So all of these smaller interactions which happen between humans, and is the larger term I'm coining around human experiences, do you think that human experiences will become more critical in banking very soon? Because now, for every form where you used to see a relationship manager, now it comes, you can quickly download it as a PDF. Now the PDFs have become editable, that you can fill it up and save it also.
Now you don't have to even print it, you can just send it on an email address. Increasingly the interactions are becoming more and more digitized. So when you're going to move towards things which are human experiences, do you think in banking, a non-tech thing, which is a physical interaction with human, will it be more important? If yes, are you thinking of any ideas in that space? Right? So we can continue adding more and more technology, but if you want to have a differentiator, what can you do to create more human experiences in banking? Right? How far are we from here? Anyone wants to take a guess? In how many years you will see things like this? 10 years? Who said one generation? No, you can continue sitting. I'll make you sit when everyone goes for team. I'll make sure. There are robots in restaurants already. So there are robots in restaurants already, right? What is it? So irrespective of the year, it may be 5 or 10, what is happening when you are in a future like this? So when Mark Zuckerberg thought about Facebook, he was 2 decades before Facebook peaking in 2019, 2020, right? He started thinking about it in the early 2000s. The idea is having such a large validity that it can continue for a couple of decades. If you have to think of an idea like that right now, what will that idea be? Obviously, you are going to surpass this, which will come in your lifetime. How will your idea continue to be sustaining even in this age? What will you do? So if I take the same conversation of human experiences in banking forward, how will you make sure that when an experience happens between 2 individuals, the customer continues to have memory of it? That he always thinks good about an interaction which happened in physical space with the relationship guy, right? So how will you make some of these experiences memorable? How far are we from this? And one generation guy, please stand up. I'm looking at you while you answer this. No, just on the lighter note. How far are we from this? Maybe same, 5, 10 years. It doesn't matter the number, right? But what is it that we are going to do when we are in an age like this? So come back to the same business model canvas board of Swiggy. What are you going to do here? What is this? Fantastic. I also don't know. It is just a representative picture, which means that there is too much of technology all around you. Okay, so now let me push that envelope further about from technology experiences you will need more human experiences. But what after human experiences? What will you need? Ma'am, if you yawn, I get a sign that I'm not doing so well. If that is the case, you can clap in between so that I'll understand that I'm not doing that great. I'm happy I hear this laughter so that people will know if they're picking up tea or coffee when they go for the break. Again the same. How many years? The first generation guy, how many years? Can I figure out a way for some of these technology components which I'm going to integrate, can they be warm and caring, right? Can I figure out a way for a Swiggy/Zomato order to be placed and for a solution or the app to say, you know what, like your mom, it'll say, I know you like a spicier version of it, I'll top it up with extra tadka. Can it happen like that? Can you think of ideas around those lines, right? Because you will always need a differentiator. If you run a Swiggy for 5 years, what is the next thing that you will do? And if you start working on that from right now, is where you will have to be headed if you want to start a venture in that space. What is this? Who said Siri?
So by the way, for people who are clapping, see, there are so many people who are awake. They know that this is Siri. What is this? Obviously Siri, but what is this? Who said AI? Fantastic. You guys know all the latest jargon. Have you implemented any of these jargons onto your business idea? Why not? That is where the challenge is. So you might hear so many things about metaverse, about artificial intelligence, about biogenomics, etc., etc. But as soon as you start thinking about taking that first step about that new word you have heard for a business idea which is in your head, no? It'll be a big, white, empty space. You'll not know where to start from, right? Because you're listening something for which you don't know too much details about, and then you think that, hey, for this problem, how will I solve it? The reason you may not be able to do it is that if you were to look at relationship management, right, as it used to happen in banking, all the earlier relationship management where people used to call you in Jan and Feb saying, sir, I want investment, all of that is getting replaced by automated voice commands which you get on voice bots. And what are you going to do after that? No one knows. How far are we from this? Is the image visible properly? No. What is happening? Some operation happening, right? So, if we have to aim for a I hope you guys are able to see that the tech is scratched out. Can we aim for experiences which are led innovation? So how many of you guys felt wow when they placed the first Zomato order? Majority of us, right? That, hey, you know what, this is cool. I just have to download an app. I can figure out any hotel. I can figure out whatever dish I want to order, place it, order. I can continue tracking that the guy is waiting at the pawn shop for 10 minutes before coming and delivering my order. Oh, all of this is super cool. But if I were to think of the next thing on innovation, what will that be? When COVID hits, you are able to also see the temperature of the guy coming and delivering your order. Oh, fantastic. What else? Tomorrow, if you have to think of some health startup, what are you going to think about? What is it that if you were to be a startup entrepreneur, is there a way that you would want a continuous monitoring of all your family members' health statistics coming on your app every day? Would you want to monitor something like that? Who said yes? It'll get boring on the third day. Unless and until you have some critical illness happening with one of the family members who you need to keep a constant check on. But then, after the third day or the third month, you'll realize that you want only differential. That only when the BP goes more than 140, please tell me, and that will be typically after 9 o'clock in the night when you haven't reached home. Right? So some of these things you can obviously integrate with artificial intelligence, but for you to understand that what new are you going to think of in the experience space is what I think you got to start thinking about. The reason why I keep on talking about experience and not technology is because increasingly humans will incline more towards experiences than technology, right? I mean, if I were to ask you, you know what technology Zomato is built on? No one cares. Do you know if it is Angular or Java or .NET or whatever? No one cares, right? Because and by the way, just for your information, majority of the stuff which is happening, if you would have seen in last 20 years, was around a whole information wave, right? That you are being bombarded with more and more information. Another 20 years are going to be more around experiences. So the reason why people pay a bomb for an Apple iPhone is the experience on the phone is very different. It is cool. People who haven't used iPhone will definitely like it, the way things move smoothly. And majority of the things which will happen more in the experience space for another. That's what they say, that this is the decade of the experience, right? The people will be more and more inclined to having a better experience. I mean, earlier also, you could do discovery of finding all the hotels around you on Google. Then you could call up each of these guys on phone and ask, saying,
बोलो आपके मेन्यू में क्या है, and you can figure out 3 dishes. You can obviously say, आपके बंदे को भेज दो, मैं पैसा दे दूंगा, and you could do the payment also. But all of these things stitched up seamlessly on an experience as an app sitting on your phone at a convenience, delivering you at 11:30 in the night, is the reason why you love Zomato, is the reason why you love Swiggy. So all of this is bundled experiences which you fall for, right? I mean, otherwise, there is no rocket science in food getting delivered to your home. But the way it is getting delivered is what is the beauty of the business model, is the reason why you can think of anything, even if the guy, if your friend comes home at 12, you say, you know what, let's order an ice cream. And all of that, because it is so convenient. Otherwise, you could always have ice cream at 1 in the night, but now it is very convenient. So the point I'm trying to drive is, can data, which all of us have abundance of, can we create better experiences for some of this data? Is there a way for us to do that? So imagine if I were to say, your last 3 phones have 50 GBs of photographs which you would have taken, right? Can you create something beautiful out of it? And can that be an app which you can sell? There shouldn't be the word banking. It is a typo, I'm realizing just now. That should human experiences be the only thing which should design or define what your new idea should be? Or will there be a third component to it? So right now you have a tech, I'm adding another one which is experience. Will there be something more than experience which should be another differentiator? What will that be? Will that be seamless about you not having to put any credit card details and just by your finger, there are going to be 11 cards listed on your thumb, you just place it and the payment will happen. All of these things are just fusion of different technologies already existing in the world right now. But what the end user or the consumer wants and how you dish it out to them is going to be very, very crucial, right? So by the way, I see the video getting recorded and I have been moving, but the camera doesn't move with all the AI put. So I'm hoping that it is recording. Another question, can we make some of these experiences sensorial? So right now, majority of the experiences which you see is very touch experience, right, on a phone. If I were to click on Zomato and you get a tandoori tikka fragrance out of a phone, imagine, right? Is that difficult? No, it is definitely not difficult to do. But how quickly will people fall for it? Why the silence? No, it can be anything else, not just tandoori tikka. It can be anything, whichever you think of. So, the sensorial can be around smell. It can be around what you see. And it can give you excitement. All of those things, can you create different business models around it, is what I thought I'll keep on making you guys think and still not give you answers. So, that was all what I wanted to talk about how and what you should think after tech. If you are entrepreneurs, please start thinking on those lines. And thank you so much for being a lovely audience. Thank you so much. Any questions you may have, please. And Shruti, if you can join me here, we can answer any other previous questions they may have. दरवाजा बंद करके रखना, चाय अभी मत देना. Yes, anyone? Yes, no? Or you understood everything? Yes, hi. Hi, good afternoon. My question is like, when we start a business, it starts with an idea. Then, as you said, you have to hire some technical person and then managerial person. So, when the profit comes, then how we should distribute the profit among the 3 people? The person who is handling technology, he will say like, I have done major work, I have given my energy, you have just given an idea. So I got the drift of the question. So his question is that when you, guys please be with me. So his question is that when you have an idea and you know that you will need a technology guy to implement it and you get the technology guy in when the product is created, sold out in the market, you make money and profit out of it, how do you
distribute the profit between you and the tech guy, right? That is what you're saying. So today it is tech guy, tomorrow it may be someone else. What do you think the answer should be? The answer is KKSB. You know that? Kaddu katega to sab mein batega. The problem right now is, for majority of us, we kind of overthink too much before time. Majority of us wouldn't have even thought as to how we will end up being profitable. But some of these questions coming to your mind, even before you realize profit, is the difficult part of keeping all those thoughts aside. Saying that, you know what, between me and the tech guy, how are we going to distribute the money? Hey, you know what? First, let the tech guy implement the technology. Let it continue to survive for 2 years. Then you will make money. And then 4 years down the line, by the time your tech guy has kids, the profit will start trickling in. So don't overthink on stuff before time. Okay? By the way, you can decide, I'm sure if you have got a good tech guy, he has stayed with you for long, he will tell you that, you know what, I have put in 30% of the work, you have put in 70%, let's share it that way, and you will be happy with it. So you got to give yourself and the tech guy enough time, like you do in any relationship, for you to come up with a larger answer at a relevant point in time, not think about it right now. So 10 minutes to go. Guys, you have last 10 minutes if you want to continue firing questions. Any other questions? You can ask me also. Yeah. Please. I'll pull down my mic. Arshit, you're not getting away with it. Yes, guys, any other questions around ideation or business model canvas, what she was talking about? Please do that. Mm-hmm. Guys, please be with him. Relative analysis or whatever that, but I don't see any much, I don't know, maybe like very wrong, I don't see much more focus is going by the startup on the data strategy. From whom on the data strategy? From the startups. startups. Like data is like next future for the next 5 years trend, but I don't see any much, startup coming up more focus on the data. Startups coming up in the data. How many of you have heard of startups in the data space? So I'll tell you what, sir. I think if you look at last 3 to 5 years, right? Too many. There are B2B. Majority of the startups have been in the data space. Data. So if you do more B2B, right, like she's talking about, so if you are a business, say for example ICICI Bank or HDFC Bank, majority of the startups approaching you nowadays are just data startups. The only difference being some of them have a very strong core proposition around data, but they have a top layer which is a new app or a new interface or something which is making two very old legacy systems talk. But all of that is driven by data, because majority of the banks, if you look at, are now, and I'm just saying banks for an example, but majority of these new age startups rely heavily on data. So if you look at Zomato, right, I mean, the amount of analytics which is run inside some of these organizations is beyond crazy. All of that is driven by data. So I put my question another way around. Sure. Of course, they may have data analysis they're using for their purpose. Is there any way we can also get some SaaS-based startup where I want to run some data for my particular cases and I can use their services to do all analysis? So simple example. If you look at your website and if you look at Google Analytics, is data for your website, right? So there are so many such startups which are there, and maybe we can talk offline and I can give you a few more examples, but yeah, there are so many of them in the data space. Sure. Anyone else? Any other questions? I, by the way, know what biscuits are being served with the tea. So if you want to ask any questions around that, I'm more than happy. Anyone? Anything else? Thank you so much, guys. You were fantastic audience. Yes, any other questions you may have, we'll take it offline, just so that we keep up on the time. By the way, you want to ask Shruti any question? Yeah, perfect, Shruti.
No, I think we'll take it offline only. We'll take it offline. For the justification of other speakers' times also. So reach out to me and Harshit. Thank you so much for being such a lovely audience. And all the best to all of you guys for whatever you guys decide for yourself. Thank you. Thank you. अगला सेशन हम 4:15 पर शुरू करेंगे और चाय पीकर फिर वापस आइएगा धीरे से वहीं से। अभी दो सेशन बाकी हैं और मैं बाहर चाय के काउंटर पे मिलता हूं। फॉर ऑल द पीपल हु आर आंसरिंग, आई एम जस्ट वाचिंग, आई नो ऑल ऑफ यू। वो जनरेशन वाला ढूंढना किधर है? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। 4:15 पे अगले सेशन के लिए आइए और अभी 2 सेशन बाकी हैं। हम उम्मीद करते हैं कि 5:30 बजे तक ये सेशन खत्म होगा। धन्यवाद।
आगे बैठ जाइए, आगे ही बैठ जाइए। मामा अजून एकदा बेल द्या प्लीज. मामा ओ देवा, बेल द्या, दोनदा अजून द्या, दे जरा पटापट. शुरू कर देते. आप सभी से अनुरोध करता हूं कि आप अपने स्थान पर बैठ जाएं, अपने अपने मोबाइल फोन को स्विच ऑफ मोड पर डाल दें. अब मैं यहां पर योगेश कुंदानी जी से अनुरोध करूंगा कि वो अपने सहकारी संजय नून जी के साथ आप मंच पर आएं और जितने लोग उपस्थित हैं वो सब लोग तालियां बजाकर उनका यहां पर स्वागत करें. मैं योगेश जी से अनुरोध करता हूं कि अपना स्थान ग्रहण करें और संजय जी से भी अनुरोध करता हूं अपना स्थान ग्रहण करें और सायरा जी से अनुरोध करता हूं कि गुलदस्ता देकर उनका हम यहां पे स्वागत करें. ये सेशन जो हमारा है वो कैपिटल मार्केट का सेशन है. ये बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन अपने जीवन के लिए है. ये किसी एक दिन के लिए नहीं है, जीवन भर के मंत्र जो हैं. सायरा जी उनका यहाँ पे स्वागत करते हुए सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बिजनेस डेवलपमेंट के योगेश जी और इसके बाद इंचार्ज इन्वेस्टर एजुकेशन संजय नून जी नूनस. अब ओवर टू संजय कहना है या ओवर टू योगेश जी कहना, आप तय करें. ठीक है. आप सबकी जानकारी के लिए ये सेशन हम यहाँ पे 5 बजे समाप्त होगा और फिर देवेंद्र कुमार जी हमारे बीच में हैं. आखिरी सेशन भी उतना ही इम्पोर्टेंट होगा जिसमें आपको बहुत ज़्यादा आनंद आएगा. मैं फिर से एक बार योगेश जी से अनुरोध करता हूँ कि आप इस सत्र का संचालन करें. धन्यवाद. नमस्ते, गुड इवनिंग आप सबको. मैं कोशिश करूंगा कि हिंदी में हम जितना हो सके ये पूरा सेशन आपके सामने रखें. देखिए, जैसे सर ने बताया था, कैपिटल मार्केट काफ़ी इम्पोर्टेंट एक सब्जेक्ट है. आप खुद का जब बिजनेस स्टार्ट करेंगे एज एन एंटरप्रेन्योर या आप कोई कंपनी में काम भी कर रहे होंगे तो कैपिटल मार्केट की जानकारी, नॉलेज होना बहुत ही ज़रूरी है आज की तारीख में. जैसे कि इनॉग्रल सेशन में भी बताया गया था कि फाइनेंशियल लिटरेसी बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट और अहम भूमिका निभाती है आज के ज़िंदगी में. क्योंकि जो गवर्नमेंट रिलेटेड बैंक फिक्स डिपॉजिट्स हैं या पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम्स है, वो सब इन्फ्लेशन को भी बीट नहीं करते हैं, महंगाई को भी बीट नहीं करते हैं. और अगर आपको लॉन्ग टर्म में वेल्थ जनरेट करना है अपने लिए, तो कैपिटल मार्केट एक ऐसा जरिया है जिसमें आप के इन्वेस्ट करके आप लॉन्ग टर्म में अपना वेल्थ जनरेट कर सकते हैं, थोड़ा थोड़ा अमाउंट सेव करके. तो हम वही पॉइंट के ऊपर आज हाईलाइट करेंगे और आपको ये भी हम बताएंगे कि कैपिटल मार्केट में क्या क्या एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल है आज की तारीख में, जिसका आप लाभ उठा सकते हैं. तो ये छोटा सा हमने एक प्रेजेंटेशन बनाया है जिसके ऊपर हम आपको अभी मेरे कलीग संजय न्यून्स प्रेजेंट करेंगे. बट मैं आपको शॉर्ट में यही बताना चाहता हूँ कि अगर आपको कैपिटल मार्केट में इन्वेस्ट करना है तो आपको 3 अकाउंट की बहुत ही ज़रूरत है. एक बैंक अकाउंट जो आप सब जानते हैं,
बैंक हम तो मतलब जैसे जैसे इन्वेस्टर प्रोग्राम्स हम करते हैं तो हम एकदम सरल भाषा में कोशिश करते हैं लोगों को बताने की कि डीमैट अकाउंट क्या होता है। तो जैसे कि आप बैंक अकाउंट कोई भी बैंक में खोलते हैं जो आरबीआई रेगुलेटेड होती है, आप उसमें अपना पैसा डालते हैं तो आप पैसा डाल सकते हैं और विड्रॉ कर सकते हैं। इसी तरह से एक डीमैट अकाउंट होता है जो डिपॉजिटरी में खुलता है सीडीएसएल में, और उस डीमैट अकाउंट में आप अपने जो भी इन्वेस्टमेंट्स रहते हैं, जैसे आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करेंगे कुछ भी, या आप शेयर्स कोई भी परचेज करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे इसमें, तो वो आपके डीमैट अकाउंट में क्रेडिट होता है। और जब भी आपको पैसों की ज़रूरत होती है, लिक्विडिटी की ज़रूरत है मान लीजिए, तो आप म्यूचुअल फंड यूनिट्स या शेयर्स जो आपके डीमैट अकाउंट में है वो आप सेल कर सकते हैं, रिडीम कर सकते हैं, और आपको विद इन 48 आवर्स आपके बैंक अकाउंट में वो पैसा आ जाता है। तो डीमैट अकाउंट एक्चुअली एक अकाउंट है जिसमें के सब टाइप ऑफ सिक्योरिटीज़ जो हैं वो उसमें रिसाइड करती है। जैसे बैंकिंग सिस्टम में आरबीआई रेगुलेटर है, इसी तरह से डिपॉजिटरी सिस्टम में डीमैट अकाउंट में सिक्योरिटीज़ एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी जो है वो रेगुलेटर है। तो ये तो हो गया कि कैपिटल मार्केट में आप कैसे इन्वेस्ट करेंगे और सेव करके और इन्वेस्ट करेंगे और वेल्थ जनरेट करेंगे। दूसरा भी इसका एक कैपिटल मार्केट का पहलू है कि कल को आप जाके एंटरप्रेन्योर बनते हैं और आपको फंडिंग की ज़रूरत होती है, ठीक है, तो या तो आप प्राइवेट इक्विटी या वेंचर कैपिटल फंड के पास जा सकते हैं। दूसरा एक इमर्जिंग जरिया है जो बहुत लोग नहीं जानते हैं कि जो दो मेजर स्टॉक एक्सचेंजेस हैं आज इंडिया की, बीएसई और एनएसई, इनका भी एक स्मॉल एंड मीडियम एक्सचेंज है, मतलब जिसमें के छोटी छोटी कंपनियां हैं जिनका कैपिटल रिक्वायरमेंट छोटा होता है वो भी लिस्ट होती हैं। तो उनका भी जैसे कि मेन बोर्ड कंपनीज में आईपीओ आता है, हमने सबने देखा एलआईसी का आईपीओ आया था लास्ट मंथ, इसी तरह से एवरी मंथ बहुत सारी छोटी छोटी कंपनियां भी हैं। जैसे कोई कंपनी को मान लीजिए 1 करोड़ कैपिटल की रिक्वायरमेंट है अपना प्लांट मशीनरी ऑफिस खरीदने के लिए, तो 1 करोड़ का भी वो आईपीओ मेन बोर्ड नहीं, जो स्मॉल एंड मीडियम एक्सचेंज एसएमई एक्सचेंज बोलते हैं बीएसई एनएसई का, उसके ऊपर वो अपना आईपीओ लाके 5 दिन में पैसा रेज कर सकती है। तो ये भी आपको एज एंटरप्रेन्योर, अगर आपके पास कुछ आइडिया है, आपने कंसीव किया है उसको और आपको उसको एग्जीक्यूट करना है, आपको उसको फंडिंग की ज़रूरत है, तो आप बैंक के पास न जाके आप एसएमई सेगमेंट में स्टॉक एक्सचेंज के आके भी आप आईपीओ में आप आईपीओ लेके आ सकते हैं और पैसा रेस कर सकते हैं। पैसा रेस करने का अगेन जरिया जैसे मेन बोर्ड आईपीओ वैसे ही है। एलआईसी में अगर आपको पता होगा, लोगों का जो भी 10 करोड़ इन्वेस्टर्स हैं इंडिया में, उनके डीमैट अकाउंट है। इसी तरह से एसएमई में भी कोई भी इन्वेस्टर को इन्वेस्ट करना है तो उसको एक डीमैट अकाउंट की ज़रूरत होती है। तो इन शॉर्ट कैपिटल मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए आपको 3 तरह का अकाउंट की ज़रूरत होगी। एक बैंक अकाउंट जो आपके पास ऑलरेडी होगा, और एक ट्रेडिंग अकाउंट या ब्रोकिंग अकाउंट हम बोलते हैं, जो आप कोई भी रजिस्टर्ड स्टॉक एक्सचेंज ब्रोकर के पास जाके खोल सकते हैं। और तीसरा है डीमैट अकाउंट, जो अगेन आप कोई भी रजिस्टर्ड डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के पास जाके और खोल सकते हैं। मोस्ट ऑफ द ज़्यादातर जो भी रेप्यूटेड बैंक्स हैं, बड़ी बड़ी बैंक्स हैं या ब्रोकर्स हैं स्टॉक एक्सचेंजेस में, ये सब डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स हैं। तो आप एक बार ब्रोकर के पास जाएंगे तो आप अपना ब्रोकिंग और डीमैट अकाउंट दोनों साथ में भी खोल सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि एक अकाउंट पहले खोलना है दूसरा अकाउंट बाद में खोलना है, दोनों साइमल्टेनियसली भी खुल सकते हैं। और एक बार ये अकाउंट खुल जाता है तो आप इन्वेस्ट करने के लिए रेडी हैं। अब तीसरा पॉइंट जो मैं टच करना चाह रहा था कि क्योंकि ये एंटरप्रेन्योरशिप का सेशन भी है, तो हमने हमारे कैपिटल मार्केट में भी लास्ट 10 साल में बहुत सारे इनोवेशन और डिसरप्शंस देखी हैं। पहले आप सबको पता होगा कि पहले स्टॉक एक्सचेंज जो हुआ करता था, आपने अगर पुराने फ़ोटो देखे होंगे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के दलाल स्ट्रीट के, तो एक ट्रेडिंग रिंग हुआ करता था जिसमें कि फिजिकली लोग ब्रोकर जाके सौदा करते थे। मतलब मुझे कुछ शेयर बेचना है मेरे कस्टमर का, इन्वेस्टर का, तो सामने कोई ब्रोकर रहता था जिसका इन्वेस्टर को बाय करना है, तो हम एक दूसरे को कांटेक्ट करके और फिर वो सौदा करते थे और फिर शेयर्स सेलर से
बायर के अकाउंट में जाते थे और पेमेंट सेटल होता था। तो ये तो फिजिकल ईरा था जो 1992-93 तक चल रहा था और लगभग 125 साल पुराना था। अगर आपको पता हो तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो आज दलाल स्ट्रीट के ऊपर है, इसको 147 ईयर्स हो गए हैं। तो ये एक्चुअली इंडिया जो इंडिपेंडेंस हुआ था उससे भी बहुत पुरानी एक ऑर्गेनाइजेशन है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो लगभग 125 साल तक तो फिजिकल वे में ये ट्रेडिंग होता था। 92 में आके गवर्नमेंट ने जो रिफॉर्म्स लेके आई थी, तो रिफॉर्म्स के जरिए स्क्रीन बेस्ड या ऑनलाइन ट्रेडिंग सिस्टम शुरू हुए थे बीएसई और एनएसई में 92-93 से। उसके बाद में ऑनलाइन ट्रेडिंग सिस्टम्स हो रही है और लास्ट 10 साल में हमने बहुत सारे इनोवेशंस देखी है ब्रोकर्स के तरफ से भी। इन द सेंस वो बहुत सारे नए ऐप्स लेके आए हैं, वेबसाइट्स लेके आए हैं जिसके थ्रू आपको फ़ोन करने की भी ज़रूरत नहीं है ब्रोकर को। आप उसमें लॉगिन करके अपना सिक्योर लॉगिन क्रीडेंशियल्स डाल के, पासवर्ड डाल के, जैसे हम नेट बैंकिंग करते हैं इसी तरह से हम अपना ब्रोकिंग अकाउंट, डीमैट अकाउंट में लॉगिन करके आपको जो भी शेयर्स परचेज़ करने हैं, म्यूचुअल फंड यूनिट्स परचेज़ करनी है आप परचेज़ कर सकते हैं, या बेचना है तो आप बेच भी सकते हैं, और आपका बैंक अकाउंट भी अकॉर्डिंगली डेबिट या क्रेडिट ऑनलाइन हो जाता है। तो ये सब जो भी इनोवेशंस हमने देखी है लास्ट 10 साल में देखी हैं। बहुत सारे नए नए ऐप्स आए हैं। हर एक अगेन ऐप में भी एक वैल्यू प्रोपोजिशन है। हर एक ब्रोकर अपना जब भी ऐप लाता है तो एक वैल्यू प्रोपोजिशन के साथ आता है। या तो उसके चार्जेस कम होते हैं या वो एडवाइजरी इनबिल्ट कर देता है इसमें कि मान लीजिए आप एक रिटेल इन्वेस्टर है, निवेशक है, और आपको पता नहीं है कि आपको कौन सा शेयर लेना चाहिए, कौन सा म्यूचुअल फंड की यूनिट लेनी चाहिए, क्योंकि म्यूचुअल फंड में भी 6000 से ज़्यादा स्कीम्स आज की तारीख में इंडिया में अवेलेबल है। तो कई बार रिटेल निवेशक जो है, रिटेल इन्वेस्टर जो है, वो कंफ्यूज हो जाता है। तो उसको सही तरह से गाइड करने के लिए, एडवाइस करने के लिए बहुत सारे ब्रोकरों ने अपने ऐप में ही एडवाइजरी मॉड्यूल भी इनबिल्ट किया हुआ है। तो ये भी एक इनोवेशन है जो ब्रोकर्स लेके आए हैं। ऐसे बहुत सारे वैल्यू प्रोपोजिशंस है जो हर एक ब्रोकर लेके आता है अपने ऐप में, वेबसाइट में, और फिर आप उनके जो भी ब्रोकर्स हैं उनकी जो भी कंपेयर करके उनका कॉस्ट, उनकी ब्रोकरेज, उनकी सर्विसेज के ऊपर कंपेयर करके आप एक सही ब्रोकर चूज़ कर सकते हैं। मेरी खाली एक सलाह है कि इसमें बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो अनरेगुलेटेड हैं, तो इट वुड बी बेटर जो आप अगर कोई भी अकाउंट डीमैट या ब्रोकिंग अकाउंट खोलेंगे तो ये एक बार हमेशा ध्यान रखिए कि सेबी जो है इसकी बहुत बड़ी ताकत है। सेबी के पास बहुत पावर्स दिए गए हैं पार्लियामेंट की तरफ से भी, गवर्नमेंट की तरफ से भी। तो वो ब्रोकर या डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट चूज़ कीजिए जो सेबी रेगुलेटेड है। अगर आप एक अनरेगुलेटेड एंटिटी के साथ कुछ भी सौदा करेंगे तो वो केस में सेबी आपको आके प्रोटेक्ट नहीं कर सकेगा। तो अगर आप रेगुलेटेड ब्रोकर और डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के साथ करेंगे तो सेबी की भी ताकत आपके पीछे रहेगी, आप एज अ रिटेल निवेशक। तो ये मुझे बताना था। कुछ भी क्वेश्चंस होंगे तो वी विल टेक इट लेटर ऑन। मैं अभी मेरे कलीग संजय न्यून्स को इनवाइट करता हूँ। वो आके एक छोटा सा प्रेजेंटेशन आपको देंगे इसके ऊपर, और हम चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको जो भी क्वेश्चंस है, डाउट्स हैं, वो आप प्लीज़ पूछिए ताकि ये एक इंटरैक्टिव सेशन हो सके। थैंक यू वेरी मच। Thank you, sir. Sir has very well briefed about what exactly we have to do and what precautions we have to take while dealing in capital market. Friends, first of all, my name is Sanjay Nunes, and on behalf of CDSL, I welcome you all and thank you very much for your patience. You guys are lucky. From morning we are talking about entrepreneurship. I assume that all at present, by end of this day, all have become entrepreneurs, right? But after that, what? You have ample of money with you. How to manage your money, and for that reason we are here to guide you. Okay, friends. So talking about, just to brief about my company, I am representing CDSL. CDSL is a first and only listed depository in Asia Pacific. As you are aware that CDSL is a listed company. You can buy shares of CDSL and become shareholders of CDSL, right? CDSL was incorporated in December 1997.
The major shareholders, as you are aware, the shareholders are the part owners of the company. To name few major shareholders, HDFC Bank, Bombay Stock Exchange, known as BSE, followed by Standard Chartered Bank, LIC, Canara Bank, are few major shareholders of CDSL. CDSL is the first and only depository to operate in GIFT City in Gujarat. Friends, as you are aware that ISO certifications are very important, right? So we have achieved ISO certification context of IT systems and processes, business continuity management systems, e-voting process, and so on and so forth. These certifications are very important in terms of trust. Based on these certifications, the investors get a trust that your securities in CDSL are safe and secured, right? So friends, moving ahead, we have around 6.7 crore active Demat accounts situated over 97% PIN codes. As our MD and CEO, Nehal sir, has already given a brief that we have around 6.7 crore active Demat accounts as on date. We have around 583 DPs. Friends, DPs are known as depository participants. DPs are the agents, basically. See, for example, I want to open a bank account, right? So I will not approach RBI, right? Obviously, I will search for a nearby bank and I will open a bank account. In same way, if I want to open a Demat account, I will not approach depository directly in case of CDSL, but I will approach the depository participants or the brokers who are the agents between the investor and the depository, right? So likewise, we have around 583 DPs. Talking about issuer companies, we are around 18,613 unique companies, 17,671 equity ISNs. ISNs are the nickname given to the securities admitted in depositories, and 34,593 other ISNs registered with us. So I just want to know from you guys, and yes, you guys are lucky friends that you are getting this type of session at this early age. At our times, I'm not so old, but in my college days, we were not getting a chance to attend such type of seminars, right? So you guys are lucky. And you are again lucky that you have waited for this particular session. So I'm really thankful to you all. And in the morning, some of the panelists was saying that you will at least get 5%, but I'm guaranteeing you that by end of this session, you will get 100% out of this. I'm guaranteeing you. Now, why there is a need for saving? Can anyone, just 1 minute, one or two answers, quick answers I want. Why saving is important or why investment is important? बहुत हो गया, आज सुबह से हम लोग एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में बात कर रहे थे, बिजनेस मॉडल समझ लिया हम लोग ने, सब कुछ समझ लिया, पैसा भी अकाउंट में, पैसा भी जेब में, अभी उसका पैसा क्या करने का है, क्या हम लोग को क्या करना है, पैसे का लेके घूमना है कि क्या करना है? फ्यूचर प्लानिंग. Why future planning? Yes, please. Can you pass on the mic? Only one or two answers. We have running short of time. We have given a time of by 5. We have to wind up. Means our session basically. Why there is a need for saving according to you? Yes. Perfect. Perfect. Fantastic. I really appreciate your answer. Any other answers? One more answer. Backside. Please pay attention. This is very important and serious topic. Please don't miss this. Any other answers? Anyone? Asset building, good. Freedom to pursue your dream career. But before starting this moving ahead on the explanation, I would like to quote a famous adage by Mr. Benjamin Franklin. He says that, be aware of little expenses, a small leak can sink a great ship. Friends, see, whenever we discuss about money, we always think about big tickets. Like say I want to buy a vehicle, I want to construct a house, right? I want to buy a flat. But what about the unnecessary expenses? Daily unnecessary expenses, what we do about? We spend
लाइक ठीक है, स्मॉल एक्सपेंसेस से क्या होता है, एवरीडे स्पेंडिंग 100 रुपीज से कुछ फर्क नहीं गिरता है. बट फ्रेंड्स, आई एम गारंटिंग यू, यू डू अ लिटिल मैथ्स एट द एंड ऑफ द मंथ. ज़्यादा नहीं, 10 मिनट बैठ के आप थोड़ा सोचो तो आपको अंदाज आ जाएगा कि अराउंड, आई एम टेकिंग 100 रुपीज पर डे, around 3,000 rupees you are spending towards unnecessary expenses which are not required at all. See, you guys might be getting 5,000, 10,000, whatever pocket money, but at least start valuing your pocket money. It is your parents' money. They are also earning hard. Okay, so start valuing that pocket money, friends, and at least start investing, not 500, but at least start investing 100 rupees per month. This is the minimum amount I'm talking about. And that will build a corpus at the end of your, till you retire. And that will be a huge corpus. आज आपने एक ट्री प्लांट किया, उसमें इमीडिएटली फ्रूट्स आते हैं क्या? आते नहीं आते? ठीक है, so have patience. Freedom to pursue your dream career. Everybody, including me, have some of the other dreams to be achieved. Say for example, in my case, I want to build a house. In your case, it might be doing post-graduation in US or Europe, whatever. But have you thought about it? Have you structured a roadmap that how I am going to achieve that post-graduation in Europe? Have you identified the best college? Do you know the admission process? Do you know how much fees I am going to pay? How I will reach there? Have you identified just jotting down on a piece of paper will not serve your dream career? You have to think about it. And for that, you have to plan from today itself. See, time is very important rather than timing. Remember that. Time is very important. ठीक है, आमी कल करूँगा, वो निकलते ही जाएगा. So that is the reason why time is very important rather than timing. So pay attention towards it. आज के तारीख में आप मुझे बोलेंगे कि सर हम लोग कहाँ अर्न करते हैं, कि आप इतना बोल रहे हो सेविंग करो, इन्वेस्टमेंट करो. मैंने पहले ही बोला कि पॉकेट मनी आपको मिलता है, उसका क्या करते हो आप? See, nowadays you can open bank balance with zero account. मतलब zero balance. You can open an account with zero balance. You can start your mutual funds investment with rupees 100 or rupees 500. Nowadays the brokers are giving you the facility of opening demat account free of cost. What else you want? What else you want? Tell me. This much facility at present you have in front of you, and that is ready-made. Still people are taking lightly because the financial literacy is not that focused according to me in India. There was a survey done. Hardly, see, today this year we are celebrating 75 years of independence, and hardly 25% of the population is financially literate. You Google it, you will come to know. Only 25% are financially literate. There is a huge gap, and that is the reason why these particular awareness programs are conducted. And one of the agenda by Government of India is creating awareness on financial literacy. On 10th of June, under Azadi Ka Amrit Mahotsav, Ministry of Finance conducted around 75 programs on a single day, wherein Finance Minister was present virtually. What was the reason behind conducting these programs? Because the government is also keen that yes, financial literacy should be at that point wherein we can say that yes, I am an Atmanirbhar Niveshak or I am a self-sufficient investor. See, nowadays people are fooled due to Ponzi schemes. कोई भी आपको मतलब ये बाय करो, वो बाय करो, a stranger comes to you and gives you a tip that इसमें invest करो, उसमें invest करो. Friends, we blindly, without thinking, we invest based on their recommendation. How many of you actually do due diligence before investing? Rather than asking this question, I want to know that how many of you have bank account, or rather, how many of you have demat account? Can you please raise your hands? Bank account. So at least I am happy that I am on the right place. I am standing at right place. So you start, friends. आपको सब मोबाइल बाय करने का रहेगा, तो आप कितना गूगल करते हो? 10,000 का मोबाइल बाय करना है आपको. आप कितना गूगल करते हो उसके फीचर्स देखने के लिए? आप कभी कभी फिजिकली वो पर्टिकुलर दुकान और शॉप में भी जाके देखते हो कि इसको डेमो कैसा है. जब इन्वेस्टमेंट की बात आती है तब आप क्यों लैकिंग होते हो? जस्ट आस्क अ सिंपल क्वेश्चन. Friends, long-term social security, as Madam has rightly said, COVID-19 has given a wake-up call to all of us. Many people lost their jobs, right? Many people lost their jobs. Huge medical expenses. Now, you know medical inflation is 4 times more than the current normal inflation. Suppose normal inflation 6% रहेगा, just hypothetical example.
मेडिकल इन्फ्लेशन डायरेक्ट 20% से वो चल रहा है, मतलब डायरेक्ट 4 times. So from where, if you are not made any provision, if you are not having any emergency funds with you to face this financial storm, how you are going to survive? That emergency fund should be at least 6 months of your living expenses. I am repeating, that emergency fund should be at least 6 months of your living expenses. Talking about retirement planning, okay, leaving a financial legacy. Just don't take it otherwise. Just think for a minute that today is your last day in your life. And just look behind that, what type of financial legacy you have kept for your dependents. Is it a positive legacy or a negative legacy? Are you going to keep your dependents to pay your EMIs? Or are you going to keep your dependents with surplus cash? The choice is yours. We are here, we will guide you. But ultimately, you have to bring that plan into action. Retirement planning, many people think that, ठीक है, retirement planning evening walk जाने का, morning walk जाने का, gardening करने का हो गया, books read करने का हो गया. After that what? What about your medical expenses? Suppose कोई international tour करना है तो क्या? Have you thought about it? For that you have to start your systematic investment plan known as SIP. Have you heard about this word SIP? Start investing and be consistent, friends. Bring that financial discipline among you within. It should come from within. Just अभी half an hour के आप सुनेंगे, yes, nod, you will nod your heads, but after that what? Start and be consistent. ऐसा नहीं होना चाहिए कि आज जून चल रहा है तो जून में मैं इन्वेस्ट करूंगा 500 रुपीज और डायरेक्टली सितंबर में इन्वेस्ट करूंगा. No. You keep aside certain amount of your pocket money that yes, first thing I will keep aside and I will save and I will invest. This is the right approach. And if you want to achieve your dream career, start planning from today itself. Friends, there is a good Hindi शायरी. It says that मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है. मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है. सिर्फ पंखों से कुछ नहीं होता दोस्तों, हौसले से उड़ान होती है. So remember this. ठीक है? इन्फ्लेशन, अभी क्या इन्फ्लेशन मतलब क्या? What is inflation? पेट्रोल का भाव क्या है आज की तारीख में? और 6 महीने पहले क्या था? 6 महीने पहले क्या था? 80 रुपया था कि 90 रुपीज था. कितना था? 80. टुडे आज का रेट क्या है? क्या है उसका डिफरेंस का क्या मतलब है? द डिफरेंस इज नथिंग बट इन्फ्लेशन. टाइम ऑफ वैल्यू. ठीक है, बट उसके लिए ऑप्शन है हमारे पास. इसके लिए हम लोग आज आपके सामने खड़े हैं. उनके लिए ऑप्शन है तो हाउ टू बीट दैट इन्फ्लेशन. सी, सेविंग एंड कीपिंग योर सेविंग्स इन अ कबर्ड will give you more returns? No. So you have to invest. In order to invest, you have various goods, investment avenues like mutual funds, demat account, you can invest in capital market, right? So this will give you good returns, and these returns will be able to meet that inflation. Because as inflation grows, your money also grows. Okay? See, there are two types of incomes. One is active income and second is passive income. Now what is active income? Say for example, I am a salaried employee. Okay? I am working here. After putting my initial efforts, I will get monthly salary, right? Do you agree with me? So that is active income because I am putting my initial efforts. What is passive income? Okay, I have earned my salary, I will now invest. Out of that investment, I will get returns. For that returns, am I putting my initial efforts? No, so that is known as passive income. So whenever you are planning your budget, see to it that you take into consideration these two incomes, known as active as well as passive, because these incomes belongs to you. And when you will plan accordingly, it will help you to achieve your goals on time. Financial planning and investment planning. See, financial planning means what? I am getting a monthly salary. So I have to jot down how much is my income, how much is my expenses, right? How much will be my emergency funds, how much will be my surplus income. After that, how much I should invest and how much I should keep cash in hand, right? So there is a famous phrase by Mr. Warren Buffett, sir. He said that do not say what is left after spending, instead spend what is left after saving. But we Indians follow the trend and we know the formula of saving is equal to income minus expenses. But foreigners give first priority to savings. Their formula is income minus saving is equal to expenses. So we have to follow that particular trend.
right? Asset allocation. What do you mean by asset allocation? Have you heard about the phrase, do not put all your eggs in one basket? Say for example, I have 1000 rupees with me and I deposited that 1000 in a bank, ABC bank. Tomorrow if the bank goes bankrupt, then what will happen to your 1000? Gone, loss. Say for, now this is first scenario. Take second scenario. I have 1000 rupees with me. I will invest 200 rupees in gold, 200 rupees in capital market, 200 in bonds, 200 in real estate and 200 in mutual funds. Tomorrow if that bank goes bankrupt, how much I will lose? Only 200 rupees. In first scenario, I was losing 1000. In second scenario, I am only losing 200. But that 200 loss will be compensated by another investment avenues. Because I have invested in gold, I have invested in mutual funds, that will appreciate. So, asset allocation is nothing but to minimize your risk. It will minimize your risk. And friends, remember one thing. You invest wherever you invest, but there is inherent risk. आप ट्रैफिक को रोक सकते हो क्या? रोक सकते हो? आपको ये टेली कॉलिंग आते हैं, रोज के रोज कुछ ना कुछ कॉल्स आपको आते हैं, आप रोक सकते हो क्या? रोड ट्रैफिक आपको जाम है, ट्रैफिक जाम है, वो आपको फ्लो से चलना ही पड़ेगा. In the same manner, in case of investment also, same happens. There is some other risk. You have to digest that risk. Without, मतलब बैंक में कुछ भी करो, कहाँ पे भी थोड़ा तो रिस्क है, और वो बोलते हैं ना रिस्क है तो इश्क है, बराबर है ना? तो अपने को वो ध्यान में रखना चाहिए. In mutual funds, have you heard about the word mutual funds? क्या है mutual funds? Mutual fund is one of the, yes, mutual fund is one of the investment avenues. So in mutual funds क्या करते हैं? See, mutual funds is indirectly investing in capital market. See, there are two sources to invest in capital market. Directly you can invest or indirectly you can invest. Indirectly मतलब क्या? Say for example मेरे को knowledge नहीं है, मगर still I want to invest in capital market. So I will take the route of mutual funds. Why? Because mutual funds are handled by professionals who are experts in this particular field. They will take care of your money. You have to give, just you have to tell them what is your objective, and you have to select the scheme in which scheme I want to invest. Say for example, there are growth funds, debt funds, hybrid funds. Okay? So you have to give them direction that in which funds I want to invest. And on behalf of you, they will invest. And they will give you good returns. Okay? And past history has proven that if you stay invested in mutual funds or in capital market for long-term purpose, yes, you will get good returns. Don't be a speculator. Or don't be a trader, be an investor, and that too long-term investor. Nowadays people want fast money. ठीक है ना? पहले दिन, as you might be heard about IPOs, right? First day of listing they want money in their pocket with good, मतलब hefty profit चाहिए उनको. Otherwise they start blaming capital market. That capital market में loss होता ही है. अरे मगर loss क्यों होता है? आपने आपको homework, say for example, just I said कि have you done your due diligence? Have you done your homework? Without studying whether you will be promoted in next class or not. You have to study ना, you have to do homework. Same case investment में भी होता है. आपको सब आपकी कंपनी, आपको कोई आके बोलता है कि ये कंपनी में इन्वेस्ट करो, एबीसी कंपनी में इन्वेस्ट करो, 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करो, आप ब्लाइंडली इन्वेस्ट करेंगे क्या? सपोज आप ब्लाइंडली इन्वेस्ट करेंगे, देन यू डोंट वैल्यू मनी. और ऐसे हो रहा है आजकल आईपीओ में, वैसे ही तो हो रहा है. मेरा फ्रेंड ने इन्वेस्ट किया, इसके लिए मैं भी इन्वेस्ट करूंगा, और आप रिजल्ट देख रहे हैं. आई डोंट वांट, वी आर नॉट अलाउड टू टेक नेम्स, बट यू कैन सी. You can see what is happening. And what is the reason? Reason is we should blame us. We should blame, I should blame myself that मैंने proper से study नहीं किया उसको. I should not blame capital market. Capital market is very simple and it will give you good returns when you will do proper research, when you will do proper fundamental analysis of a particular company. ठीक है? Suppose कंपनी के अगेंस्ट केस चल रही है, ठीक है, से फॉर एग्जांपल आपको एक लैंड खरीदना है और उसका टाइटल डिस्प्यूट में है, आप वो पर्टिकुलर लैंड में इन्वेस्ट करेंगे? क्यों नहीं करेंगे? बिकॉज इट इज ऑलरेडी कॉम्प्लिकेटेड. द सेम वे if there is case against that particular company or whatever, the fundamentals are not good, whether you will invest your hardcore money in that particular company. So these small things you have to consider before investing. At least read the prospectus of that particular company. At least take the initial efforts to read some pages, important paras of that particular prospectus. That will help you to give you direction that yes, मेरा hardcore money उसमें invest करना चाहिए कि नहीं. ठीक है? This is a very serious topic, friends. Now people have made loss
in IPOs. The reason is why we have not done proper due diligence. So please avoid this. ठीक है? म्यूचुअल फंड इज डाइवर्सिफ, इट विल हेल्प यू डाइवर्सिफिकेशन. ऐसा नहीं है कि म्यूचुअल फंड्स में 100 रुपीज़ है तो फिर पूरा 100 रुपीज़ एक ही में, नो, दे हैव डाइवर्सिफाइड अदर sectors. They will, the mutual fund managers will take care of this, but your fund. So diversification is very important. You can also get tax advantage under Section 80C if you invest in mutual funds. So that is also, and you are professionally, the fund managers are experts. So they will take care of your money. Okay? So it is professionally managed. Introduction to capital market. Capital market, as you are aware that it is buying and selling of securities takes place through capital market. We have already discussed about primary market. What is, as companies are coming with an IPO. IPO is nothing but raising an capital from the general investors or the investors in order to, for their expansion or whatever reason. Okay? So primary market, the company gets listed for the first time, or the particular company sells stocks to the public for the very first time. ठीक है? Secondary market क्या है? एक बार company list हो गई, ठीक है? Now it is a secondary market. Now you can buy and sell securities, and the share price fluctuates due to demand and supply conditions, whatever. ठीक है? So again, in secondary market also you have to take precaution. You have to see the quarterly results, half-yearly results, annual results. You should understand, you should read the annual reports of the company to know that in which company is good. You should know who are the competitors of that particular company before investing, because that will help you to secure your money. Okay? Primary market, just a differentiation that for understanding. Primary market securities are issued first time to the public. Trading of already issued and listed. In secondary market, already the company is listed. Trading takes place of already issued securities. Also called as new. Primary market is also called as new issue market. Then price determination of primary market are considered by issuer companies in consultation with merchant bankers. Merchant bankers are basically, in layman language, they are the consultants who help the company in terms of valuations and to set one price for the company to come up with an IPO. Okay? Merchant bankers, RTs, are known as a registered transfer agents who will take care of your securities. And purpose of primary market, as I said, is to raise capital for expansion, diversification. It depends upon company to company, what they want to exactly. Some borrow the funds to reduce their debt, some raise the funds for expansion, growth, whatever. It depends upon company to company. That we are not concerned about. We are only concerned that whether this particular company is good for me or not, that's it. वो company काय के लिए पैसा raise करती, that is not much important. But we have to take into consideration that yes, where I am putting my money, that company is safe, that's it. Okay? As sir has already discussed that 3 accounts are required, saving, I am not going to stress much about it. Sir has already given that what are the prerequisites to enter a capital market. First is savings, trading and demat account. But for all this, you know vitamin M. What is vitamin M? Vitamin M is very much required. क्या है vitamin M? Vitamin M is nothing but money, पैसा. Suppose आपके पास पैसा ही नहीं है, तो आप कहाँ से trading करेंगे? आप कहाँ से buy करेंगे? ठीक है? Just KYC documents for your, means KYC means basically it is a mandatory documents now, whether they want to see that you are a genuine person or not. So per PAN, any of the particular documents, any one of the documents listed on this slide, you have to submit to the depository participants or the brokers with whom you are opening the demat account. And as sir has rightly said that whenever you are going to open a demat account or trading account, see to it that that particular broker or DP is registered with SEBI or not. सबको आपको बुखार आया तो आप अनक्वालिफाइड डॉक्टर के पास जाते हैं कि क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जाते हैं? क्यों जाते हैं? बिकॉज यू आर वेरी मच कंसर्न अबाउट योर हेल्थ. सेम वे यू शुड ऑल्सो वेरी मच कंसर्न अबाउट योर वेल्थ एज वेल. ठीक है? सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट वो सेबी के साइट पे आप जाके भी देख सकते हैं कि दिस पर्टिकुलर पर्सन इज रजिस्टर्ड और नॉट. Who can open? Individuals. Up to maximum 3 holders can open a demat account. HUF can also open a demat account through Karta. Minor can also open a demat account. NRI, corporate, known as public limited company, public limited company can also open a demat account. Registered trust, only registered trust can open a demat account. Banks, domestic institutional investors and foreign portfolio investors can open a demat account. Do's before you start trade, deal only through SEBI registered.
ठीक है. Get a clear idea about brokerage. See that what type of brokerage is offered by you, by the broker to you. There are also other discounted brokers available in the market, right? See also at the time of opening the demat account, trading account, see what type of facility the broker is providing to you. See the name, see reputation of that particular depository participant or the broker is very important. Okay, that is also is very important. And don't forget to get the photocopy of the documents which you have signed, because that is very much required for your record. Otherwise ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैंने साइन ही नहीं किया था, बाद में आपको कुछ हो या मतलब वो कुछ मिस ऑथराइजेशन हो गया तो आपने चैलेंज करने के लिए आपको चाहिए ना कि मैंने यही डॉक्यूमेंट साइन किए थे. Many people ignore this particular point. So remember, obtain a copy of all the documents executed by you. ठीक है? And don't trade on rumors, very important. See, there is a famous phrase that rumors are carried by haters, spread by fools and accepted by idiots. See, we all are educated, right? So we have to think that हम लोग बोलते हैं ना, इसने मुझे बताया, उसने मुझे बताया, मगर उसको खुद को नहीं मालूम उसको किसने बताया. ठीक है ना? तो take this into consideration that rumors मतलब क्या है? Don't believe on strangers. And I was highlighting that due diligence is very important. कोई भी कुछ भी बोले ना, मेरा पैसा है, I am responsible for my money. ठीक है? Career opportunities, if you want to learn about capital market, we CDSL has a tie-up with Earth for financial education. The below link is there. You can write down the link. If you want to visit, you can take the personal financial finance courses are available over there. There are various modules where you can study and you can get certificates. You can take up the quiz, and after completing the quiz, certificate will be issued from CDSL to you all. These certificates are very much important because this will boost your career in your career. NISM, known as National Institute of Securities Market, offers uniquely positioned academic programs. The details of the programs are available on this slide. NCFM, okay, also provide e-learning courses on basic financial education, and also various courses are offered by stock exchanges. The links are shared below. So you can, if you want to really understand the personal finance, the capital market, okay, what do you mean by demat, what do you mean by mutual funds, what do you mean by budgeting, you should visit this particular site. It will be very helpful for you all, and it will boost your knowledge as well as it will help you for your career development. Avoid stock tips on social media. As I said, don't do trading or investment based on rumors. ठीक है, हम लोग आपको कभी कभी कॉल्स भी आते हैं कि इसमें इन्वेस्ट करो, उसमें इन्वेस्ट करो, ये पर्टिकुलर शेयर्स का भाव इतना बढ़ने वाला है. प्लीज़ डोंट. आजकल वो टेलीग्राम का भी बहुत चक्कर चालू है. टेलीग्राम, यू नो द ऐप, हाँ, यूट्यूब में कुछ. डोंट बिलीव दिस, बिकॉज अल्टीमेटली ना वो पैसा आपका है. वो जो करता है ना, वो जो ओनर है ना, उसको वो प्रॉफिट कमाने के लिए वहाँ पे बैठा है, और वो प्रॉफिट आपसे कमा रहा है झूठ बोल के. ठीक है, तो प्लीज़ अवॉइड स्टॉक टिप्स ऑन सोशल मीडिया. बहुत कुछ चल रहा है, डिजिटलाइजेशन बहुत चल रहा है, मगर उसमें भी डूज एंड डोंट्स है. क्या एक्सेप्ट करने का, क्या मतलब एक्सेप्ट नहीं करने का, वो अपने हाथ में है. सो प्लीज सी टू इट दैट अवॉइड स्टॉक टिप्स ऑन सोशल मीडिया एंड बी अवेयर वाइल डीलिंग बेस्ड ऑन अनसॉलिसिटेड स्टॉक टिप्स. कोई कुछ भी बोले, वी हैव टू डू, माई जॉब इज टू go through that particular script or through that particular scheme that yes, ये जो बंदा बोल रहा है वो सही बोल रहा है कि नहीं, वो रिसर्च करने का जिम्मेदारी मेरा है. ठीक है. If you have any queries against any broker or any company, right, SEBI, you can register your complaints on SEBI's course. You can write to us as well on given particular link, www.cdslindia.com, complaints@cdslindia.com. We are there to help you out. And safe digital world. ठीक है. How many of you share your ATM pin with your friends? How many of you? Nobody. ठीक है. So your pin is very important. Your password or internet password or whatever, your ATM pin is very important. So safe digital world. ठीक है. डिजिटलाइजेशन चल रहा है, ठीक है, पर वो सेफ कैसा है वो अपने हाथ में है. So remember that. SEBI has recently developed one app known as Sarthi app.
wherein you can download that particular app. It is available on Google Play Store. Please download this. At this age, it is very important. Sarthi app. That will help you to know more and more about securities market, and it will really boost your knowledge. Takeaways, be aware while dealing on unsolicited stock tips. ठीक है? Power of attorney. Power of attorney क्या होता है कि basically you are giving some power to somebody on means you are giving some powers to somebody on taking decisions on your behalf. But see to it that you give only specific power of attorney. You give only specific power. Don't give general power of attorney because there are chances of fraud. So remember that. ठीक है? And don't forget to register your nominee is very important. जब भी आप बैंक अकाउंट भी ओपन करते हैं, म्यूचुअल फंड्स, डीमैट अकाउंट, whatever, see to it that there are nominees registered to your account. In COVID, many people all of a sudden passed away, but there was no nominee to their account. And finally, वो पैसा जाएगा किसके अकाउंट में? उसके लिए वापस वो प्रोसीजर, लीगल प्रोसीजर चालू होता है. So don't forget, and at least inform one of your family member about where your investments are, where are your financial documents. Because in COVID, I have heard and I have seen that पैसा है अकाउंट में, बंदा वहाँ पे हॉस्पिटलाइज में एडमिट है, मगर फैमिली मेम्बर्स को मालूम ही नहीं है, और फिर वो दे आर नॉकिंग द डोर्स ऑफ रिलेटिव्स, दे आर बोरिंग मनी फ्रॉम बैंक्स. पैसा है उनके अकाउंट में, जो हॉस्पिटल में एडमिट है ना, उनके अकाउंट में बहुत पैसा है, किसको मालूम ही नहीं है मगर. सो दैट इज द रीजन वाई एटलीस्ट इन्फॉर्म वन ऑफ योर फैमिली मेम्बर्स अबाउट योर इन्वेस्टमेंट्स. ठीक है? एंड अबाउट द फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स वेयर यू हैव केप्ट द डॉक्यूमेंट्स, बिकॉज इट इज वेरी मच रिक्वायर्ड. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू. थैंक यू. Any questions? If you have any questions, you can come up with the questions for 5 minutes. अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं, या फिर हम अगले सेशन की ओर आगे बढ़ें. There is the last session. Any questions? Please. Mic दे देना. Hello, sir. So, as a beginner, you just told me that before investing anywhere, I should do my research, like I should do my homework. So, as a beginner, from where should I research? Because the company can, put any false information on the website. So, how should I, go through everything so that I can get to know, yeah, I'm investing on a right place? So, yeah. That's the question. So, very good question. I congratulate for that. This means that, you are ready to invest, and you are asking questions that where you should be getting this information, and based on that information you will do research and then invest. So I congratulate you for that. See, the best part to start with is the annual report. Okay, if you want to invest in any listed company, then annual report is the best document from where you can start. And annual reports nowadays are easily available. First and foremost, wherever that company is listed on the stock exchange, you can visit that stock exchange. If it is BSE, then the website name is www.bseindia.com, and if it is NSE, similarly on the NSE website, you can go search on the name of the company, and you will get the last annual report, PDF of that document. You can download it and do research. Second important point from where you can do research is that wherever the company is listed, it is mandatory as per the SEBI guidelines. SEBI guidelines के अंडर वो मैंडेटरी है, तो एवरी क्वार्टर में जब भी कंपनी का तिमाही का रिजल्ट आता है, तो वो रिजल्ट भी कंपनी को अपलोड करना पड़ता है वेबसाइट के ऊपर. तो आज जैसे कि हम जून में हैं, तो लास्ट क्वार्टर जो हो गया था वो मार्च का हुआ था. तो मार्च का अगर आप BSE NSE के वेबसाइट में जाके देखेंगे, तो मार्च क्वार्टर एंडिंग का और पूरे साल का भी, मतलब 21-22 का आपको पूरे साल का एनुअल रिपोर्ट और क्वार्टर का रिपोर्ट जनवरी टू मार्च का आपको एनुअल फाइनेंशियल रिजल्ट्स वेबसाइट पे मिलेंगे. तो दैट इज वन good location from where you can start doing the research.
दूसरा इम्पोर्टेंट है कि बहुत सारी अच्छी वेबसाइट्स भी हैं जिसके ऊपर एनालिसिस वगैरह की जाती है, बट टेक दैट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। उसमें हो सकता है कि कंपनी या कोई एनालिस्ट है, उसके पीछे उसका कोई सेल्फिश मोटिव हो सकता है, तो आप वो रिसर्च रिपोर्ट्स पढ़िए जरूर, लेकिन जैसे संजय न्यूज़ ने बोला था, आप अपना खुद का भी एक कॉमन सेंस यूज़ कीजिए, खुद का भी एक जजमेंट यूज़ कीजिए, लॉजिकल जजमेंट, एंड देन यू अराइव एट द डिसीजन कि आपको बाय करना है या सेल करना है। अगर आपके पोर्टफोलियो में ऑलरेडी कंपनी है और आप समझते हैं कि कंपनी अच्छा नहीं परफॉर्म करी एनालिसिस के बाद, तो आप वो कंपनी में से एग्जिट भी कर सकते हैं। तो ये तो हो गया कि भाई अगर आपको इंडिविजुअल कंपनीज में बाय करना है या सेल करना है। दूसरा एक है कि बहुत सारे हम लोग जो हैं अपने डे टू डे लाइफ में बहुत बिजी रहते हैं, हमारे को समय नहीं रहता है कि या एक्सपर्टीज नहीं रहती है डीप में रिसर्च करने की और अंडरस्टैंड करने की। तो उन वैसे निवेशकों के लिए एक म्यूचुअल फंड बहुत ही अच्छा जरिया है, क्योंकि जब आप म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्ट करते हैं तो आप एक कोई विराट कोहली में नहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप पूरे टीम में इन्वेस्ट कर रहे हैं और वो टीम पूरा परफॉर्म करेगी। तो वो टीम में आपको आईटी कंपनी के शेयर्स भी होंगे, टीम में आपको इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी के शेयर्स होंगे, टीम में बैंकिंग कंपनी के शेयर्स होंगे, फार्मास्यूटिकल्स होंगे। तो ये एक वेल बैलेंस्ड पोर्टफोलियो क्रिएट करेगा म्यूचुअल फंड मैनेजर। और म्यूचुअल फंड मैनेजर के पास क्या रहता है कि उसके पास समय रहता है, एक बड़ी टीम रहती है जो हर एक क्षेत्र को, हर एक सेक्टर को डीप में एनालाइज करते हैं, हर एक कंपनी को एनालाइज करते हैं और फिर एक वेल डाइवर्सिफाइड और बैलेंस्ड पोर्टफोलियो क्रिएट करते हैं आपके लिए एट अ वेरी लो कॉस्ट। मतलब आप 100 रुपया या 500 रुपए से भी स्टार्ट कर सकते हैं इन्वेस्ट करने। तो म्यूचुअल फंड जो एक इनिशियल इन्वेस्टर है, जो फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर है, उसके लिए म्यूचुअल फंड एक बहुत ही अच्छा जरिया है इन्वेस्ट करने का। एक बार आपको 4-5 साल का एक्सपीरियंस आ जाएगा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके, तो आप फिर ग्रेजुएट कर सकते हैं स्टॉक इन्वेस्टिंग में भी। ठीक है, थैंक यू। हाँ हाँ, देखिए दो तरह की अगर आप बीएसई और एनएसई के वेबसाइट में जाएंगे ना, तो इनके दो तरह के मेजर सेगमेंट्स हैं। एक तो मेन बोर्ड है जिसमें कि 10 करोड़ या उससे ज़्यादा का कैपिटल होता है ना, तो वो वाली कंपनीज लिस्ट होती है, जैसे इन्फोसिस, टीसीएस वगैरह। तो 4000 से ज़्यादा कंपनीज हैं जो लिस्टेड हैं बीएसई एनएसई में, और ये मेन बोर्ड कहा जाता है। दूसरी कंपनी रहती है जो छोटे का एंटरप्रेन्योर रहते हैं, जैसे स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज रहते हैं, उनको भी कैपिटल का रिक्वायरमेंट रहता है। हो सकता है कोई एक अच्छी आइडिया हो उनके पास, ठीक है, तो बट क्योंकि उनको 10 करोड़ या उससे ज़्यादा की कैपिटल रिक्वायरमेंट नहीं है, मान लीजिए अभी 1 करोड़ की रिक्वायरमेंट है, 2 करोड़ की है, 5 करोड़ की है, तो वो फिर एसएमई में सेगमेंट में आईपीओ लेके आते हैं। और हर एक एसएमई सेगमेंट का जो भी आईपीओ भी रहता है ना, तो आपको बीएसई का जो एसएमई सेगमेंट है और एनएसई का जो एसएमई सेगमेंट है उसको इमर्ज नाम बुक दिया गया है। उसमें आप अगर बीएसई एनएसई के वेबसाइट में जाएंगे ना, वहाँ से एक लिंक दिया हुआ है वो वेबसाइट्स के पर, उसके आप जा सकते हैं और जो भी आईपीओस आके गए हैं और लिस्टेड है तो आपको उसमें इंफॉर्मेशन मिलेगी कि उसका क्या प्राइस चल रहा है। और जिनकी आईपीओस चालू हैं उसका भी आपको लिस्ट मिलेगा, कौन से तारीख से कौन से तारीख तक आईपीओ है, क्या प्राइस में आ रहा है, प्राइस रेंज वगैरह सब कुछ अवेलेबल है। उसका प्रोस्पेक्टस भी रहता है, आप प्रोस्पेक्टस डाउनलोड करके अपना खुद का डिसीजन ड्यू डिलिजेंस करके ले सकते हैं। थैंक यू। आई थिंक क्वेश्चंस हो गए, यू कैन इनवाइट द नेक्स्ट। एक बार फिर से धन्यवाद देते हुए आदरणीय योगेश जी और आदरणीय संजय जी को धन्यवाद देते हुए मैं आदरणीय देवेंद्र कुमार जी को मंच पर आमंत्रित करता हूं। आप सभी की जोरदार तालियों के बीच में देवेंद्र जी का आगमन होगा। ये सेशन 30 मिनटों का होगा और मेरा विश्वास है कि ये आनंददायी भी होगा। गुड इवनिंग। आप सब लोग भी थक चुके हैं और ज़्यादा जो है लेक्चर हो गया, आज ज़रूरत से कुछ ज़्यादा हो गया। एक्चुअली आप लोगों को अपना पोटेंशियल मालूम होना चाहिए। आप लोग बाय बॉर्न जो है इंडिया के ऐसे डेमोग्राफी में प्लेस्ड हैं
जहाँ पर बिजनेस जो है ब्लड में है। आपने मार्क किया होगा जब कोविड के समय लॉकडाउन हुआ था तो मुंबई, महाराष्ट्र, गुजरात, नॉर्थ इंडिया में दिल्ली से ही लोग जो है टुवार्ड्स ईस्टर्न इंडिया की तरफ जो है भागम भागी मचा हुआ था। उधर से इधर आने का भागम भागी नहीं था। आपने ध्यान दिया है कि जितने जो लोग वापस जा रहे थे लॉकडाउन में, सारे वेस्टर्न पार्ट से ईस्टर्न पार्ट की तरफ जा रहे थे। ये है डेमोग्राफी कि ईस्टर्न पार्ट में जॉब सीकर्स हैं और वेस्टर्न पार्ट में जॉब गिवर्स हैं। तो आप लोग ऐसे पार्ट से बिलोंग करते हैं जो जॉब गिवर्स का एरिया है। दूसरा, मैं भी ईस्टर्न पार्ट से बिलोंग करता हूं और काफ़ी दिनों से वेस्टर्न पार्ट में रह रहा हूं। तो मुझे जो अनुभव प्राप्त हो रहा है कि यहाँ के लोगों में रिस्क कैरिंग कैपेसिटी है। अभी आप देखे होंगे 3 दिन पहले अग्निवीर का प्रोटेस्ट हुआ था ऑल ओवर इंडिया में। मैक्सिमम प्रोटेस्ट ईस्टर्न पार्ट में हुआ है, वेस्टर्न पार्ट में बिल्कुल नहीं बराबर हुआ है। क्योंकि वहाँ के लोग जो है छोटे छोटे नौकरी के लिए भी मारपीट के लिए तैयार रहते हैं, प्रयास करते हैं। जितना मेहनत करते हैं उतना मेहनत वहाँ पर बिजनेस का माहौल ही नहीं है, इन्वायरमेंट नहीं है। इस एरिया में इन्वायरमेंट है। गुजरात में कोई अगर IIT भी करेगा तो जॉब सीख नहीं करता है, वो एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जाएगा। MBBS भी करेगा तो सर्जरी या मेडिसिन नहीं जाएगा, नर्सिंग होम खोलना चाहेगा। तो ये एक माइंड सेट है। और आप लोग जो है बहुत लक्की हैं कि मुंबई जैसा फिनेंशियल कैपिटल में है जहाँ पर एवेन्यू जो है का कोई लिमिटेशन नहीं है। हमारे पास बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल है जो यहाँ पर छोटे काम करने आए थे। मुंबई में जो है फिल्म इंडस्ट्री है, फिल्म इंडस्ट्री का सेट बनता है, कारपेंटर का काम करने आया था, मैं नाम नहीं लूँगा। वो बंदा आज जो है 500 करोड़ का ओनर है और बहुत बड़ा पॉलिटिकल पार्टी लॉन्च करके जो है पार्टी लॉन्च किए हुए और अपना पॉलिटिक्स रन कर रहा है। तो ऐसे ऐसे मुंबई माया नगरी है, यहाँ पर जो है छोटे छोटे लोगों का भी किस्मत कब कहाँ खुल जाएगा नोबडी नोज। सबसे बड़ा इंडिया का रियल एस्टेट सेक्टर मुंबई में है और आपको मालूम होना चाहिए कि बिना पैसे का तो नहीं, कम पैसे का सबसे बड़ा बिजनेस रियल एस्टेट है। न यहाँ पैसा डेवलपर का लगता है, न बायर का लगता है, न ब्रोकर का लगता है और सबसे बड़ा बिजनेस एम्पायर खड़ा होता है। पूछिए कैसे? डेवलपर जो है प्रोजेक्ट को केवल लॉन्च करता है, एडवर्टाइजमेंट का कॉस्ट लगता है। ब्रोकर जो है बुकिंग के थ्रू बायर्स लाता है, बायर जो है बैंक के थ्रू पैसा लाता है, कम से कम लोन में। लोन का इंटरेस्ट भी कम है, होम लोन में इंटरेस्ट कम है। और रियल एस्टेट सेक्टर जो है में माइंड चाहिए, जिसका माइंड जितना स्ट्रांगली काम करेगा उसका बिजनेस उतना ही फास्ट ग्रो करेगा। टोटल गेम माइंड का है। अगर ऑनेस्टली काम किया जाए फिर एक डिफरेंस है रियल एस्टेट में। आप मार्क करना कि नॉर्थ इंडिया का जो बिल्डर्स थे, डेवलपर्स थे, और जो वेस्टर्न इंडिया के डेवलपर्स हैं, उधर मैक्सिमम डेवलपर्स फेल हुए। मैं नाम गिनाना चाहूँगा, आम्रपाली, आप नाम सुना होगा। 45,000 फ्लैट्स अनडिलीवर्ड हैं, प्रोजेक्ट स्टॉल्ड है। इनोटेक, सुपरटेक, जयप्रकाश, जेपी, बट मुंबई का कोई ऐसा जो है डेवलपर्स का नाम नहीं आया। क्योंकि वहाँ क्या है कि कल्चर है कि रातों रात जो है अरबपति बन जाए। चिटिंग, फेयर बिजनेस डील नहीं है, वो चीज़ मुंबई में नहीं है। मुंबई में उनसे बड़े डेवलपर्स हैं, बट यहाँ बिजनेस का जो ट्रेंड है फेयर बिजनेस नॉर्म से। तो बिजनेस में भी आपको जो है ट्रांसपेरेंसी, फेयरनेस, इथिक्स को मेंटेन करना होगा अगर बिजनेस को सेल्फ सस्टेनेबल लॉन्ग टर्म करना है। तो नॉर्थ इंडिया में कम से कम नहीं भी होगा तो 2 लाख इन्वेंट्रीज ब्लॉक्ड है, बायर्स के पैसे फंसे हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट तक जो है इंटरफेयर कर रहा है, बहुत जगह जो है रिसेल किया गया, फिर भी अभी तक जो है डेवलपमेंट जो है बहुत फास्ट नहीं हो पा रहा। 20-20 साल से लोगों का पैसा फंसा हुआ है। वो चीज़ एटलीस्ट मुंबई में नहीं है। एक और चीज़ जो मुझे अपना एक अनुभव है
कि बिगनर्स को, जिसके पास फैमिली बिजनेस बैकग्राउंड नहीं है, कभी भी डायरेक्टली रिस्क वाले बिजनेस में एंटर नहीं करना चाहिए। मेरा सलाह है आप किसी भी अच्छी, बड़ी, मीडियम, छोटी कोई भी कंपनी में पहले ज्वाइन कीजिए। कंपनी में ज्वाइन करने से आपको सैलरी छोटा हो, बड़ा हो, कम हो, ज़्यादा हो, एक्सपीरियंस जो गेन करता है उसका कोई वैल्यू नहीं है। आजकल देखिए बहुत सा IAM भी HOD पोस्ट कर रहे हैं, 5 years एक्सपीरियंस, उसके लिए 5% 10% सीट रिजर्व रखते हैं। और जो लड़के IAM में जाते हैं 2 साल एक्सपीरियंस करके, जो फ्रेशर जाते हैं थ्रू कैट, दोनों में वहाँ पर पास आउट करने के बाद जो 2 साल एक्सपीरियंस करके जाते हैं उनको वहाँ ग्रेस्प करना ईजी होता है, अच्छा परफॉर्म करते हैं। तो इसलिए मेरा सजेशन है कि बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप में घुसने के पहले कहीं जहाँ आपको मौका मिलता है, जिसमें आपको जिस फील्ड में इंटरेस्ट हो, कैपिटल मार्केट में हो, रियल एस्टेट में हो, इंडस्ट्री में हो, मैन्युफैक्चरिंग में हो, उससे संबंधित कोई कंपनी इस्टेब्लिश, वहाँ ज्वाइन कीजिए नौकरी और उसका एक्सपीरियंस गेन कीजिए। कॉलेज की पढ़ाई में और प्रैक्टिकल बहुत डिफरेंस है, आसमान जमीन का फ़र्क है, कोई लिंक नहीं है। सुबह जो लेक्चर दे रहे थे हमारे पैनलिस्ट कि 5% ही काम आता है, मुझे लगता है कि 1% भी काम नहीं आता है। इफेक्ट है, जो थ्योरी है बिल्कुल अलग है, प्रैक्टिकल बिल्कुल अलग है। एजुकेशन जो है पर्सनालिटी डेवलप करेगा, आपको कॉन्फिडेंस लेवल डेवलप करेगा, लेकिन एक्सपीरियंस जो है अल्टीमेटली पे वही करता है। और इंडिया में बिजनेस में कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा है, डेली इनोवेशन हो रहा है। अभी जैसे लास्ट सेशन में किसी ने प्लास्टिक वेस्ट ब्रिक्स का बात किया था, बिल्कुल वो आ रहा है मार्केट में, उसके ऊपर काम चल रहा है। आप देख रहे हैं, सिंपल ने एक ब्रिक्स की बात की थी, अगर आप 20 साल पहले जाओगे तो ब्रिक्स में एक ही ब्रिक्स था, क्ले ब्रिक्स, जो मिट्टी के ब्रिक्स बनते थे, क्ले ब्रिक्स था। अभी ब्रिक्स में बहुत सी क्वालिटी आ गए हैं, क्ले ब्रिक्स, फ्लाई एक्स ब्रिक्स, एरेटेड एसी ब्लॉक्स, कंक्रीट ब्लॉक्स, सो मनी। तो प्लास्टिक का भी ब्रिक्स आने में टाइम लगेगा, बट वो भी आ रहा है। और वो इनोवेशन इतना फास्ट हो रहा है कि बिजनेस ट्रेंड भी चेंज हो रहा है। बहुत से फैक्ट्रियाँ, जैसे मुंबई शहर, पहले सारा मुंबई में कॉटन मिल था, कॉटन मिल बंद हो गया, अब यहाँ पर ये शर्ट हाइड स्काई स्क्रैपर आ गया। तो बिजनेस का ट्रेंड भी चेंज होता रहा है। तो कोई भी इनोवेशन, अगर आपका आइडिया जो है बिल्कुल रिसर्च किया हुआ है, एनालिसिस किया हुआ है, तो आज नहीं कल आएगा। फ्लाई ऐश जो है पहले यूजलेस मटेरियल था, जितने NTPC के पावर प्लांट थे, सारे पावर प्लांट का वो हेडेक था कि जितने कोल बर्न्स फ्लाई ऐश थे, उसको जो फ्लाई ऐश पॉन्ड में जो है डंप करके लैंड का वेस्टेज था, बहुत बड़े एरिया में जो है फ्लाई ऐश पॉन्ड बनाया जाता था। आज फ्लाई ऐश का डिमांड है, सीमेंट इंडस्ट्री, सीमेंट में 15 से 30% तक फ्लाई ऐश यूज हो रहा है। ब्रिक्स, फ्लाई ऐश ब्रिक्स, फ्लाई ऐश यूज हो रहा है। पहले NTPC जो है फ्लाई ऐश जो है इंडस्ट्रियलिस्ट के फैक्ट्री में फ्री ऑफ कॉस्ट पहुंचाती थी, आज इंडस्ट्रियलिस्ट को जो है खुद ट्रांसपोर्ट करना पड़ रहा है। आज भी फ्लाई ऐश का कॉस्ट 0 है एट फ्लाई ऐश पॉन्ड, बट ट्रांसपोर्ट खुद करना पड़ रहा है। पहले 100% तक जो है 100 किलोमीटर तक NTPC के ट्रांसपोर्टर जो है फ्री ऑफ कॉस्ट पहुंचाते थे, फ्लाई ऐश को इंकरेज करने के लिए। तो इस तरह से इनोवेशन काफ़ी हो रहा है। आप जिस फील्ड में जाएंगे, बिल्डिंग इंडस्ट्री जो है अपने आप में, रियल एस्टेट इंडस्ट्री जो है सबसे बड़ा एम्प्लॉयमेंट सेक्टर है। केवल कंस्ट्रक्शन जो देख रहे हैं वही एम्प्लॉयमेंट नहीं है, कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स जो है उसकी जो फैक्ट्रियाँ हैं, कम से कम 10,000 प्रोडक्ट्स कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में यूज होते हैं। और ईस्टर्न इंडिया में एक जो है बकेट भी नहीं बनता है, इतना वहाँ पर जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन का जो है कमी है, क्योंकि वहाँ इंडस्ट्री का माहौल नहीं है। जैसे किसी भी इंडस्ट्री के लिए जो है 5 M's की जरूरत पड़ती है, माइंडसेट, मनी, मटेरियल, मशीनरीज, मार्केटिंग। ईस्टर्न इंडिया में जो फर्स्ट रिक्वायरमेंट है वो है मसल पावर, जो यहाँ पर जो नहीं है। वहाँ बगैर मसल पावर का कोई काम नहीं होता है, इसलिए कोई भी इंडस्ट्रियलिस्ट, कोई भी कैपिटलिस्ट रिस्क लेने को तैयार नहीं है। वहाँ पर रिस्क फैक्टर काफ़ी हाई है, और सारे वहाँ के लोग भी जिसके अंदर एंटरप्रेन्योरशिप है वो भी यहाँ आके काम कर रहे हैं।
गुजरात और एमपी, ये महाराष्ट्र में, इवन कि चेन्नई, तमिलनाडु, कर्नाटका, वहाँ जा काम कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ माहौल है, वहाँ माहौल नहीं है। तो आपको एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है कि आपको एक माहौल मिला हुआ है बिजनेस करने का, ये अपने आप में कम नहीं है। दूसरा, आजकल बैंक से फाइनेंस, लोन, अगर आप फेयर बिजनेसमैन हैं तो आपको फाइनेंस भी बड़ी आसानी से हो जा रही है। गवर्नमेंट का भी प्रेशर है कि एंटरप्रेन्योरशिप के लिए जो है फाइनेंस करना है। आपके प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो भी होगा, प्रोजेक्ट रिपोर्ट को असेस करके अगर आपका रूरल बैकग्राउंड का कोई प्रोजेक्ट रिपोर्ट है, उसके लिए नाबार्ड है, नाबार्ड के पास बहुत सा स्कीम है जो रूरल एग्रो बेस बिजनेस के लिए जो है प्रमोट कर रही है। उसी तरह आपको जो है अर्बन जो इंडस्ट्रीज है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की मैं बात कर रहा हूँ, बिगर इंडस्ट्री की बात नहीं कर रहा हूँ, उसके लिए भी बैंक जो आपको 10 करोड़ से नीचे का जो है प्रोजेक्ट रिपोर्ट देखकर असेसमेंट करके जो है फाइनेंस करने के लिए जो है आपके पास बैंकों का लाइन लगाएगा। 1-2 बैंक नहीं है, 3-4 बैंक आपके पास जो है अपने रेट, इंटरेस्ट रेट के ऊपर जो है कंपटीशन हो गया है। हमारे यहाँ जो कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है उसमें भी कॉन्ट्रैक्टर को जो है फंडिंग करने के लिए बैंकों की लाइन लगती है। मैं तो यहाँ तक देखा था कि मैं IIM में गया था अपने लड़के का एडमिशन कराने के लिए जो है, तो एक तरफ रजिस्ट्रार्स का जो है काउंटर है एडमिशन के लिए, दूसरी तरफ सारे बैंक के ब्रांच ऑफिस खुले हुए हैं फंडिंग के लिए, फीस पे करने के लिए। तो बैंक में भी ये कंपटीशन आ गया है कि एक तरफ एडमिशन हो रहा है और दूसरी ओर सारे बैंक बैठे हुए हैं और फंडिंग के लिए तैयार हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट के वहाँ भी कंपटीशन है। तो अब वो डिपेंड करता है कि आपकी अप्रोच कैसी है, आपका प्रोजेक्ट रिपोर्ट, आपके एनालिसिस, आपका प्रोजेक्ट क्या वो वैल्यू कितना है। तो आपसे मेरा सजेशन यही है कि आप लोग जो है पास आउट करने के बाद कहीं ना कहीं किसी न किसी फर्म के साथ 2 साल 3 साल जो भी हो ज्वाइन करके और मेहनत कीजिए। डोंट केयर फॉर सैलरी। सैलरी जो है वो आजकल एक लड़कों में ये भी हो गया है कि पास आउट किया नहीं कि बहुत हाई पैकेज जो है, क्योंकि अपने इंडिया में क्या है कि सैलरी में भी डिस्पैरिटी आ गया है। IT सेक्टर में कुछ कंपनियां जो है इतने हाई पे कर रही हैं कि बाकी लोगों को फ्रस्ट्रेशन हो रहा है। उन चीज़ों से बचना है। IT का लाइफ जो है फुल सेल्फ सस्टेनेबल नहीं है। आप मार्क कीजिएगा कि IT सेक्टर में जो है 50+ के बहुत कम लोग मिलते हैं, ले ऑफ भी जो है 45 बाद शुरू होता है। सो IT सेक्टर में सेल्फ सस्टेनेबल जो है बिजनेस मॉडल नहीं है। बिजनेस मॉडल वो है जो आप कम से कम 60 ईयर्स तक सस्टेन कर सकें। तो मेरा आपसे बस ज़्यादा मैं टाइम नहीं लूँगा, क्योंकि आप लोग थक चुके हैं, मैं भी थक चुका हूँ। जस्ट एक एडवाइस है कि आप जो है मेहनत करें, मेहनत से पीछे नहीं हटें, और मेहनत ही कुंजी है किसी भी चीज़ का। थैंक यू। एनी क्वेरी? किसी को कोई सजेशन चाहिए, कोई क्वेरी है? थैंक यू। फिर से एक बार आप सभी को एक बार आदरणीय देवेंद्र कुमार जी के लिए जोरदार तालियों से उनका हम अभिनंदन करें। 5:30 मतलब 5:30 बजे उन्होंने अपना सेशन पूर्ण किया। मैं अनिल त्रिवेदी आप सभी का तालीम ओ तरबियत की ओर से आप सबके प्रति आभार व्यक्त करते हुए इस कार्यक्रम को हम यहीं समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सर